That apart, there are some or more ministers who are actually traveling down from Delhi to Patna to enter the meeting, and also a core group meeting is likely to follow by the evening. All right, so a core group meeting of the BJP will take place later in the evening, and currently we're seeing some of the BJP leaders make their way to the Deputy Chief Minister's residence. That's the latest bit of breaking news coming in as far as the BJP camp is concerned. But so far, if I can go back to Aishwarya on this, Aishwarya, so far the BJP has maintained silence with regards to its strategy as far as the ongoing political crisis is concerned. We've not heard much from the BJP really. Well, the BJP was opting wait and watch policy as far as the current political developments were concerned, but at around 1 p.m. At the Deputy Chief Minister's residence, Tarkishore Yadav, the meeting started of the BJP, top ministers and senior leaders as well. And at around 5 p.m. we are hearing that there will be a BJP core group meeting that is scheduled at the BJP state headquarters here in Patna, where looking at the current developments, BJP will decide, but the move will be first coming from Nitish Kumar, as he will be opting out from the NDA, and later on what we are getting to understand from our sources within the BJP is that all the 16 ministers from the BJP quota will resign only after the decision of Nitish Kumar quitting the NDA. Still BJP is keeping very quiet, and they have been not speaking on the entire issue. They wanted Nitish Kumar to make its first move, and later on the BJP will decide on what is going to happen next and will be decided at the 5 p.m. meeting which is being called by the BJP. आप लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या खुश हैं इस फैसले से? आप लोगों के जो लीडर्स ले रहे हैं नितीश कुमार जिसके खिलाफ आप लड़े थे, उन लोगों के साथ जाना? देखिए, हम लोग जो है सरकार हम लोग के जो है बनने जा रही है चाचा भतीजा का, इसलिए हम लोग जो है गाँव से आए हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। जो है हम लोग के सदियों से हम लोग का वोट लगा हुआ था कि हम लोग के सरकार जो है दलित अति पिछड़ा। चाचा भतीजे की सरकार से खुश है? आप लोग किस पार्टी से हैं, और जिस तरीके की राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, अब एक नई सरकार बनने जा रही है जिसके खिलाफ आप लोगों ने चुनाव लड़ा, उनके साथ ही आप लोग अब सरकार बनाने जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सारी घटना? गरीब लोगों का सरकार बन रही है, गरीब की पार्टी है, उनका गरीब में बहुत उत्सुक है, यही है। जो भी शीर्ष नेतृत्व फैसला लेता है उसके साथ रहेंगे, भले ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते तब भी आप इस फैसले से सहमत रहेंगे? देखिए, ये तो आला कमान का डिसीजन होगा, ये आला कमान डिसीजन लेंगे, उन लोग सोच रहे होंगे, विचार रहे होंगे। All right, Aishwarya, stay on with us. We have some breaking inputs coming in. This is what our sources are telling us, that there is going to be a joint march, a show of strength by Nitish Kumar and Tejasvi Yadav. They will be marching towards the Raj Bhavan, and that's when, in fact, Tejasvi Yadav is also going to hand over the letter of support to Nitish Kumar. So, big development taking place in Bihar. Aishwarya, can you hear us? What more can you tell us about this united front? In fact, we are just waiting at the residence of Rabri Devi. Well, that's right. In fact, we are just waiting that how soon the MLAs from Congress, RJD and left parties will be coming out from Rabri Devi's residence with the letter of support that they will be handing over to Nitish Kumar, and a show of strength. A march will be conducted from Chief Minister's residence to Raj Bhavan, where the letter of support will be handed over to the governor, as the time has already been sought, and 4 p.m. is what we are expecting, that
Nitish Kumar's MLAs, including the MPs, will be carrying a march along with Tejaswi Yadav, RJD MLAs and Congress MLAs and the left party MLAs, and they will be going and they will be headed towards Raj Bhavan and will be handling over this support. And after that only the BJP MLAs will be resigning from their post of ministerial positions. They are waiting for the first move to be taken place officially by Nitish Kumar, and soon after that things will be unfolded. But yes, of course, a show of strength from Nitish Kumar with the support of RJD, Congress and left parties will be going on. And very interesting thing that we are also getting to know a piece of news that Jitam Ram Majhi is also holding its is holding its meeting at his residence with the MLAs, and he had also assured to give a support to Nitish Kumar with the new arrangement of government that is going to form in Bihar, a new Mahagathbandhan government with Nitish Kumar. So HAM also coming along with Nitish Kumar in this new arrangement which is going to take place in the state of Bihar. Alright, so this is source-based information coming in. The two are all set to put up a united front, and the show of strength that will be on display, wherein we will see Nitish Kumar and Tejaswi Yadav both march towards the Raj Bhavan. Now close to 4 p.m. is when Nitish Kumar is expected to meet the governor as well. But yes, this is the latest bit of breaking news coming in. That is exactly when Tejaswi Yadav will formally hand over the letter of support to Nitish Kumar. Let's go across to Tehseen Poonawalla. Now, Tehseen Poonawalla, this is very interesting, a show of strength by Nitish Kumar and Tejaswi Yadav. But the big question is, what is going to be the formula? Will the formula then lead to more discontent within both the camps? I mean, I cannot comment on what will happen. That is hypothetical. You see what happened in the Maharashtra cabinet today. Not one woman, Devendra Fadnavis and his deputy. Sorry, did I make a mistake? Because it seems Fadnavis is the boss. I have made no mistake. The ED government does not have one woman. I promise you, when Congress is involved, women will get justice. All sections of society will get justice. The BJP is not just anti-Muslim, it's anti-women. We saw that in Maharashtra today with Devendra Fadnavis and his deputy, Eknath Shinde. All right. Interesting that you pointed that out, but it looks like that strategy didn't quite work for the BJP as far as UP elections, the recently concluded UP elections go. But yes, a lot of interesting comments have been coming in from within the JDU camp. Let's quickly listen into some of them. आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में यह कहना ठीक है कि राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से चीजें होती हैं। आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। इसमें क्या शक है, और इसमें सिर्फ हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी नहीं, बल्कि और पॉलिटिकल पार्टियों की राय, आप जो इलीट क्लास है देश का, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, आंध्रा का हो, कर्नाटका का हो, कहीं का भी आप बात कर लीजिए, सब लोग ये समझते हैं कि नीतीश कुमार के अंदर वो सलाहियत है कि देश को उनको लीड करना चाहिए। इसमें क्या, इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उनके अंदर जो सलाहियतें हैं, उनकी जो खूबियां हैं, वो देश को लीड करने के लायक है और है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। Let's quickly go back to Aishwarya, who's getting us non-stop live updates. That's where the action is unfolding at the moment. Aishwarya, take us through some of the voices. What's happening there? Well, fastest developments unfolding here in Patna outside Rabri Devi's residence where a meeting is taking place of Congress, RJD and the left leaders. A letter of support has been signed, and this will be handed over to Nitish Kumar, Chief Minister, where the residence just 500 meters away from Rabri Devi, and there has been also a piece of information
that is coming in is that a show of strength will be conducted. A march will be conducted from Chief Minister's residence, which is right there in the visuals, as you can see, and from Rabri Devi's residence, all the MLAs from CPIM, the left MLAs, Congress MLAs and RJD MLAs will walk down to Nitish Kumar's residence and will be handing over the letter of support. And finally, Nitish Kumar with its JDU MLAs and MPs, and also with Tejaswi Yadav and RJD MLAs, Congress MLAs and left party MLAs will be going to Governor's house at Raj Bhavan and will be handing over the letter of support to the governor. And this is something which we are witnessing. On the other side, there has been a huddle in the BJP as well at 5 p.m. What we are getting to know is that BJP's core group meeting will be taking place at the BJP state headquarters in Patna, and they will be deciding on what move they have to do. What we are understanding from our sources within the BJP is that they are waiting for the first official move of Nitish Kumar, and only after that the 16 ministers from the quota of BJP will resign from Delhi. Shahrawaz Hossain, while leaving from Delhi to Patna, clearly stated that they are waiting for the move and they are waiting for the move of JDU and Nitish Kumar, and only after that they will be deciding on what's their step going to be. Another piece of breaking news that is coming in as far as the CPIM is concerned. CPIM to lend support, outside support to Nitish Kumar in the newly formed government. That's what the news coming in from Rabri Devi's residence, where still the CPIM MLAs as well as the left party MLAs are holding its meeting. Tejaswi Yadav gave a very important briefing to his MLAs. He clearly thanked all the MLAs from the RJD to give support, and he also stated that the promises that Tejaswi Yadav and RJD has made to the people of Bihar, they will be now fulfilling it with the support of Nitish Kumar. But CPIM has given an outside support to Nitish Kumar and Mahagathbandhan government in the state of Bihar as far as the support letter is concerned. But the HAM on the other side, Jitamram Maji, has clearly stated that he will be also giving the support to this government. That clearly means that BJP has been left aside. NDA is no more in the state of Bihar, and there you can see several Karyakartas of the RJD, Congress and left parties had come over here outside the Rabri Devi's residence. Tej Pratap Yadav since morning has been standing there at the gate, and he has personally welcomed the Congress MLAs as well as the RJD MLAs, and they were enough confident that this is going to be the deciding day as far as the new government is concerned. But what the BJP has been saying is that they are still waiting for the first official move of Nitish Kumar, and on the other side they are holding one of its meeting at Tarkishore Yadav's residence, the Deputy Chief Minister, since 1 p.m. and they are deciding on what is going to be the official move of the BJP. But an official core group meeting has been called at 5 p.m. But certainly it is this very location where all the action is unfolding at Rabri Devi's residence. What is going to be the fate of Tejaswi Yadav? As we spoke to several Karyakartas over here, they are saying that it is the high command decision, that whatever they will decide, whether it is Tejaswi Yadav to be the face of this government, whether it is Nitish Kumar to be the face of government, that depends on what decision the high command of the RJD makes. But certainly what we are getting to understand from the sources within the RJD
RJD as well as the JDU is that till 2023 Nitish Kumar will be the Chief Minister of Bihar under this new arrangement, and after 2023 Tejasvi Yadav will be given the post of Chief Minister of Bihar, and Nitish Kumar will move out from Patna, from Bihar to Delhi, and his aspirations of being at the national level and to play a national level politics, he will move to Delhi, and that's what the arrangement is made. We have been also getting an information that Nitish Kumar has dialed Tejasvi Yadav. He had a phone call with him for at least 5 minutes, just few minutes before, and he had spoken about this letter of support. It's just a few minutes from now, the leaders, the MLAs who are still holding the crucial meeting at Rabri Devi's residence, they will be coming out and they will be straight heading towards the CM's residence, from where they will be going to Governor's house at Raj Bhavan, where they will be handling the letter of support with the majority figure of MLAs, the support that they have. In fact, if we talk about the numbers, the RJD is the single largest party with the support of JDU, who has 45 MLAs, and also the CPIM, the left parties, who have 16 MLAs in their kitty. That clearly makes Mahagathbandhan pretty clear of going beyond the majority mark, and if the Congress and the AIMIM, which have 1 MLA, and Congress 19 MLAs comes in support, then they have been going past 160. That means a clear majority with the numbers are concerned. But now, as you can see in the visual, the cars are now going inside the residence of Rabri Devi, and these cars will take all these MLAs outside, and they will be going straight to the Chief Minister's residence to hand over the support to Nitish Kumar, and therefore a march will begin from Chief Minister's residence to Raj Bhavan as far as the letter of support is concerned. And within 48 hours we are understanding that Nitish Kumar will be taking the oath of Chief Minister in the newly formed government of Mahagathbandhan. Absolutely, the numbers are in the favor of the RJD, JDU combined. If that actually happens at 4 p.m. is when we're expecting Tejasvi and Nitish Kumar to put up their strength of support, their show of unity, their show of strength at the Raj Bhavan, where they're expected to meet the governor. Sanjay Jha, author, also with me on this broadcast. Now, Sanjay Jha, why Nitish wants to dump the BJP yet again and move towards the Congress and the RJD, only he can say. There have been at least 5 times that he's done this in the past as well. But people in the JDU are saying that this is because he harbors ambitions for 2024. He has been a chief minister for far too long. He has all the qualities that a prime minister of this country should have. So why not him harbor national ambitions? But given his track record of how he keeps shifting positions, shifting goalposts, where does that leave the Congress as well? Sanjay Jha, I believe you're on mute. If you can just unmute yourself and go ahead, please. Yeah. If you look at the track record of the BJP, you will find that all the regional alliance partners who have struck a deal with the BJP have finally been consumed by the national party. I mean, end of day, if you look at Shiv Sena as a recent example, the BJP has ruthlessly decimated that party. I think, JDU with its numbers of 45 was extremely vulnerable to the same thing happening to them in Bihar, because the BJP is anyway the dominant partner at 75 seats. So the simple answer is that there is no Chanakyanati in the BJP. It is a party that just harbors a lust for power and uses very dubious, unethical means of Operation Lotus, which is money and muscle power to hijack MLAs from the party. So clearly, I think Nitish is fully aware. Number one, you are absolutely right that he can save Bihar by going back to the Mahagathbandhan that won a very historic verdict against the BJP in 2015. And secondly, why can't an individual have a political ambition? I have been saying so publicly for a long time myself, that does he want his political sunset as a chief minister of Bihar, where he's been there for decades, or should he not have a more, aspiring goal for himself? And at the end of the day, I do believe
that the opposition needs a few credible alternatives. The Congress has to get its act together. Mamata, I do believe that Nitish will be a more acceptable face than Mamata Banerjee as a consensus opposition candidate. So tomorrow, if things change and he does get that wind in his favor, why, he has played his cards remarkably well. Right, so while the Congress is in complete disarray, at least in certain states, and while other regional satraps are trying to project themselves for a bigger role at the national level, is Congress going to be the ultimate loser in all of this? That is something that the Congress must also introspect, and we'll keep getting our experts' opinion on that as well. But going back to what's happening on ground, and Aishwarya, my colleague, is reporting from outside the Chief Minister's residence. Aishwarya, I'm given to understand that the JDU meeting is over. The decision has been taken. Well, that's right. On one side, the JDU meeting is over and senior officials are coming out from the residence of Rabri Devi as well, where the meeting of the RJD, Congress and the left parties is currently underway. The meeting is not over yet, but Tejasvi Yadav during this meeting has clearly stated and thanked all the MLAs of the RJD to support him and who had signed this particular letter. He had clearly stated that the promises that the RJD has made to the people, they will fulfill. Now that clearly means that the letter of support has been signed by Right, so all of that has been decided in this crucial meeting. In less than 2 hours from now is when we're going to see this show of unity and strength at the Raj Bhavan. But for the benefit of our viewers who've just joined in our broadcast, let me take you through the top 10 developments of what has happened as far as the political game of thrones is underway in Bihar. Nitish Kumar, the Chief Minister of Bihar and the Chief of the JDU, has decided to break away from the NDA, break ties with the BJP. Tejasvi Yadav of the RJD has handed over a letter of support to Nitish of his MLA support to the JDU. The CPIM is also likely to give outside support to Nitish Kumar and the combine of JDU and RJD if they form government. CPIML as well will be extending support from the outside. Now, Nitish and Tejasvi Yadav are expected to march to the Raj Bhavan. That's expected at about 4 p.m. where they will be meeting the governor, where Nitish Kumar makes it clear that he now wants to break away from the BJP and join ranks with the RJD and the Congress. Tejasvi held a meeting with the RJD leaders, and in that meeting he said that after Bihar, we must now prepare for change of government at the centre as well. Celebrations have already broken out in the RJD camp, with Lalu Prasad's daughter tweeting that Raj Tilak ki tayari ab shuru ho chuki hai. There have been videos that have been doing the rounds on social media as well. Celebrations have broken out at Chief Minister Nitish Kumar's residence too, as the decision to break away from the NDA is now final after the JDU meeting is over. Another big development that has come to the fore is that of the BJP. They too are now going to be in a huddle at 5 p.m. where the core group of the BJP is going to be meeting to decide the future course of action, as Nitish Kumar makes it clear that he does not want to be in an alliance with the BJP anymore. Now, a symbolic, protest celebrations have all been happening there on ground in Bihar. Hectic political activity. We saw there was a JDU meeting that was chaired by Chief Minister Nitish Kumar. There was also a meeting of the RJD that was held by Tejasvi Yadav, where it was decided that all of them are going to be supporting Nitish Kumar. The plan is that Nitish stays the Chief Minister of the state for now. Tejasvi Yadav will be a deputy, but there is a formula of changing that or reversing that as far as 2023 is concerned. All of this is planned to Nitish Kumar's 2024 national ambition, is what sources within the JDU have told us. Listen in to some political reactions coming in as hectic parleys are on there in Patna. आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में यह कहना ठीक है कि राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से चीजें होती हैं। आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। नहीं, इसमें क्या शक है।
और इसमें सिर्फ हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी नहीं बल्कि और पॉलिटिकल पार्टियों की राय, आप जो एलीट क्लास है देश का, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, आंध्रा का हो, कर्नाटका का हो, कहीं का भी आप बात कर लीजिए, सब लोग ये समझते हैं कि नीतीश कुमार के अंदर वो सलाहियत है कि देश को उनको लीड करना चाहिए। इसमें क्या, इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उनके अंदर जो सलाहियतें हैं, उनकी जो खूबियां हैं, वो देश को लीड करने के लायक है और है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। Aishwarya continues to get us the very latest from on ground there. And Aishwarya, we're given to understand that the JDU meeting is over. Senior leaders of the party who were present in that meeting have left, but Nitish Kumar is still there in his office. Well, that's right. A meeting was called in by Nitish Kumar and all the MLAs and MPs were there in this meeting. The meeting has concluded, and as Lalan Singh clearly stated that there was a formal, briefing that was made by Nitish Kumar in this meeting, and suggestions were also being sought on what should be the arrangement of this new government, and what they wanted as far as Nitish Kumar's roles in this new government is concerned has been communicated, and the decision has been made as far as the JDU camp is concerned, and they are just waiting for the letter of support now being which will be handed over by the RJD MLA Tejasvi Yadav, and this is surely in a few minutes from now. We are just waiting for all these MLAs who are holding its own meeting here at Rabri Devi's residence of the RJD and and Congress and the left leaders, and they will be coming out and will be heading towards directly to Nitish Kumar's residence, Chief Minister's house. It has been also told by the sources that Nitish Kumar is still in his office, and he has communicated that he will be heading and marching towards Raj Bhavan, as he has already sought time from the governor, and at around 4 PM the governor has given time to Nitish Kumar. A show of strength, a march will be conducted by JDU, RJD, left parties and the Congress MLAs towards Raj Bhavan. That means the BJP has been completely set aside by the Mahagathbandhan leaders, as they have the numbers in their hands, and also what we are witnessing here on ground, where all the action is unfolding outside Rabri Devi's residence and the JDU camp, is that they are just waiting for this letter of support to come out, and then they will be heading towards Rabri Devi's residence. On the other side, a hurdle of meeting is taking place of the BJP MLAs and their ministers at Tarkishore Yadav's residence since 1 PM as well, and in the evening the BJP core group meeting will be held at the BJP state headquarters at around 5 PM. So certainly you can see a lot of Karyakartas here at Rabri Devi's residence now. In fact, the arrangements for catering is now going inside, as you can see in these visuals at Rabri Devi's residence. Because remember, in this meeting, Tejasvi Yadav also said to all those MLAs that please do take a lunch, and then they should leave Tejasvi Yadav's residence, as what we are also understanding is that there will be a lunch that is also being prepared inside Tejasvi Yadav's residence for all the party MLAs, because he has thanked all the party MLAs to give him support. Now, the biggest question over here is that what will be the fate of Tejasvi Yadav in this newly formed government? Absolutely, and from what our sources have told us, we're given to understand now the latest coming to the fore from within the Tejasvi Nitish meeting is that Tejasvi has put certain conditions for the RJD to support the JDU and form the next government. Madhav Gopalakrishnan with me for more on this. Madhav, certain demands have been put forth by Tejasvi Yadav for the RJD. Do share details.
Well, yes, and this is quite common when, in fact, alliance partners coming together. Now, of course, RJD, of course, is certainly bargaining with the JDU as far as several key positions are concerned. Now, this involves important ministries such as the Home Department and also, of course, the Speaker's post. Two things that the RJD has asked from the JDU. This is, of course, in the situation that, of course, the JDU will have the Chief Minister's post. Nitish Kumar widely expected to continue in that post. Whether there will be a Deputy CM or not is something that we have to also watch out for. But at least two important demands coming in from the RJD side, and that is of having the Home Department and also, of course, as far as the Bihar Assembly Speaker is concerned. So will the JDU accept these demands of the RJD? That's what we need to watch out for. So the process of formation, even before the actual meeting with the governor has taken place, the negotiations between the two alliance partners or to be alliance partners, the JDU and the RJD, is currently underway. The discussion and dialogue process is on, and also, of course, the process of forming the next government in Bihar, the details of which are being discussed at this moment. But all eyes on that meeting that is to take place in the governor's house in a couple of hours from now. What will happen over there, and really, of course, following that, what would be the big announcement as far as the following of this current regime is concerned? That's something that we'll have to watch out for. And of course, in terms of what happens as far as the government formation process is concerned, all of that we need to watch out for. Absolutely. The stage was set for Nitish breaking away from the BJP with several key meetings of Prime Minister Modi as well that Nitish Kumar had skipped in the last couple of months. That really set the stage. The stand that was taken by the two allies on Article 370 was also a bone of contention between the two parties. And Nitish Kumar is someone who's known to switch side. This is perhaps the fifth time that he has done so, where he switched sides with the parties. His relationship with the BJP has been a love-hate relationship, so to say, over the last couple of years. And as we see hectic political activity gather steam there in Bihar, now we know, Aishwarya, that the RJD and the JDU has been in a huddle right before they meet the governor at 4 o'clock. But what about the BJP? We're given to understand that the core group of the BJP is only going to be meeting at 5 o'clock. Are they waiting to watch what exactly transpires at the Raj Bhavan before they decide on a strategy? Well, sources within the BJP camp had clearly stated to us that, they will be waiting for the first move of Nitish Kumar officially to come out, and therefore they will make the decision. The core group meeting of the Bihar ministers as well as, senior leaders of the BJP has been already is already underway at Tarkishore Yadav's residence, the deputy of Bihar, and the BJP core group at the BJP state headquarters here in Patna. Only after that, the BJP ministers, the 16 BJP ministers will be resigning, is what the sources within the BJP camp has been. Right, that's what we're given to understand for now. Of course, in about an hour and a half at 4 o'clock, when we see Tejaswi Yadav and Nitish Kumar at the Raj Bhavan, we are going to know what exactly is going to transpire. But for the benefit of all our viewers who've just tuned into the broadcast, let me tell you what exactly has transpired this morning as far as the political Game of Thrones in Bihar is concerned. Number one development, Nitish Kumar has finally decided to break ties with the BJP and walk away from the NDA alliance. Tejaswi Yadav of the RJD has handed over his letter of support to Nitish Kumar. The CPIM is likely to give support to the Nitish Kumar government if he forms government with RJD Congress combined from the outside. The CPIML will also be extending support from outside. Nitish and Tejaswi are going to be marching to the Raj Bhavan to meet the governor at 4, where they will be apprising the governor of Nitish's decision to break away from the BJP and from the NDA alliance. Tejaswi Yadav at the RJD meeting told the MLAs that after Bihar, we now must prepare for a government change at the centre as well. Celebrations have broken out in the RJD camp. Lalu Prasad's daughter took to Twitter, where she spoke of how preparations for the Raj Tilak are on. At the Chief Minister's residence as well, we did see celebrations where JDU supporters and party workers had gathered. The BJP, meanwhile, continues to wait and watch, and the core group of the Saffron Party is going to be meeting at 5 p.m. to decide the future course of action. Those are the latest developments coming to the fore from Patna. Listen in to some reactions coming in from the BJP as well. नीतीश कुमार जी ने पिछले 15 साल में राज करते हुए
गांव-गांव में बिजली पहुंचाई है और लालटेन का नामो निशान उन्होंने मिटा दिया है, क्योंकि कहीं पर भी लालटेन नहीं जलता। लेकिन आज बिहार के अंदर सुशासन के साथ हमारी वहाँ सरकार है। मुझे तो अभी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है। मैं पटना जा रहा हूँ। Aishwarya continues to get us the very latest from on ground there. Aishwarya, what's happening at the Chief Minister's residence? The JDU meeting is over, but Nitish is still deciding on the strategy. Tejasvi Yadav has put forth certain demands. Is the JDU going to relent? Well, what we are learning is that Nitish Kumar dialed Tejasvi Yadav just few hours ago, and the important things that are coming out from this phone call between Nitish Kumar and Tejasvi Yadav is about the arrangement of this new government. Now, what we have been breaking on our channel is the inside details of the phone call which has been made. Now, the RJD had clearly stated that the speaker of the new assembly should be of the RJD, the Home Minister and the Home Ministry should be of the RJD, and Nitish Kumar can continue as the Chief Minister till 2023. Tejasvi Yadav can come only after that and can take over the position of the Chief Minister, and soon after that what the sources within the JDU camp is also stating is that Nitish Kumar can later on after 2023 can move out of Patna and can go to Delhi for his national politics ambitions. And this is certainly a very crucial point. Nitish Kumar, who was holding its meeting with the JDU MLAs and the Member of Parliaments, the meeting has concluded and still Nitish Kumar is in his office, but certainly he is waiting for this letter of support, which is very crucial, which will come out from Rabri Devi's residence here, where it has been signed by the MLAs of Congress, RJD and the left parties. Remember, the CPIM will give outside support to this newly formed government of Mahagathbandhan, but certainly it is to be seen that what will be the fate of Tejasvi Yadav in this new government. But as you can see in these visuals as well, Karyakartas from RJD are very happy. They are in celebratory mode. They are very happy of what is unfolding in the state of Bihar, as BJP has been set aside, but at 5 PM it will be very crucial for the BJP as well, as they are holding its core group meeting. Absolutely, and it will be interesting to see what really the BJP decides to do from here on, because it's not just a change of government in Bihar that we are seeing. RJD in fact has now come out and even said that Bihar's done, Delhi is going to be next. Nitish Kumar, we do know that harbors national ambitions. What this means for 2024 is also something that we will get you details and analysis of here on Times Now. But for the moment, a quick break. Be back with more. Don't go anywhere. The most pressing issues, the most informed minds, free and fair exchange. Converse India with Rahul Shivchankar. 3-4 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು, ನೈತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ, ನೆಹರು ಮಾಡಿದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಜನ ನಮ್ಮ ಋಣ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇವತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ 2 ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. 3-4 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಂಚತ್ತು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಳು ಬೀಳುತ್ತೆ. He has openly confessed, he has openly admitted. In fact, taking this cognizance, I think our agencies should book a case, should really book a case against him and also make an enquiry, because he would be knowing who are all the beneficiaries. A very good afternoon. You're watching Breaking Ground with me, Kritsween Walia, and our top focus all through today has been the political crisis in Bihar and the latest amongst the indications being sent out by Nitish Kumar to break away from the BJP. He has now decided to take a final call, dump the BJP, and we are in fact shortly going to be witnessing both him and Tejashwi Yadav march towards the Raj Bhavan. Let's quickly take you through some of the top developments we're tracking from Bihar.
now Nitish Kumar has decided to break away from the NDA alliance. The word has been sent out formally as well. We're waiting for the parties concerned to come out with an official announcement. That's all. Tejasvi Yadav is also all set to hand over the letter of support to Nitish Kumar. In fact, the two will be seen marching together towards Raj Bhavan is when Tejasvi Yadav will formally hand over the letter of support to Nitish Kumar. Congress too has agreed to support Nitish Kumar government. Remember, the Congress said if the RJD is willing to support Nitish Kumar, so are we. As far as the left parties go, they have also decided to support the Nitish government, but from the outside. The RJD has sought Speaker's post and the Home Ministry. That's the source-based information we're picking up from the RJD camp at the moment. Furthermore, Nitish Kumar and Tejasvi, like I mentioned, are going to be marching to Raj Bhavan. Of course, this is right before Nitish Kumar will formally be meeting the governor. That is when he will be presenting the letter of support both from the RJD and the Congress, as is being told by reporters on ground. Nitish Kumar will be meeting the governor at 4 p.m. so that march is to take place right before that. And Tejasvi has already sent out a message to his MLAs, to his supporters. And the big message that has been sent out by him ahead of 2024 elections, he says, after Bihar, ready for change at center. So that's the big word coming in from Tejasvi Yadav. And parallelly, we're seeing celebrations break out at Rabri Devi's residence already. A lot of reactions coming in from the family of Tejasvi Yadav, from the family of Lalu Prasad Yadav, who are saying that it's time for the Tilak, Raj Tilak, and the BJP meanwhile also now slowly moving into action, will be holding a core group meeting at 5 p.m. Already a meeting that is underway at the Deputy Chief Minister's residence. Some of the BJP leaders are in attendance. So those are the top political developments we're picking up. Non-stop political reactions also continue to pour in. Listen in. आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में यह कहना ठीक है कि राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से चीजें होती हैं। आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। इसमें क्या शक है? और इसमें सिर्फ हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी नहीं, बल्कि और पॉलिटिकल पार्टियों की राय, आप जो एलीट क्लास है देश का, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, आंध्रा का हो, कर्नाटका का हो, कहीं का भी आप बात कर लीजिए, सब लोग ये समझते हैं कि नीतीश कुमार के अंदर वो सलाहियत है कि देश को उनको लीड करना चाहिए। इसमें क्या, इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उनके अंदर जो सलाहियतें हैं, उनकी जो खूबियां हैं, वो देश को लीड करने के लायक है और है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने पिछले 15 साल में राज करते हुए गांव-गांव में बिजली पहुंचाई है और लालटेन का नामो निशान उन्होंने मिटा दिया है, क्योंकि कहीं पर भी लालटेन नहीं जलता। लेकिन आज बिहार के अंदर सुशासन के साथ हमारी वहाँ सरकार है। मुझे तो अभी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है। मैं पटना जा रहा हूँ। Let me quickly introduce our colleagues Mohit and Aishwarya, who continue to stay on with us. Mohit is tracking developments that are now coming in from the national capital. But to Aishwarya first, as a lot of action is unfolding in Patna. Aishwarya, now back-to-back meetings that have been ongoing since 11 a.m. this morning, but we are picking up inside details on the kind of demands that have been put out by Tejasvi Yadav. Now, source-based information suggesting that Tejasvi Yadav has demanded the Speaker's post for the RJD as well as the Home Ministry as well. Well, that's right. A phone call was made and Nitish Kumar dialed Tejasvi Yadav a few minutes ago
and Nitish Kumar on one side waiting for the letter of support that will come out from Rabri Devi's residence to the Chief Minister's residence, and certainly what kind of arrangement it should be for the new Mahagathbandhan government is something which remains to be seen. But all right, let me for the moment, Ashwarya, interrupt you there. Let's quickly take in a BJP voice coming in. Let's cut across. इन्वेस्टर भवन जो भवन है उसका उद्घाटन कर दिया है। अब मैं बिहार जा रहा हूँ, पार्टी नेतृत्व की तरफ से ही इस पे बयान आएगा। अभी मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। कि आप लोगों ने उनकी पार्टी को कमजोर किया। हम सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, हम किसी को कमजोर नहीं करते। लेकिन आरोप तो लग रहा सर आपके ऊपर, जेडीयू को 2020 से बीजेपी कमजोर कर रही है। बार-बार वो ये बोल रहे हैं। देखिए कौन क्या कह रहा है मैंने सुना नहीं है। मैं पटना जा रहा हूँ, पार्टी का जो नेतृत्व है वही ऑफिशियल बयान इस पे देगा, क्योंकि मैं इन्वेस्टर जो समीर यहाँ पर एक भवन का उद्घाटन जो पहले से तय था उसी निमित्त बिहार पटना से दिल्ली आया था, फिर से अपनी जन्मभूमि बिहार जा रहा हूँ। हमने ईमानदारी से बिहार की 14 करोड़ आवाम की और नौजवानों की उद्योग और रोजगार की चिंता की है, और पूरे जब से मैं कोरोना काल में ही मंत्री बना, लेकिन मैंने जिस 1 मिनट भी चैन से बैठा नहीं, मैंने मेहनत की है। और आज भी इन्वेस्टर भवन का यहाँ उद्घाटन था, इस निमित्त आया था। जो पार्टी की तरफ से ऑफिशियल सारी घटना पे नज़र है, जब कोई टिप्पणी होगी तो वो पार्टी की तरफ से होगी। अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना सर, आप बिहार सरकार की गाड़ी में जरूर बैठ रहे हैं, लेकिन आगे क्या सर, वहाँ उतरेंगे तो यही गाड़ी रहेगी सर? सर यही गाड़ी रहेगी सर? अभी हमें कुछ नहीं, जेडीयू के आरोपों पर क्या कहेंगे आप? अभी मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, पार्टी की तरफ से बयान आएगा सर। लेकिन आरोप तो आपके ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं। So you heard the Bihar Minister and BJP leader Shahnawaz Hussain there. Let me quickly go back to Ashwarya and then we'll try and reconnect with Mohit as well. But Ashwarya, we heard the BJP leader there, Bihar Minister Shahnawaz Hussain, really not breaking silence with regards to the BJP strategy, but back-to-back BJP meetings have also begun. Later this evening, we will see the BJP core meeting take place, and right now some of the BJP leaders are the Deputy CM's residence as well. Well, that's right. BJP remains completely quiet as far as the current political situation which is unfolding in the state of Bihar is concerned. They are just waiting for the first official move from Nitish Kumar, and soon after that only BJP will make its decision of resigning from the ministerial position. Remember, BJP has 16 ministers from their quota in the current government, and at 5 p.m. when the BJP core group meeting will held, it will be decided that what's going to be the future course of action as far as the BJP camp is concerned. Already there is one meeting which is going currently at Tarkeshwar Yadav's residence, where several senior BJP leaders are there and they are deliberating upon the current situation. But as far as we were talking about the inside details of what was that particular phone call that was dialed by Nitish Kumar to Tejasvi Yadav, in which there were several demands that was proposed by Tejasvi Yadav in the newly arranged government that will be taking place as far as the BJP, as far as the JDU RJD alliance is concerned. The RJD has demanded that there should be speaker of RJD, there should be home ministry that should be given to the RJD. Now another piece of news that is coming in as far as the phone call is concerned, Nitish Kumar has proposed that there should be one deputy chief minister from the Congress quota, which was opposed by Tejasvi Yadav and the RJD. Clearly this is certainly taking more of a time between these two parties, so that only after all these arrangements which will be finalized between JDU and RJD, the letter of support will come out. Currently we are here at
Rabri Devi's residence, where this meeting of Congress, RJD and the left parties is currently underway, in which they are waiting for the final word from the top leadership as to what sort of arrangements and what sort of final decisions has been taken by the top leadership on what sort of portfolios and what will be the fate of Tejasvi Yadav in this new government will be there, and therefore the reason it is getting quite late. We were expecting that they would come out from here and they will be marching towards Chief Minister's residence, but still it's around 2:35. All the MLAs from Congress, RJD and the left parties are still here inside the residence, and no one has come out. But as far as the sources within the RJD camp is concerned, the piece of news that is coming in is that all the after the final arrangement will be discussed with the top party leaders. Only after that the MLAs will march to the Chief Minister's residence, as Nitish Kumar has already sought time with the governor at Raj Bhavan, and at around 4 PM was the time that has been given, where show of strength will be there, where all the party MLAs from RJD, JDU, Congress and left parties will be marching down towards the Raj Bhavan. But these visuals clearly are showcasing that how all the party MLAs and Karyakartas are here outside Rabri Devi's residence, and they are clearly very happy. They are in a congratulatory mode, and they are congratulating each other. They are looking very confident of the new government which will be there in the state of Bihar as far as the RJD-JDU alliance is concerned. Yes, so is it that the RJD already stepping into the role of the big brother here, because there are certain demands being put out by the RJD already, and interestingly, like Aishwarya pointed out, information also coming in how Nitish Kumar proposed to have one deputy chief minister from the Congress as well, and that was turned down by Tejasvi Yadav. That was turned down by the RJD. So very interesting turn of events. Let me go back to Mohit, because the BJP strategy is also very important to follow up with. Mohit, we just heard Shahnawaz Hussain talk about how he's headed to Bihar now. B also cleared the air, said that the allegation coming in from the JDU of how the BJP has engineered a revolt within the JDU is completely false, has rejected that narrative. Well, yes, and we took that question directly to Shahnawaz Hussain. He's the industry minister of Bihar, and he was there in Delhi for a program. Now he has a 3:30 flight, and he'll be reaching direct to the Patna, and after that he'll be going to the BJP's core group meeting. Now, when we posed this question to him that the JDU has leveled allegations that the BJP were the ones who are weakening their party, he says that हम सिर्फ अपनी पार्टी मजबूत करते हैं, हम सिर्फ अपना संगठन मजबूत करते हैं. तो a clear message coming in from the BJP that they have no role to play what is happening within the JDU, be it what the resignation of the RCP Singh or the allegations of the Lallan Singh. So clearly BJP as of now, but between is having a staunch silence on this particular issue. Maintaining they are silence, saying that but non-stop meetings that are scheduled for the BJP as well in Bihar. I'll come back to you, Mohit. Aishwarya, if you could just throw some more light on the latest tweet that has been put out by Upendra Kushwaha. He's once again congratulated Nitish Kumar and reiterated what he has been maintaining of how he has been seeing him, portraying him and projecting him as the national leader. He says देश आपका इंतजार कर रहा है, बिहार की बात नहीं हो रही. ऐश्वर्या, very interesting tweet coming in. Today morning as well, Upendra Kushwaha made the comment and said that Nitish Kumar has the personality of being the Prime Minister of the country, and his national aspirations clearly speaks volumes. Top aide of Nitish Kumar now again coming out and saying that Nitish ji, हम आपके साथ हैं, देश आपका इंतजार कर रहा है, and that is something which the arrangement is looking like in this new formed government here in Bihar, as it has been said, and the sources within the RJD camp has also stated to us that till 2023 Nitish Kumar will be made the Chief Minister of
Mahagathbandhan government, and soon after that Tejasvi Yadav will be handed over the post of CM, and Nitish Kumar may go out from Patna and go out to Delhi for his national aspirations as far as the national politics is concerned. So these are few arrangements that are on the final verge of making a decisive move as far as the letter of support and handing over that to governor is concerned, because it is very important to see that the single largest party, which is RJD, which is 79 MLAs in their kitty, will give the CM post to Nitish Kumar, and what will be the fate of Tejasvi Yadav then? So certainly the Karyakartas over here is saying that they will go ahead with the decision of the top leadership of RJD, whatever they decide. But certainly Tejasvi Yadav is well smart, and he is now deliberately looking for the negotiations which is going on with the JDU camp and Nitish Kumar as well, taking and propose that RJD wants speaker's post, RJD wants home ministry in their hand, and now when Nitish Kumar said that he wanted one deputy chief minister from Congress quota, then RJD and Tejasvi Yadav opposed it. So now these final arrangements are being made, and a decisive move will come soon. So in a sense, the RJD is also trying to set its terms. It's also trying to bargain in that sense with the JDU, with Nitish Kumar, since it's extending complete support, and remember, it's the single largest party. Interesting comments coming in. With that, it's time for us to head into a very short break. Be right back. The fact of the matter is, whether it is imported inflation, whether it is tinkering of GST for a longer period, the fact is that the burden is on the common man, and the common man frankly doesn't really care about what's happening in the United States or the UK or Russia or Ukraine. They're worried about their day-to-day living and per capita incomes where they are in India. The pressure is as much, magnified on common people in this country than they are abroad. And of course, you have social security systems which exist abroad, which don't exist in India. So I come back to asking you the same question. Is the government really being rather hard-hearted when it looks at these issues? After all, running a country of the kind that India is, with poor middle classes, lower middle classes forming the bulk of the population, do you think the government is doing enough to cushion the impact on these classes of people? So let me say that as a policy maker, one has to make various trade-offs. So first of all, let me be clear that the government is fully cognizant of the spike in inflation. Otherwise, you wouldn't have seen the measures we have taken, including the Reserve Bank tightening monetary policy. So clearly, the tightening of monetary policy is one response to bringing down inflation. But do remember that this is a trade-off, because if you do tighten monetary policy too fast, too quickly, yes, it will bring down inflation, but then it will slow down growth, it will slow down incomes, and so on and so forth. So there is a balancing act that has to be done. Ultimately, what do we want to do? We want to increase as far as possible the trajectory of welfare and real incomes. And in that context, we have to trade off between growth and inflation. So the trade-off that we are making right now is, rather than tighten so harsh that growth slows down, we are tightening somewhat, but not so much that growth slows down too much. So keeping GDP growth going, create jobs, which is an important question, which I hope we will come to later on. These are issues that are also foremost in our mind. So given this balance we have done, I think the Reserve Bank's response is the correct one for this point in time. Well, Sanjeev Sanyal, governments are not necessarily only policy makers. They are also political entities, and you understand politics as much as anybody else. I want to ask you a simple, straightforward question that is... I am a policy... Wait. No. No,
I cannot answer any questions on politics. I'm a policy maker. So if there are political questions, I'm afraid I will simply not be in a position to answer them. Well, that disclaimer taken on board, but I'm still asking you the question that when policy makers within the government do not have enough measures that solve problems of the common people of India, they end up being called insensitive and arrogant because they're winning elections anyway. They don't really need to bother about the common man. That is the question that often comes up. How do you think the government can respond to that? As I said right in the beginning, I'm not a politician, and winning or not winning elections is a concern of the political leadership. I can tell you the key here is that as a policymaker, I need to maintain macroeconomic stability in an environment where clearly there are serious threats to the rest of the world. You've already seen neighboring countries like Sri Lanka going into vicious cycles on their macroeconomic management. We are seeing serious issues with inflation in Europe, in US. These are turbulent times. So for me, very important that in these turbulent times, I keep a steady ship. Yes, I have to make sure that inflation doesn't spiral up. That is certainly a concern. It is a concern to the average man, and it is a concern to me personally as well. I mean, I buy the same vegetables and fuel you do. At the same time, do remember that I have to also make sure that growth keeps going, because we are, after all, recovering out of 2 years of very difficult COVID pandemic related disruptions. And so in a situation where the growth is finally doing reasonably well, I do not want to create extra hurdles than what is absolutely necessary. So a balancing act has to be done. I think the Reserve Bank and the Ministry of Finance are doing a fine job so far, and I wouldn't get too thrown off by political rhetoric or by advice from international experts who have clearly not been able to predict how these things were going to pan out. Thanks for staying with us here on Times Now. Viewers, remember, as far as politics in Bihar goes, we're talking about the longest serving chief minister in the state, Nitish Kumar. But there's much more to his tenure as a chief minister all throughout. Let's quickly take you through the breakup, patch-up saga of Nitish Kumar. Here are the details. We start with 2013, wherein after Prime Minister Modi was appointed BJP's poll campaign panel chief, Nitish Kumar quit the NDA. So that's the first breakup of Nitish Kumar with the NDA. In 2015, he led Mahagathbandhan with the RJD and Congress and won the election. So this is the 2015 election we're talking about, wherein he formed a government with the RJD and the Congress. Cut to 2017, where he quit the Gathbandhan, citing graft allegations against Lalu family. So the corruption allegations against the family was a deal breaker back then. By the way, the Lalu family is still under graft cloud. And cut to 2022, Nitish Kumar returned to NDA fold. JDU plus the BJP formed the government in Bihar. The Prime Minister Narendra Modi made it very clear that the chief ministerial phase before the elections also is going to be Nitish Kumar as well. Cut to present, wherein he's dumped the NDA clearly, citing differences, has shaken hand once again with the RJD and the Congress, and the numbers clearly surpassing the current strength of the NDA as well. They have 160, including the left parties, and that's the kind of strength now we're going to be looking at in the coming few hours. Let's quickly listen into more political reactions coming in from the JDU. नीतीश कुमार बहुत मतलब कि अपना तरीका से सरकार चलाते हैं, ये अपना ढंग से चलेंगे। जो बड़ी पार्टी है वो सोचेगा कि हम अपना ढंग से चलें, इसलिए कि हमारा बिहार में अच्छा प्रभाव हो, तो यही लास्ट चलते चलते फिर नुकसान होगा बिहार को नुकसान हुआ। लेकिन ये जो नीतीश कुमार की एक छवि बन गई है, पहले बीजेपी के साथ, फिर महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद उसको छोड़कर फिर बीजेपी गया, फिर कहा जा रहा है कि बीजेपी को छोड़कर फिर आरजेडी के साथ जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी छवि को भी तो नुकसान दे रहा है।
वैसे मानिएगा तो बिहार या और देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो लोकतंत्र और आपका संविधान का रक्षा करे। आरजेडी को क्या करना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी तो मुख्यमंत्री के दावेदार थे जब चुनाव हुआ था 2020 में, उस दौरान कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के दावेदार है वो, और अब एक बार फिर नीतीश कुमार के नीचे उनको काम करना पड़ेगा जिस तरह की तस्वीर बन रही है। अब देखिए वो नीतीश कुमार के नीचे तो काम करना ही पड़ेगा। डिप्टी सीएम बन जाएंगे तो मान लीजिए बिहार में प्रभाव होगा, पावर होगा, सारा अधिकारी लोग होंगे, सारी मतलब कि बनने से आरजेडी के फायदा है। All right, let's go across to more reactions coming in. This one from the Lalu family. Once again, we have Rohini Acharya, daughter of Lalu Prasad Yadav, put out yet another tweet. So this tweet talking about all right, this tweet talking about the kingmaker in the current political scenario, and it reads, and I quote, आसमान की बुलंदी से भी ऊंचा उनका ईमान है, जनता जनार्दन का जो अभिमान है. So that's the poster picture that she's put out. Rohini Acharya, daughter of Lalu Prasad Yadav, who also earlier on put out a video, spoke of how it's time for Raj Tilak and the return of the Laltain. So those are the kind of responses coming in from the family of Lalu Prasad Yadav. Several RJD responses coming in. They're already taking to social media to celebrate this mega victory. Remember, the RJD, the single largest party, so the numbers clearly stacked in their favor, but with RJD, JDU and the left combined, it's certainly a big victory coming in for the Mahagathbandhan, and celebrations have now begun in the Parivar. We saw how earlier, close to 2 hours ago, she put out a video. This was a song by one of the famous singers from the state of Bihar, wherein she tweeted that video and said, Raj Tilak ki karo tayari, Laltain Dhari. That's what she said earlier on, and now she's put out this poster on your screens talking about the kingmaker in the political scenario currently playing out in Bihar. With that, it's time for us to head into a very short break. Non-stop political reactions on the other side. Stay tuned.
afternoon, hello and welcome. You're tuned into Times Now. This is Live Wire and I'm Poonam Burde. Lots lined up for you on this edition, but let's get you started with the headlines. Political potboiler in Bihar with Nitish Kumar set to meet governor at 4 p.m. RJD waits for Nitish to resign before giving the letter of support. JDU insiders claim with support from RJD, Congress and left, Nitish is likely to form the next government within 48 hours. Times Now has complete details. Celebrations begin in the opposition camp with eye on changing power dynamics. Congress is the first to officially announce backing Nitish's return to the Grand Alliance. Noida Goon Neta nabbed within hours of deadline to surrender before the court. Noida police claim to have nabbed him from Meerut near Ghaziabad. Times Now finds a walkie-talkie, one broad MLA sticker and a BJP flag on Shrikant Tyagi's Fortuner. Raises questions if Tyagi had deep political links or was he faking it. Sanjay Rathod and Abdul Sattar's inclusion in Maharashtra cabinet triggers uproar. BJP leaders cite tainted past to demand they be dropped for probity's sake. After Friday holiday for Jummah Namaz, a school in Bihar found hoisting and saluting flag of divisive organization SDPI. Administration orders investigation after video goes viral. Concern over illegal plotters, BJP Netas listed as violators. Sears upset, opposition seeds. Times Now shows you ground reality of Ayodhya. CPM Kozhikode mayor invokes Krishna at RSS outfit event. Party left completely red-faced, calls mayor's action against party's policy. Hectic parleys are on in Patna in Bihar and the political game of thrones is heating up. Here are the top developments that have taken place so far. In an hour's time at 4 p.m, RJD JDU's show of strength is going to be witnessed at the Raj Bhavan. CM Nitish Kumar's aide has come out and now congratulated him, saying the nation is waiting for Nitish. Lalu Prasad's family as well has now come out in celebratory mode, crediting the kingmaker of this entire deal, and that is Lalu Prasad Yadav, a former chief minister himself. Deputy CM's post for the Congress was proposed by Nitish Kumar, but Tejasvi Yadav has vetoed it no. He has also put forth some certain demands ahead of the formula between the two parties. Need the Home Department with the RJD is what Tejasvi has asked for. But Nitish Kumar is going to be keeping the veto call as far as deciding ministers is concerned. The RJD has said they want the speaker's post for the party. BJP meanwhile has come out and rejected the allegation that they are weakening the JDU, which is why Nitish decided to divorce them. And at 5 p.m, the BJP is going to be holding a core committee meeting to decide the future course of action. Some breaking news now coming in from on ground about the pact that is now being discussed between the new allies. 4 Congress MLAs are likely to be given ministerial berths in the new government. That's the latest that is coming to the fore. Times Now has access names of those 4 Congress MLAs who are likely to be included in Nitish's cabinet as well. Education is one of the portfolios that is expected to be given to one of the Congress MLAs. Aishwarya is live with me for more on this. Aishwarya, we have details of the 4 MLAs from the Congress party who could get a place in Nitish Kumar's new cabinet. Who are those 4 MLAs and what portfolios is the Congress seeking for them? Well, Madan Mohan Jha, who is the Congress state president for Bihar, Ajit Sharma, where last night a very crucial meeting was held. Remember, Bihar in charge, Bhakt Charan Das is also in Patna, and he along with Madan Mohan Jha, who is the Bihar state president, holded that meeting at Ajit Sharma's residence last night. Shakil Ahmed Khan and Rakesh Ram, these are the 4 names of and 4 MLAs from the Congress which can be inducted in the new Nitish cabinet. Education and other key portfolios can be handed over to the Congress quota. That's what the source is clearly suggesting to us as far as the new government formation is concerned. But it is very important to note that this do stay on with us. We'll keep getting our viewers the very latest, but some reactions coming in as well from on ground. Let's listen into those. हम लोग एक एनडीए का हिस्सा हैं
हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उसके नाते हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने जैसा आपको बताया, हम लोग एनडीए के साथ हैं, एकजुट हैं और हम लोग जहां रहते हैं एक सच्चे एक ईमानदार अलाई की तरह रहते हैं। हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वो भी उनका भी इसी तरीके से रहता था, वो कभी इधर उधर नहीं, जहां मान सम्मान मिलता है वहां रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत साफ है कि इनका जो कॉलिशन है वो एनडीए के साथ है और आगे भी रहेगा। कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ, भारत, दिल्ली। Coming in from the LJP, there we continue to be with the BJP, we continue to be with the NDA is what the reaction there coming to the fore from the son of a union minister at the center, Pashupati Paras. Aishwarya continues to be with me, and Aishwarya, at 4 o'clock is when we're expecting Tejaswi Yadav and Nitish Kumar to meet the governor at the Raj Bhavan. We are going to be seeing a show of strength because we're given to understand that the two leaders along with their supporters are going to be marching to the Raj Bhavan. Well, that's right, and we are expecting just for a few minutes. This is Rabri Devi's residence, and let me show you the visuals first over here. All the action is unfolding here as far as Rabri Devi's residence is concerned, because the meeting at the JDU office at Chief Minister's residence has already concluded, and now we are waiting for the MLAs from Congress, RJD and left parties to come out and to take that letter of support and to hand over the letter of support, in fact, to the Chief Minister and JDU Supremo Nitish Kumar. But certainly, the terms are now being set by the RJD, as RJD remains to be the single largest party in the newly formed government, and the arrangements that is likely to take place is according to the terms which is being set by Tejaswi Yadav, and therefore the reason perhaps the letter of support which was supposed to come out 15-20 minutes back from Rabri Devi's residence still taking time, because that phone call that was dialed by Nitish Kumar to Tejaswi Yadav, in which Tejaswi Yadav clearly mentioned that he wanted speaker post for RJD, he wanted the home ministry with RJD, and certainly when Nitish Kumar said that one deputy chief minister should be from the Congress quota, RJD opposed it. So the final things are to be decided between the alliance of JDU and the RJD, and therefore the reason perhaps it is taking time that this letter of support with those terms and conditions of the RJD, which is being sent out to Nitish Kumar and the JDU. Do stay on with me. We'll keep coming back to you, but more news coming is as far as the political activity in Bihar is concerned, and now one ally has dumped the BJP. Are more to follow suit? The LJP for now has said that they are with the NDA. Union Minister Pashupati Kumar Paras coming out and confirming that his party will continue to support the BJP and stay in the NDA alliance. 2 मिनट खत्म कर रहे हैं, 2 मिनट। हाँ, बिहार में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। आपका पार्टी का भी एक बिहार में स्टेक है और जिस तरीके से चीजें बदल रही है, अब करीब करीब साफ हो गया है कि एनडीए टूट कर एक तरह से नया गठबंधन बन रहा, आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा? हमारी पार्टी, हम एनडीए गठबंधन के साथ थे। 2014 में ही हम लोग एनडीए गठबंधन में गए। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और आज पूरा देश भी विश्वास व्यक्त कर रहा है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही है, इसका मुकाबला कोई दूसरा प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद से आज तक ऐसा कोई अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मिला। तो केंद्र की बात है, मतलब राज्य की बात करें, आप पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? हम केंद्र की राजनीति में हैं और केंद्र की राजनीति में मैं आपको कह रहा हूं कि मैं एनडीए गठबंधन के साथ मैं हूं और रहूंगा। क्या नीतीश कुमार ने जो आरोप लगाए हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे चिराग पासवान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इस आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो भी कुछ भी आरोप नीतीश जी लगाए हैं, ये तो आप नीतीश जी से पूछिए और चिराग पासवान जी से पूछिए। हम लोग तो सीधे चलने वाले आदमी हैं और सीधा चलते हैं। मैं एक लाइन में आपको बता दिया कि मैं 2014 से एनडीए का पार्ट हूं
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी आस्था है, हमारी पार्टी का है और हम उनके साथ रहेंगे। अगर बिहार में आरजेडी समर्थन में आके नई सरकार बनाती है, जैसे कहा जा रहा है बतौर डिप्टी तेजस्वी यादव होंगे, क्या लगता है कि जो पुराना दौर वो लौट आएगा? समय का इंतजार करिए। बिल्कुल, इनके साथ जो इनके पार्टी के दूसरे सांसद हैं प्रिंसराज, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप खुद भी यूथ हैं और यूथ की बात हो रही है और नए गठबंधन में एक बतौर आरजेडी के नेता और तेजस्वी यूथ के तौर पे ज्वाइन करेंगे, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो पहले भी इनकी सरकार, इस गठबंधन की सरकार रही थी। उस वक्त ये सरकार क्यों गिरी ये आप बखूबी जानते हैं। और दोबारा उस तरफ जाना, ऐसा क्यों ऐसी परिस्थिति बनी, ये तो बखूबी हमारे मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे। लेकिन हम लोग एक एनडीए का हिस्सा हैं, हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उसके नाते हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने जैसा आपको बताया, हम लोग एनडीए। The RLJP there with the BJP is what we're given to understand, but inside details now coming to the fore of why exactly Nitish decided to break away from the NDA alliance. Sources are now telling your channel that at least 25 MLAs within the JDU asked Nitish to part ways with the BJP. Aishwarya is with me for inside scoop of how exactly this transpired and what happened in the lead up to Nitish Kumar taking that decision today. Aishwarya, we're given to understand that many within the JDU believe that the BJP used Nitish Kumar and the JDU during Lok Sabha elections, but they did not get their due come the Bihar state elections. Well, in the past as well, we have seen that how Nitish Kumar has dumped the BJP. In fact, several of the meetings that were called by Prime Minister Narendra Modi in Delhi, Nitish Kumar did not turn up. In fact, the latest was this Niti Aayog meeting where Nitish Kumar gave preferences to attend state programs. But today morning at around 11 a.m. when all the member of parliaments and the MLAs from JDU was called at CM Awas here in Patna, they were asked about what suggestions they wanted to give to Nitish Kumar and what should be the future course of action. As far as JDU is concerned, almost 25 MLAs have clearly stated that they should part ways from the NDA and from the BJP, as BJP was controlling most of the things in the state of Bihar after the formation of NDA government after the elections, and also suggested that BJP used JDU for the Lok Sabha polls, and therefore the reason perhaps this is high time that JDU should come out of the NDA alliance. Remember, the sources also have revealed to Times Now that there was a break JDU plot. Ashok Chaudhary and RCP Singh, former union minister, was given responsibility by the BJP to break JDU and Congress, and therefore the reason when Nitish Kumar and close aides of Nitish Kumar got to know this, they finally decided to come out of the NDA and to quit NDA. Certainly, these were certain inside details that we are getting from our sources within the JDU camp, but still, all eyes are here as far as Rabri Devi's residence is concerned. We are getting inside details from what Tejasvi Yadav have been speaking to the MLAs from the RJD as well as the Congress MLAs. Remember, it is just not the Congress and the RJD who has come out with full support to Nitish Kumar and JDU, but also CPIM has decided that they will give an outside support to the government. It is also the HAM Jitem Ram Majhi's party who has said that they will be supporting the new Mahagathbandhan government. So yes, the numbers are there with the Mahagathbandhan very clearly, and what sort of arrangements it will be and what will be the fate of Tejasvi Yadav is something
it still remains to be seen. We are waiting for still the MLAs to come out as all action is unfolding here at Rabri Devi's residence, and as soon as they will come out with that letter of support, they will be going straight to CM's residence, and a show of strength is planned at 4. So we are just waiting for how the terms which are being set by the RJD in front of Nitish Kumar, whether that will be fully agreed by Nitish Kumar, as RJD remains the single largest party. And absolutely, and it's not just the terms, Aishwarya, that Tejasvi has set. Tejasvi in fact has even vetoed some of the decisions that Nitish wanted. Sources have also told us that Nitish wanted to have 2 deputy chief ministers, one for the RJD and one for the Congress, but Tejasvi made it clear that the Congress cannot have a deputy chief minister's post. Well, that's right. Tejasvi Yadav turned down that request of Nitish Kumar. A phone call was dialed by Nitish Kumar to Tejasvi Yadav, and certainly, Tejasvi Yadav told Nitish Kumar that yes, of course, important portfolios can be given to Congress, but only one deputy chief minister will be there in the state of Bihar. That will be from RJD, and Congress will not be allocated any deputy CM post. Nitish Kumar asked. So yes, the terms and conditions are now being set by the single largest party over here in Bihar, that is RJD. So is Nitish going to be a chief minister just on paper, and is Tejasvi going to be calling the shots in the new arrangement? That of course remains to be seen. Do stay on with us, Aishwarya, because we'll keep coming back to you for the very latest, and Times Now is your destination for everything that's happening in Bihar. But a quick break on this edition. We'll be back with more updates on the other side. The most pressing issues, the most informed minds, free and fair exchange. Converse India with Rahul Shivchakkar. 3-4 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು, ನೈತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ, ನೆಹರು ಮಾಡಿದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಜನ ನಮ್ಮ ಋಣ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇವತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ 2 ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. 3-4 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಕಿಂಚತ್ತು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಳು ಬೀಳುತ್ತೆ. He has openly confessed, he has openly admitted. In fact, taking this cognizance, I think our agencies should book a case.
should really book a case against him and also make an enquiry, because he would be knowing who are all the beneficiaries. Breaking news now coming in as the RJD JDU are set to form the new government in Bihar, meet the governor at 4 p.m. The BJP too is going to be chalking out its future course of action. At 5 p.m. is when a crucial BJP meeting is going to be held in Patna. The core committee meeting of the BJP will be held at 5 o'clock after Nitish Kumar and Tejasvi Yadav meet the governor to discuss the future course of action, and top leaders of the BJP are going to be attending that meeting, not just from at the state level but central leaders of the BJP who hail from Bihar, MPs and union ministers as well are going to be in attendance. Kundan is with me for more on this. Kundan, आगे की रणनीति क्या होगी ये तय करने के लिए भाजपा के जो केंद्र के मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वो पटना जाने वाले हैं अब? बिल्कुल, जिस तरीके से शाम 4 बजे के बाद जो नीतीश कुमार हैं और जो आरजेडी के नेता हैं वो जब आके राजभवन में जाके फॉर्मली ये अनाउंस कर देंगे कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है हम विड्रॉ कर रहे हैं, और वो फॉर्म ऑफ विड्रॉ क्या होगा ये थोड़ा देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दो बातें कही जा रही, दो सोर्स ऑफ एक्शंस पे काम हो रहा है। एक पहला कि हो सकता है कि वो तमाम जो बीजेपी के मंत्री हैं उनको वो बर्खास्त कर दें, उसके बाद नई सरकार बनाने के लिए, नया इंजेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करें कि हमें एक सर्टेन टाइम दिया जाए। वही दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति होगी कि बीजेपी की जो तमाम बड़े लीडर्स हैं, जिसमें एमपीज ऑलरेडी करीब चूंकि कल सेशन खत्म हो गया था, जा चुके थे, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री हैं जिसमें गिरिराज सिंह की बात कर लें, पार्टी की जो सीनियर लीडर्स हैं राधा मोहन सिंह से लेकर रविशंकर प्रसाद से, वो सब लोग पटना जा रहे हैं, जो कि शाम को बीजेपी की भी एक कोर कमेटी की बैठक होगी और क्या नीतीश का रुख रहा बिहार पॉलिटिक्स में, क्या चेंजेस आ रही है और इनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि इन्होंने जो हमारे सोर्सेज कह रहे थे कि पहले इन्होंने साफ कर दिया था कि हमारे तरफ से कोई स्टेप्स नहीं लिया जाएगा, तोड़ना है तो तोड़ सके। Right, so central leaders of the BJP along with the state unit is going to be meeting at 5 p.m. to decide the future course of action. Kundan, for the moment, thank you so much for getting us the very latest. Let's listen in to more political reactions coming in. सर, बिहार में एनडीए का गठबंधन टूट गया है। अब मिनिस्ट्रीज के लिए भी बात हो रही है। 4 बजे नीतीश जी गवर्नर के ऑफिस जाएंगे, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं कहना चाहता हूं कि ये गठबंधन चुनाव लड़ा था, यानी बीच में नीतीश जी का अलायंस हो गया बीजेपी से,
लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पुराना गठबंधन जो था जिसके चलते चुनाव जीते हैं, लोगों के बीच में जनता से वोट जो मिला था वो इसी गठबंधन को मिला था, तो इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। सर, सीनियर जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के योग्य हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस बार उनको ये सीएम पद तेजस्वी यादव को दे देना चाहिए और खुद 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की तैयारी करनी चाहिए? नहीं, मैं मानता हूं कि वो काबिल आदमी है, तो यदि सारे अपोजिशन के सहमति से वो बनते हैं तो सबसे काबिल आदमी है वो। तो लोग मांग कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। सर, भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार जी पलटू राम हैं, तो इस पे आप क्या रिएक्शन देंगे? अब ऐसा है कि वो कहें क्या, तो उनका जो है वो कल तक तो उनको मुख्यमंत्री मान रहे थे, अब आज क्या कह रहे हैं इसका कोई मायने नहीं है। सर, नीतीश कुमार जी ने बोला है कि एक डेप्यूटी सीएम की पोस्ट। Former president of the JDU, Sharad Yadav, there coming out and saying that if there is consensus on Nitish Kumar as the next prime ministerial candidate, then he is the most qualified one. 2024 ambitions for Nitish Kumar has what has triggered this breakaway from the NDA alliance, is what senior JDU leaders had confirmed to Times Now as well. Many other reasons of why the Nitish Kumar government decided to walk away and join ranks with the RJD and the Congress to form the new government. All of those inside details you are going to be getting here on Times Now, but a quick break on this edition. We'll be back in just 2 minutes. Don't go anywhere. The fact of the matter is, whether it is imported inflation, whether it is tinkering of GST for a longer period, the fact is that the burden is on the common man. And the common man, frankly, doesn't really care about what's happening in the United States or the UK or Russia or Ukraine. They're worried about their day-to-day living and per capita incomes where they are in India. The pressure is as much, magnified on common people in this country than they are abroad. And of course, you have social security systems which exist abroad, which don't exist in India. So I come back to asking you the same question. Is the government really being rather hard-hearted when it looks at these issues? After all, running a country of the kind that India is, with poor middle classes, lower middle classes forming the bulk of the population, do you think the government is doing enough to cushion the impact on these classes of people? So let me say that as a policy maker, one has to make various trade-offs. So first of all, let me be clear that the government is fully cognizant of the spike in inflation. Otherwise, you wouldn't have seen the measures we have taken, including the Reserve Bank tightening monetary policy. So clearly, the tightening of monetary policy is one response to bringing down inflation. But do remember that this is a trade-off, because if you do tighten monetary policy too fast, too quickly, yes, it will bring down inflation, but then it will slow down growth, it will slow down incomes and so on and so forth. So there is a balancing act that has to be done. Ultimately, what do we want to do? We want to increase as far as possible the trajectory of welfare and real incomes. And in that context, we have to trade off between growth and inflation. So the trade-off that we are making right now is, rather than tighten so harsh that growth slows down, we are tightening somewhat, but not so much that growth slows down too much. So keeping GDP growth going, create jobs, which is an important question, which I hope we will come to later on. These are issues that are also foremost in our mind. So
Given this balance we have done, I think the Reserve Bank's response is the correct one for this point in time. Well, Sanjeev Sanyal, you know, governments are not necessarily only policy makers. They are also political entities, and you understand politics as much as anybody else. I want to ask you a simple, straightforward question that is... I am a policy... Wait, no. I cannot answer any questions on politics. I am a policy maker. So if there are political questions, I'm afraid I will simply not be in a position to answer them. Well, you know, that disclaimer taken on board, but I'm still asking you the question that when policy makers within the government do not have enough measures that solve problems of the common people of India, they end up being called insensitive and arrogant because they're winning elections anyway. They don't really need to bother about the common man. That is 2017 में ये एनडीए के साथ आ गए और उसके बाद 2020 का जनादेश जो एनडीए के लिए था, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा और आज उस जनादेश का अपमान कर ये पुनः महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। इसमें कौन सा बिहार का हित छुपा हुआ है मुझे बताएं। और पिछले 1.5 साल में भाई ये खूबसूरत समय था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास 2017 में जब ये वापस एनडीए में आए थे, वो एक खूबसूरत मौका था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास, क्योंकि एक लंबे समय के बाद जो प्रधानमंत्री जी की भाषा में डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, वो डबल इंजन की सरकार एक लंबे समय के बाद लगभग 2.5 दशक के बाद बिहार को मिली थी, जहां केंद्र की तर्ज में बिहार में भी सरकार थी। बिहार की विडंबना यह रही है कि एक लंबे अरसे तक केंद्र में कोई और सरकार, बिहार में कोई और सरकार, विरोधाभास ही उन सरकारों का इतना ज्यादा रहता है। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी 2005 में, जब मुख्यमंत्री जी बनकर आए थे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, और जब तक केंद्र में यूपीए की सरकार केंद्र से हटी, एनडीए की सरकार बनी, तब तक मुख्यमंत्री जी महागठबंधन में चले गए। तो भैया 17 के बाद 22 तक ये खूबसूरत मौका था, उस डबल इंजन की सरकार का ये उपयोग कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर बिहार के विकास के कार्यों को ये गति दे सकते थे, पर बदले में इन्होंने क्या किया, पूरा समय अपना व्यर्थ कर दिया अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। कैसे मैं राष्ट्रपति का दावेदार बन जाऊं। भैया ये जो व्यक्ति सीएम मटेरियल ढंग से नहीं बन पाए, वो पीएम मटेरियल तक ही उनकी महत्वाकांक्षाएं सीमित नहीं थी, प्रेसिडेंट मटेरियल बनना चाह रहे थे। क्यों इन्होंने 6 अगस्त तक का इंतजार किया, भैया बताएं ना मुझे। क्या 6 अगस्त तक इनके भीतर, इनके मन में क्या ये महत्वाकांक्षा थी कि संभवतः मुझे उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया जाएगा, कुछ और नहीं तो भागते चोर की लंगोटी सही भाई, राष्ट्रपति नहीं बने तो उपराष्ट्रपति बन जाए? क्या ये महत्वाकांक्षा थी इनके भीतर? और अगर वो महत्वाकांक्षा नहीं थी तो 6 अगस्त के बाद रातों रात ऐसा क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी की अंतरात्मा जागती है कई बार, पर उनकी अंतरात्मा तब ज्यादा जागती है जब जब इनकी कुर्सी डोलती है, जब जब मुख्यमंत्री पद इनको खतरे में दिखता है, मुख्यमंत्री जी की अंतरात्मा जागने लगती है। अब इनको पता था, ना राष्ट्रपति बने ना उपराष्ट्रपति बने, अब इनको पता था कि सीएम भी ये ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे, और 24 के बाद तो संभव ही नहीं है इनका सीएम रहना। और उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने क्या शुरू किया, बहाने तलाशने शुरू किए। आज मुख्यमंत्री जी को चिराग मॉडल याद आ रहा है, हाँ, चिराग पासवान मॉडल उनको याद आ रहा है, और डर इस बात का कि चिराग पासवान मॉडल पार्ट 2 कहीं रिपीट ना हो जाए। भैया जब वो चिराग पासवान मॉडल का जिक्र कर रहे थे तो हिम्मत ही तो सीधा बोलते ना कि कौन तैयार कर रहा था चिराग पासवान का मॉडल। चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर आप दूसरों को निशाना बनाने का काम क्यों कर रहे हैं? भैया हिम्मत रखिए और सीधा बोलिए कि भैया भाजपा ने क्या आपके साथ ये किया। भाई 2020 का निर्णय लोक जनशक्ति पार्टी ने लिया, ये निर्णय मैंने लिया कि मुझे जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनाव नहीं लड़ना है। भाई मैंने एक नीतिगत फैसला लिया, क्योंकि मेरा खुद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पे मैंने काम किया था, और मैं मानता था कि भैया किसी भी गठबंधन में अगर आप जाते हैं तो एक परंपरा रही है गठबंधनों की कि आप साझा न्यूनतम कार्यक्रम पे आप काम करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ड्राफ्ट किया जाता है। ये हर गठबंधन की सरकार करती है। हम लोगों ने यूनाइटेड फ्रंट की सरकार से लेकर यूपीए की सरकारों तक सब जगह देखा। एनडीए ने नहीं किया क्योंकि इनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो अलग बात है, बट जब जब गठबंधन की सरकारें रही हैं एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार होता है। मेरा नहीं विश्वास है भैया मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय पर। मैं चाहता था कि मेरा बिहारी फर्स्ट कोर्स में ऐड किया जाए, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने ऐड किया?
मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इनका अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी तमाम बातें मानते हुए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई संरक्षण नहीं कर रहा हूं, पर जब ये बातें बोलते हैं तो इनको याद भी करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना गवर्नमेंट एजेंडा तक नहीं इनको दिया, जो मेरे लिए एक ऐतराज का विषय था। मैंने उस वक्त भी भाजपा से मैंने कहा था कि भैया आप एक ऐसी सरकार का हिस्सा क्यों बनने जा रहे हैं जो सरकार अपना एजेंडा ही आपका एजेंडा अपने गवर्नमेंट एजेंडे में लागू नहीं कर रही है। भैया 7 निश्चय एनडीए का तो एजेंडा नहीं था ना, वो महागठबंधन की सरकार में बना था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ थे। तो भाई जिस सरकार बदली पर एजेंडा तो नहीं बदला ना, वही एजेंडे पे काम हो रहा था जो लालू जी के वक्त महागठबंधन में हो रहा था, वही 2020 के बाद एनडीए के साथ होने लगा। भाजपा ने तो अपना एजेंडा भी नहीं दिया। तीसरे नंबर की पार्टी के नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। कौन सी ऐसी बात थी जो कि मुख्यमंत्री जी ने कही हो और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मानी हो? आज ये बहाना तलाश रहे हैं, कभी चिराग पासवान को बहाना बनाते हैं, कभी बोलते हैं भैया भाजपा ने हमको अपमानित करने का काम किया। तमाम नीतियों से समझौता भारतीय जनता पार्टी करती रही, जिसका मुझे ऐतराज रहा है। सीए एनआरसी, हमारे गृह मंत्री जी देश भर। You just heard the man who had just 2 years ago said that I am Modi ji ka Hanuman, now addressing a press conference there. Meanwhile, we've got more developments coming in. It almost looks like the script that has been written today for the power tussle in Bihar is playing out via tweets that are being put out by the RJD as well as the daughters of Lalu Prasad Yadav. In the latest tweet coming from the official handle of RJD, now they say लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का नारा है। बिहार में ये जन समर्थन जन भावना का इशारा है, बदलाव बिहार में बदलाव का इशारा है। There you see Tejasvi Yadav, the party symbol, lantern behind him and massive people's support. Earlier in the day, Lalu Yadav's daughters had also put out tweets where they almost kind of became the harbingers of what is going to transpire for the party as well as their leader Tejasvi Yadav. My colleague joins me from the ground, Aishwarya. What more do we know about what really is Tejasvi Yadav wrestling for now when it comes to posts in the new alliance? Well, let me show you the visuals first of Rabri Devi's residence, where all the action is unfolding, and you know, as you can see in these visuals, you know, large number of Karyakartas from RJD, Congress and left parties have gathered over here, and they are just waiting for the MLAs to come out, as the governor has given time to Rabri, that the governor has given time, I beg your pardon, to Nitish Kumar for 4 p.m. and this is certainly the time where show of strength will be showcased as far as RJD, JDU alliance is concerned. Tejasvi Yadav will be marching down to Governor's House, Raj Bhavan, and there you know, a letter of support will be handed over. Certainly, as you asked, the terms are now being decided by RJD, Tejasvi Yadav in front of Nitish Kumar, as you know, a lot of things are at stake, as RJD remains to be the single largest party in the newly formed government, and they wanted certainly, and there you can see first Tej Pratap Yadav again coming out and showing the victory sign to the Karyakartas over here at Rabri Devi's residence. There you can see Tej Pratap Yadav, who welcomed personally all the Congress left parties and the MLAs from the RJD since at around 10:30 a.m. when the meeting began. There are few of the Karyakartas joining with me as well. In fact, the Congress Karyakartas with me. Sir, what sort of arrangement are you looking at in this newly formed government where NDA, JDU and now Congress is also getting you know, giving support to this government? See, first of all, I would like to congratulate the entire Bihar citizen that we are now going to move to the development on the road, because since 2020 the development of the Bihar has been totally derailed. Now the Chief Minister Nitish Kumar has taken some decision with respect to the Bihar development, and we from the Mahagathbandhan welcoming him, and for the common minimum agenda, the only agenda will be... hearing is that the Congress is getting the 4 ministerial posts from the quota
and Nitish Kumar, when asked, he proposed that one deputy chief minister should be from Congress. Certainly Tejasvi Yadav opposed it and he rejected this proposal. See, it hardly matters now. It is the matter of the development. It is the matter of the just ignoring the Tanasahi, what the people of Bihar and India is suffering. We are just here to derail the process. What BJP has done with the Bihari and Bihari people, they have just demolished the dream of Indian youth by imposing the Agnipath Yojana. So only agenda is just to be strong, be a Mahagathbandhan supporter and make our country very strong and give the message democracy live, and there is a democracy and we will love that and will serve according as per the constitution. And I promise you this government will deliver as only and only development. Take about the jobs, talk about the infrastructure. Development will be the key agenda as far as this new government is concerned. There you can see more visuals coming in from Rabri Devi's residence. This is just outside now. RJD workers celebrating. They are on the roof of this car and with the RJD flags in their hands, they are certainly celebrating. क्या कहेंगे आप लोग? लालू भगवान की क्या कहेंगे आप लोग? अब फाइनली आप लोगों की सरकार बन रही है, कितने खुश हैं? और जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, आप उन्हीं के साथ सरकार बना रहे हैं। देखिए, हम लोग ये नहीं जानते राजनीतिक में कुछ नहीं कहा जा सकता है। सब बीजेपी पिछले दरवाजे से घुसी थी और पिछले दरवाजे उसको बाहर कर दिया गया। अच्छा, तेजस्वी यादव जो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता है तो आप लोग मानेंगे इस डिसीजन? हम लोग हर चीज मानने को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो हम लोग के भगवान है, वो जो फैसला लेंगे हम लोग उनके साथ हैं। लालू राबड़ी जी heard from the workers over here of the RJD and they are certainly celebrating this as far as the confirmation has come out that just a few minutes from now the MLAs from RJD, Congress and the left parties will come out of the residence of Rabri Devi and they will be heading towards the residence of Chief Minister Nitish Kumar, and there will be a show of strength, a march to the governor's house, and they will be certainly giving that letter of support. But here you can see these visuals clearly showcasing that how happy the Karyakartas of RJD are, and if I can tell my camera person to also pan in and show the entire view of what's happening in and around the area. There are several other Karyakartas. We will go and speak to them on how happy they are with the kind of news that is coming in as far as the development of Bihar politics is concerned, and how much happy they are. Certainly आप बताइए यहाँ पर कितने खुश हैं आप यहाँ पर? और खुश है कि बता नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इस दिन का इंतजार हम लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। आज वो दिन आ गया। अच्छा, जिस व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ी उसी के साथ सरकार बना रहे हैं? नहीं, जिस व्यक्ति के साथ हमारी लड़ाई तो हमेशा से बीजेपी के साथ रही है। हाँ, JDU नीतीश कुमार के खिलाफ भी तो आपने चुनाव लड़े थे ना? कभी नहीं, हम लोग हमेशा गठबंधन में रहे। आज फिर से गठबंधन में आते रहे हैं हम लोग। अच्छा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो चलेगा ये डिसीजन मानेंगे? और नीतीश जी भी कई बार ये बोल चुके, अब बीच में वो राजद के साथ गए भी, उसके बाद फिर छोड़ करके आए, अब फिर वापस जा रहे हैं राजद के साथ। ये किस तरह से वो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे ये हमारे समझ में नहीं आती है बात। ये ऐसे पार्टी के साथ जाना जिसको कि इन्होंने कई बार कहा कि भ्रष्टाचार का पर्याय है, ये जिसको कई बार इन्होंने कहा कि ये साहब बिहार को डुबा दिया, ये इस पार्टी ने पुनः पहले उस पार्टी में गए, उसको छोड़ करके आए हम लोग, तो फिर जा रहे हैं वापस। ये किस प्रकार से ये जस्टिफाई करेंगे, ये बहुत विस्मय की बात है। और इसमें तो मैं सिद्धांत कहीं देखता ही नहीं हूँ, ये सिर्फ मैं देखता हूँ सत्ता की राजनीति ही मैं देख रहा हूँ। इसमें बिहार का भलाई हो ये मैं नहीं देख रहा। लेकिन जिस तरह से नए गठबंधन, नए स्वरूप की बात हो रही है, JDU साफ साफ कह रहे हैं कि नए गठबंधन में कैसे हम देखेंगे?
ये तो देखिए उनके मन में क्या है ये भापना कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये उसमें आरजेडी तो सीनियर पार्टनर रहेगा, कितने दिनों तक इनको मुख्यमंत्री बना करके रहेगा? सीनियर पार्टनर रहते हुए कितने दिन तक तेजस्वी डिप्टी बने रहेंगे, ये भी सवाल है। और सवाल यही है कि फिर क्या बिहार को पुनः वही अंधकारमय युग देखना होगा? ये भी सवाल जनता के मन में रहेगा ना। ये देखिए, ये बिहार के लिए राजनीति नहीं हो रही है, बिहार के विकास के लिए राजनीति नहीं हो रही है, ये सत्ता के लिए राजनीति हो रही है। तो इस सिद्धांत का कहीं पर इसमें मतलब रह ही नहीं गया, शर्म आनी चाहिए हमको। अब आगे बिहार में बीजेपी क्या करेगी? हम लोग को तो लगता है कि हम लोग को जनता के पास जाना चाहिए, और यह सही है कि इधर जनता को हम लोग पुनः, हमको लगता है कि सीधे अकेले हम लोग को जनता के पास जाएं और हम लोग तैयारी करें कि साहब अगली बार जब चुनाव आवे तो हम एक विकल्प दें, सशक्त विकल्प दें। हम अकेले विकल्प दे सकते हैं, इसमें हमको कहीं कोई डाउट नहीं। और हम लोग जो विकल्प देंगे वो विकल्प देंगे कि ईमानदार सरकार का, एक मजबूत सरकार का। After Chirag Paswan, now the BJP is saying we want fresh elections. My colleague Aishwarya as well as Aditya Vaibhav joining me. 15 minutes left, Aditya Vaibhav, for that meeting between RJD, JDU and the governor of Bihar to take place. But जैसा कि आर के सिंह कह रहे थे, सत्ता और सिद्धांतों की जहां तक बात है, तो अभी तो यही लग रहा है कि सत्ता ही सिद्धांत है। Right, we'll try and get in touch with the reporters, but like I was saying, Union Minister once again calling for fresh polls. Entire locality is concerned, the entire location is actually filled. गलत था। Right, we'll fix that audio connection with Aditya in a bit and go back to him. But Aishwarya, coming back to you, like I said, when BJP is calling for fresh elections, a demand that has also been backed by Chirag Paswan, who was just conducting a press conference and talking about how Nitish Kumar has acted over the course of past few days. What are you gathering is happening at Rabri Devi's residence? Has Tejasvi Yadav also left to join Nitish Kumar? Well, series of information that is pouring in as far as the JDU camp is concerned. Remember, in this very crucial meeting where 25 MLAs suggested Nitish Kumar to come out of the NDA, and these MLAs also stated that BJP used JDU for the Lok Sabha polls, and therefore the reason perhaps JDU should come out. On the front of RJD, what we are waiting is that all the MLAs who are still inside the residence of Rabri Devi's residence here, they will certainly come out and will be going directly towards the Chief Minister's house, and there the letter of support that is now being signed by the Congress left and the RJD MLAs will be handed over to Chief Minister. It is just 15 minutes which is left. 4 PM was the time which was granted by the governor to Nitish Kumar to meet him, but certainly here you can see in these visuals the picture of Lalu Prasad Yadav photo frames is being taken out here by the RJD Karyakartas. They seems to be very happy however, Aishwarya, the action is going to shift to the governor's house. Now, Aditya Vaibhav, what can you tell us? So what is going to happen once Nitish Kumar reaches inside? Aditya?
Right. There could be a network issue outside there given the number of people who would be gathered outside. All eyes are currently on Raj Bhavan. What is going to be Nitish Kumar's next plan of action? Is he going to submit the letters of support? Are there going to be sackings when it comes to the BJP ministers, the portfolios they hold in the government right now? Aishwarya, if I could bring it back to you, have you heard anything on those lines? We heard of the tussle that is going on between Tejasvi Yadav and Nitish Kumar when it comes to the portfolios that the party wants, which eventually was also denied by sources that everything is all is well now. Oh, well, that's right. The terms are now being set by the RJD, and there you can see in the visuals again Tej Pratap Yadav again coming out of the residence of Rabri Devi. क्या बोल रहे हो आप? मैं जब sentence going inside, he waved to the karyakartas of RJD who are outside, Rabri Devi's residence, eagerly waiting for the MLAs to come out. But as you were mentioning, yes, the Congress, the inside sources within this meeting, which is currently being held at Rabri Devi's residence, they have, the sources are revealing that it is the Congress who will be given 4 ministerial posts, and there was also a demand by Nitish Kumar to give 1 deputy CM post to Congress quota, but that was denied and that was opposed. There are several RJD कार्यकर्ताज आप यहाँ पर आए हुए हैं. अगर सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाता है तेजस्वी यादव को, तो आप इस डिसीजन से खुश रहेंगे? एक बात बताओ, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं करते. तो इंतजार करेंगे, आप जो भी डिसीजन होगा उसको मानेंगे. बात तो बोल दिया ना, इश्क और प्यार का इंतजार मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, बिल्कुल मिलेगा. You heard from one of the worker of RJD that they should wait for the decision from the top leadership. आप लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? इस पूरी की पूरी राजनीतिक सरगर्मी चल रही है. अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाता है तब भी संतुष्ट रहेंगे आप लोग? तौर पर भी संतुष्ट हैं. काहे कि एनडीए के सरकार से लोग तबाह हो गया था, गरीब से लेके बेरोजगार, नौजुवक, हर चीज में तबाही लोग देख रहा है. गरीब बुढ़वा का भी हर जीएसटी हर चीज पर लगा दिया, उससे तबाह है लोग. एनडीए के सरकार से तबाह है, इसलिए तेजस्वी जी के और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता का आस्था है, विश्वास है. आप क्या कहेंगे इस नई सरकार का गठबंधन जो होने वाला है, महागठबंधन? बढ़िया जोड़ी चलेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. युवा का लिए बहुत सरकार चल पाएगी, बहुत बढ़िया. So there you heard from lot of the कार्यकर्ताज who are certainly very happy. सर, आप लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, कौन सी पार्टी से हैं? और हम लोग आरजेडी से ही हैं. तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते महागठबंधन की अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाता है तो इस डिसीजन से खुश रहेंगे? नहीं, इस पर क्या कहना है, ये तो संगठन के बात न है. आरजेडी और जेडीयू के साथ न है, इस पर तो नेता ही तय करेंगे. अच्छा, जिस पार्टी के खिलाफ आप लोगों ने चुनाव लड़ा उसी पार्टी के साथ अब आप महागठबंधन दोबारा करने जा रहे हैं. खूब सारे अटैक किए थे, खूब सारी बातें कही थी नीतीश कुमार के खिलाफ, अब उन्हीं के साथ जरूरी न है, लेकिन देश को बचाने, राज बचाने के लिए तो गठबंधन करना ही न पड़ेगा. देश के लिए गठबंधन करना पड़ेगा, ये कहना है आपको आपका? मेन भाजपा को हटाना है. देश में जो भाजपा जिस तरह से महंगाई, जिस तरह से पूरा विपक्ष पर सीबीआई ईडी जिस तरह से हमला कर रहा है, उसी के खिलाफ में पूरे भारत में एक विपक्ष ने एकता बनाकर नीतीश कुमार जी से गठबंधन इसलिए हुआ है कि हम लोग एक होकर बिहार से जवाब दे, बिहार से ही खदेड़ेंगे भाजपा को, तभी जाके भागेगा देश से. इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में गठबंधन चलेगा. कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पर्सनैलिटी प्राइम मिनिस्टर लायक है, उनको देश संभालना चाहिए. इस पर क्या सोचते हैं? क्योंकि सिर्फ अगर वो देश संभालने चले गए तो फिर बिहार में तो रहेंगे नहीं, वो तो दिल्ली चले जाएंगे. अभी तो देश ही संभालेंगे नीतीश कुमार, अगला पीएम नीतीश कुमार ही होंगे. लेकिन आप तो चीफ मिनिस्टर बना रहे हो उनको. अरे चीफ मिनिस्टर के बाद बनेंगे, 25 के बाद लोकसभा आएगा, देखिएगा वही उम्मीदवार रहेंगे विपक्ष के. टैलेंट तो है उनके अंदर, टैलेंट है इनके अंदर. So that is what the RJD leaders are saying. Aishwarya, there are some very interesting banners that I can see outside Rabri Devi's residence. Can you just show us some of those banners that have come up?
Okay, before we go to Aishwarya, we are getting visuals of Nitish Kumar from outside the Raj Bhavan. Nitish Kumar is supposed to visit the governor at 4 p.m. and from what we were gathering from our reporters on the ground, Tejasvi Yadav was supposed to accompany him in what was going to be a show of strength as Nitish Kumar there addressing the media outside the governor's house. From what we are getting to learn is that he has resigned. So this alliance with the BJP in Bihar has ended yet again. We are also getting to know that he has submitted letters of support from 160 MLAs that are going to be rallying behind him as he keeps charge of the state. It is now official. The breakup between the JDU and the BJP has happened. RJD and Congress are going to be a part of Nitish Kumar's new government. Left has said that they are going to be extending support from outside. BJP, who has been very carefully watching from the sidelines and keeping mum for most part of this drama officially, we saw 3 leaders coming out and speaking. They also have a crucial meeting that is going to take place at 5 p.m. All the MLAs of the BJP have been asked to converge in Patna. Leaders from Delhi as well, Shah Nawaz Hussain, Giriraj Singh, have also been flown down to Bihar. They are going to strategize as to what is going to be their plan of action from now on, now that they have been dumped by Nitish Kumar in favor of the RJD and other allies. All action happening at Raj Bhavan right now. Nitish Kumar has submitted his resignation after days of dilly-dallying, of conjectures, of a lot of buzz around whether or not the ties were on the brink. Could there be something that could have salvaged this alliance? Now, finally, it is official. It is over yet again for the Mahagathbandhan between JDU and BJP in Bihar. Now, the latest information that is coming in is that the letters of support that have been submitted includes signed letters from 160 MLAs. Aishwarya, what are you gathering from outside Rabri's residence? These are the visuals from Rabri Devi's residence, where what we were expecting earlier is that there will be a show of strength. Tejasvi Yadav along with RJD MLAs and the Congress and left MLAs will be marching with Nitish Kumar to Raj Bhavan, but certainly that did not happen. Nitish Kumar has tendered his resignation as the Chief Minister of Bihar officially. NDA is no more in the state of Bihar, and Nitish Kumar has quit the BJP. That certainly means that now the letter of support which is signed by the RJD, the Congress and the left parties will be handed over to Nitish Kumar, and that will be also submitted to the governor. Remember, the information that we are also picking up from Raj Bhavan is that from tomorrow onwards, governor is going on a leave for 4 days. So whatever will happen will unfold today only as far as Bihar politics is concerned. The letter of support has to be handed over to the governor, and therefore the reason perhaps the Karyakartas over here are well confident of being involved in the फोन हटाओ ना यार,
Let's start straight to Aishwarya. Pictures on our screen. Chief Minister Nitish Kumar going to the Raj Bhavan. He has submitted his resignation. Tejasvi and Nitish Kumar will now be marching towards the Raj Bhavan. This will be a Padyatra, we are being told. Aishwarya, the interesting bit of news coming our way is that Nitish proposed that there be a deputy chief minister from the Congress's quota, an idea that was dismissed by Tejasvi. Well, that's right. In fact, the terms are now being set by Tejasvi Yadav as RJD remains the single largest party. As I show these visuals from Rabri Devi's residence, we are still waiting for Tejasvi Yadav to come out of the residence of Rabri Devi and to proceed towards the chief minister's house. But as you were mentioning, yes, of course, there were terms that is being set by Tejasvi Yadav. A phone call was dialed by Nitish Kumar to Tejasvi Yadav, in which Tejasvi Yadav demanded that there should be speaker post that should be given to the RJD, Home Ministry should be given to the RJD. But certainly when Nitish Kumar asked that there should be one deputy chief minister from the Congress's quota as well, that was opposed, that was denied by Tejasvi Yadav. So that clearly means that there are final terms which is being decided between the JDU and the RJD alliance. We have been also told that there you can see again the visuals of more leaders coming out from Rabri Devi's residence. But as we were mentioning, that we are also getting to hear from the residents of Rabri Devi is that four of the ministers will be ministers will be from the Congress's quota. One would be education and other three will be also key ministerial position. Madan Mohan Jha, Ajit Sharma and other two will be also in the upcoming Nitish's cabinet as far as Congress is concerned. But the BJP on the other side is also holding its vote at Tarkeshwar Yadav's residence. They are in a huddle of meeting. BJP core group meeting on the other side is also currently will also be taking place at BJP state headquarters in Patna, and they were waiting for first move to be decided. But what information that we are getting currently is that Bihar Chief Minister Nitish Kumar has quit NDA. NDA is no more in the state of Bihar. A few Karyakartas broken first on times now. Aishwarya, why don't you speak to people who have gathered outside Rabri Devi's residence and ask them who will be more powerful? Will it be Tejasvi who will call the shots or Nitish Kumar? Well, there are Karyakartas holding RJD's flag in their hand. RJD सबसे बड़ी पार्टी होते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है. किसके हाथ में सरकार रहने वाली है, इस डिसीजन से सहमत रहेंगे आप कि तेजस्वी यादव को? हम तेजस्वी जी के डिसीजन से खुश हैं. तेजस्वी जी जो भी स्टैंड लेंगे हम उनके साथ हैं. पूरा कार्यकर्ता उनके साथ है. All right, let's listen to what Nitish Kumar said. This is Nitish Kumar's first reaction. एनडीए छोड़ देना चाहिए. जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सबने तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया. बीजेपी से क्या परेशानी? हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए. जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सबने तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया. So not answering the question about the reason, Aishwarya, Nitish says we've dumped the NDA, we're not part of NDA anymore, should have left it earlier. Well, there you can see Nitish Kumar in the visuals coming at Tejasvi Yadav's residence. To the Karyakartas, getting to Tejasvi Yadav's residence, and there you can see clearly in these exclusive visuals Nitish Kumar entering Rabri Devi's residence, and there he will meet Tej Pratap Yadav.
have certainly the RJD workers who are already here inside the residence of Rabri Devi, and so there comes the final picture after handing over the resignation letter to governor. He has straight headed towards Rabri Devi's residence, where already the MLAs of Congress, RJD and left parties are, and here only now the letter of support will be submitted to Nitish Kumar, where now from Rabri Devi's residence, as things are unfolding at a fastest pace from here, the show of strength, the march towards the governor house will go on, and these are the live pictures on Times Now. First exclusive, Nitish Kumar has entered Rabri Devi's residence. Tejasvi Yadav was eagerly waiting. Tej Pratap Yadav has come out and welcomed Nitish Kumar as he just entered Rabri Devi's residence. So after tendering resignation to governor, certainly from here on the letter of support which was signed by the Congress, RJD and the MLAs of the left parties, the letter of support will be handed over to Nitish Kumar, and what we are expecting is that with the letter of support, the show of strength will be done. The march will begin from the residence of Rabri Devi, and from here they will be heading straight towards the governor's house to claim the new Mahagathbandhan government in the state of Bihar. Yes, of course, there were talks between Tejasvi Yadav and also and Nitish Kumar on what would be the new arrangement like, who will be given the ministerial post, and whether there will be one deputy chief minister from RJD or whether there will be two. Nitish Kumar proposed the Congress, the Congress deputy chief minister from the court, and certainly this is something what we are witnessing. We showed you the first visuals of Nitish Kumar entering Rabri Devi's residence, and now certainly they are heading towards the Raj Bhavan. Hello? All right, so strategy meeting is underway. Will begin in some time from now. Nitish Kumar, who has just quit as chief minister, has reached Tejasvi's residence, and he will be brainstorming on what to do next. Now, the inside scoop on Times Now, that indicates that from here on, both the leaders, Nitish Kumar and Tejasvi, along with the supporters of the RJD and JDU, will be marching towards the Raj Bhavan with a letter of support with over 160 signatures on it. Nitish Kumar will once again stake claim to form the government, and if that happens, it's only a formality now. He will take oath the 8th time as the chief minister. Let's once again play out what Nitish Kumar said. In fact, more breaking inputs coming in. Akhilesh Yadav has reacted to what's happening in Bihar. He says it's great for opposition unity. More parties should dump NDA. सर, बिहार में बीजेपी को बाहर करने की कवायद चल रही है सरकार से, आप क्या समझते हैं कि संभव हो पाएगा? ये अच्छी शुरुआत है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा है कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। सर, नीतीश कुमार जी के लिए क्या कहिएगा? जो स्टैंड उन्होंने लिया है, पहले भी एक बार वो पलट के आए थे, इस बार जब वो ऐसा कर रहे हैं उस पर क्या कीजिएगा? बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं, उनके बारे में क्या कहना, वो बिहार और बिहार के गणित को बेहतर समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को वो छोड़ देंगे। सीएम पेश नीतीश कुमार एंड तेजस्वी यादव सपा किसको सपोर्ट करेंगे? ये उनके अपने फैसले हैं। गठबंधन में क्या तय होता है, क्योंकि गठबंधन जब बनता है तो बहुत सी चीज़ों पर मिलजुल करके फैसला लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि मिलजुल करके कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे हमेशा भारतीय जनता पार्टी दूर रहेगी।
अयोध्या मुद्दे में आप अपने आप को मजबूत करने के लिए मुहिम चला रहे हैं और वहीं ओम प्रकाश राजभर तमाम आरोप आप पर लगा रहे हैं। देखिए उन नेताओं के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, उन नेताओं के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, श्रीकांत त्यागी की आज गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद कहा गया बीजेपी सरकार फर्स्ट रिएक्शन वेलकमिंग द डिसीजन ऑफ नीतीश कुमार टू स्नैप टाइज विद द एनडीए। लेट्स लिसन टू। अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। आप बताइए नहीं नीतीश जी क्या दिक्कत हुई? Not really revealing the reason, Aishwarya. There is also a new poster at the JDU office and that says Nitish sabke hain. Has only one photo of Nitish Kumar and 3 words, Nitish sabke hain. Well, that's right. Nitish Sabke has the poster that has been placed at the JDU office, and what the top aide of Nitish Kumar, Upendra Kushwaha, is saying since morning that Nitish तुम आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है, और and certainly he also commented in this morning as well that he had the personality of the Prime Minister's post, hinting that Nitish Kumar has national ambition as far as the politics is concerned, and therefore the reason what terms have been laid down by the RJD is that Nitish Kumar would be the chief minister till 2023, and later he will move out of Bihar and could go further to Delhi, and certainly will be looking at the major political things that could unfold at a national level. But certainly these are the live pictures that we are bringing to you on Times Now. This is Rabri Devi's residence where Nitish Kumar has entered a short while back, and what we are hearing is that now a letter of support which is signed by the MLAs of Congress, RJD and the left parties will be handed over to Nitish Kumar. The cavalcade of Nitish Kumar is already here. The police and senior police officials are taking care of the security situation, but several karyakartas over here of the RJD pretty happy of what is unfolding in the state of Bihar is concerned. आप लोग से जानना चाहेंगे ये जो डिसीजन लिया गया है RJD जो सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उन्हीं के नेता को सीएम नहीं बनाया जाता है, इस डिसीजन से खुश रहेंगे आप? जी खुश रहेंगे, बल्कि उन्हें सिर्फ गृह मंत्रालय दे दिया जाए। अगर गृह मंत्रालय दे दिया जाए तो इससे मतलब कि जो तेजस्वी जी पर आरोप प्रत्यारोप, वो मतलब कि 6 महीना में आपको दिख जाएगा कि ये क्या करने वाले हैं। नहीं तो कंट्रोल किसका रहेगा इस नई सरकार के ऊपर? नीतीश कुमार का ही कंट्रोल रहेगा या तेजस्वी यादव संभालेंगे? दोनों संभालेंगे, दोनों का रहेंगे, दोनों सहयोग रहेंगे, चाचा भतीजा दोनों का रहेगा। चाचा भतीजे की साथ में सरकार रहेगी, ये कहना है आपका। देयर आर फ्यू मोर वर्कर्स हु हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। आप क्या कहना चाहेंगे इस सरकार जो बन रही है इसमें किसका कंट्रोल रहेगा, तेजस्वी यादव का या नीतीश कुमार का? सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। देखिए बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये सभी पार्टी के जो शीर्ष आला कमान है वो बैठ के तय करेंगे। पार्टी की कमान माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी और महागठबंधन कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, जितने भी पार्टी हैं उस सभी के लोगों के साथ रहेगा और बेहतर बिहार बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी, महागठबंधन के लोग दृढ़ संकल्पित है कि RJD supporters upbeat there outside Rabri Devi's residence, inside obviously meeting between Nitish, Tejaswi taking place. Jay Narayan Pandey, news editor of the Times of India, joining us from Patna. Mr. Pandey, how should this be read? Hello? कैसे देखते हैं आप जो बिहार में जो ये राजनीतिक नया समीकरण है? नया तो नहीं है, पहले भी हुआ है, उसके बाद नीतीश एनडीए चलेगा और आज उन्होंने एनडीए छोड़ दिया फिर से। It was a foregone conclusion since 2020 results that many in the JDU believe from the results that BJP played the Chirag game and they lost substantial number of seats because of that. So this dissension was from day one. Though Nitish accepted to become the chief minister,
on the insistence of BJP top leadership. But there was a feeling in JDU that BJP will try to finish them off. बने रहिए पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं। नीतीश कुमार से जब सीधा सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब तो नहीं दिया। देखिए ये कहा उन्होंने। लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग, भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस सर क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। जयनारायण पांडे जी, आपने सुना नीतीश रीजन नहीं बता रहे, कह रहे एमएलएज और एमपीज ने फैसला लिया है और मैंने बस उसी फैसले पे अमल किया है। क्या लगता है आपको अब जो नई सरकार बनेगी उसमें ज्यादा पावरफुल कौन होंगे? मनीषा प्रियम भी जुड़ रही है हमारे साथ। RJD will be stronger. Nitish should have explained now why this meeting was called, and naturally this was on the agenda, whether they should remain in NDA or not. So obviously if the leader sets the agenda, then the followers and his party men will support him. They knew that what he wanted. Okay, let me get an answer from Manisha Priyam. Manisha Priyam, Nitish may become the chief minister once again, but can he salvage the credibility that he has lost? So I don't know what the credibility issue right now is. The fact is that there had been difficulties with the coalition. The BJP definitely on the ground feels that it can go it alone. It's a party that has nearly double the number of, just about number of MLAs that the JDU has. The BJP cadres have been very, very assertive. On the part of the JDU, since its poor performance in the 2020 elections, the feeling had been that the party had been done in JDU had been by its alliance partner, and in many seats it had lost because Chirag Paswan had cut into the roots of the JDU. So there were all these ill feelings, but on top of that, the coming in of the RCP issue, that's become like a personal grudge for the chief minister, and there is a feeling that the RCP executive editor Padmaja Joshi also joins the broadcast with a special guest. Padmaja. Very much, Pranesh. We'll just go back to the live inputs coming in right now. But joining us right now on the broadcast is Pashupati Paras, Union Minister, somebody who knows the Bihar politics very, very closely, has himself been a part of it. Pashupati Paras जी, आज कहा जा रहा है राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेन धारी। राज तिलक की तैयारी हो गई है बिहार में? हाँ, कुछ और पशुपति पारस जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आपको लगता है कि अब ये सरकार लंबी चलेगी? नीतीश जी कह रहे हैं कि सैद्धांतिक तौर पर बीजेपी को छोड़ दिया, अब चाचा भतीजा की सरकार चलेगी पूरे टर्म तक। आप एक बात जान लीजिए, देश की पुकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, देश की पुकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वमान्य नेता हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और देश और विदेश में आज़ादी के बाद पहला ऐसा व्यक्ति मिला है जो 1 अरब 35 करोड़ आबादी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हो, जिनके कार्यकलाप से पूरा देश खुश है। बिहार एक स्टेट है, केंद्र और बिहार की सरकार जब थी, एक सरकार थी, एक गठबंधन की सरकार थी, तो बिहार में काफ़ी विकास हुआ। देखिए, काफ़ी मेडिकल कॉलेज खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, काफ़ी बड़ा NH का निर्माण हुआ, गंगा नदी पर पुल बना, कोसी नदी पर पुल बना, काफ़ी संख्या में PMCH का निर्माण हुआ,
इस ढंग से बिहार का काफ़ी विकास हुआ था, जिसके चलते नीतीश कुमार जी का नाम भी बिहार में हुआ था। लेकिन आज वो सब धरा का धरा रह गया और नीतीश कुमार जी का जो ये डिसीजन है, मेरे हिसाब से ये डिसीजन बिहार के हित के लिए नहीं है। तो अगर इतना विकास हुआ है पशुपति, 1 घंटा 2 घंटा पहले, पशुपति जी अगर इतना विकास हुआ है, नीतीश जी इतने नाराज क्यों हैं भाजपा से? नीतीश जी इतने नाराज क्यों हैं? हमारी पार्टी के संसदीय दल का फैसला हुआ कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट थे, आज भी हैं और हम भविष्य में नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे। ये हमारी पार्टी का फैसला है और बिहार के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। बिहार का विकास अब अवरुद्ध हो जाएगा। तो आपको क्यों लगता है नीतीश जी की नाराजगी की वजह क्या है? अब नीतीश जी का अलग होने का क्या वजह है तो नीतीश कुमार बता सकते हैं। मुझको तो कोई वजह नज़र नहीं आ रहा है। मुझको तो लग रहा है कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी थी, 77-78 विधायक रहने के बावजूद भी उन्होंने नीतीश कुमार जी को 43 विधायक पर बिहार का कमान दिया था, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। अब इससे बड़ा सम्मान तो और कुछ नहीं मिल सकता है। लेकिन अब नीतीश जी क्यों इस ढंग से काम किए वो तो वही बताएंगे। क्योंकि आज जब विधायक दल की बैठक हुई जदयू की, ऐसा बताया जा रहा है कि वहां ज्यादातर विधायकों ने कहा कि हमारा इस्तेमाल किया भाजपा ने और फिर सड़क किनारे फेंक दिया, इस्तेमाल करके हमें छोड़ दिया। आप क्या कहेंगे? अरे जब बहाना, इसे बहानाबाजी ने बहाना न है। जब हमको अलग होना है, किसी दल से अलग होना है तो खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। वो देहाती कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। तो यही बात है। अब उनको चूंकि भाजपा से अलग होना था इसलिए अलग हो गए। आज ये भी कहा जो जदयू के नेता हैं कि ना सिर्फ हम अलग हो रहे हैं, जितने भी उनके घटक दल हैं, जितने भी उनके अलायंस पार्टनर हैं, सबको छोड़ देना चाहिए। देखिए एक एक करके सब अलग हो गए। अकाली दल अलग हो गया, शिवसेना अलग हो गई, अब जदयू भी अलग हो गया। वो कह रहे हैं आप जैसी पार्टी हैं, आपको भी छोड़ देना चाहिए, नहीं तो खत्म कर देगी भाजपा आपको। नहीं, हमारी पार्टी और हम एकजुट हैं। हमारी पार्टी, देखिए हमारी पार्टी का नीति और सिद्धांत एक अलग है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में ये सरकार बनी थी और ये पार्टी का निर्माण हुआ था 2000 ईस्वी में, और उन्होंने 2014 में एनडीए गठबंधन का साथ दिया। और उनका ये स्पष्ट था कि जब तक हम पार्टी में हैं, जब तक पार्टी हमारी रहेगी, हम एनडीए गठबंधन और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आस्था व्यक्त करते हैं और हमारी पार्टी रहेगी। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। आज कुशवाहा जी ने भी बोला कि आज बिहार, कल भारत की तैयारी करेंगे नीतीश बाबू, भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं वो। अरे कुशवाहा जी, तो कुशवाहा जी कब क्या बोलते हैं आपको पता नहीं है? 2 वर्ष पहले कुशवाहा जी क्या बोलते थे, आज क्या बोल रहे हैं और 2 वर्ष बाद क्या बोल रहे हैं। तो कुशवाहा जी क्या बोलते हैं उस पर मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। मैं जो बोल रहा हूँ यही बात आप जानिए कि हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन के हम पार्ट थे और आज भी हैं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आस्था व्यक्त करते हैं। पर जो एनडीए गठबंधन के खिलाफ ताकतें हैं उनको आज काफी मजबूती मिली है। एक और राज्य में सरकार बन गई, उनकी बड़े राज्य में सरकार बनी है। आवाजें नहीं आ रहा था, क्या सुन रहे? एक बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी सरकार बन गई। आपको लगता है कि जो गैर एनडीए गठबंधन है उनको मजबूती मिली है आज की सरकार बनने से? कहां? देश में एंटी एनडीए। देखिए कि जो गठबंधन टूटा है, मेरे हिसाब ये जो गठबंधन टूटा है मेरे हिसाब से बिहार के विकास के लिए बाधक है। जी पशुपति पारस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेट्स कट अक्रॉस लाइव इन फैक्ट नाउ टू नीतीश कुमार एग्जिटिंग
from the house of Tejaswi Yadav. नीतीश कुमार की तस्वीर यहाँ से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार यहाँ से निकले हैं राबड़ी आवास से और पैदल वो आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए उनके साथ कांग्रेस के बिहार प्रभारी आपको दिख रहे हैं, उसके साथ ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर सीधी तस्वीर पैदल नीतीश कुमार 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास है वहां से निकलकर सीधे अपने आवास के अंदर जा रहे हैं। जो उनका पीछे का गेट है उनके आवास का, वहां पर वो जा रहे हैं। तेजस्वी यादव उनके साथ मौजूद है, यानी कि जो नई सरकार के जो तमाम घटक दल हैं उनके जो नेता हैं वो उनके साथ यहाँ पर देखिए सीधी तस्वीर एक्सक्लूसिव टाइम्स ऑन भारत दिखा रहा है अपने दर्शकों को कि नीतीश कुमार अपने सभी सहयोगियों के साथ एक अणेमार्ग जो नीतीश कुमार का आवास है मुख्यमंत्री आवास वहां पर वो पहुंच गए हैं, वहां पर वो अंदर आवास के अंदर वो चले गए हैं। तो ये तस्वीर हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, कई विधायक यहाँ पर हैं। So you can see in these visuals, Nitish Kumar has come out from the residence of Tejaswi Yadav and he is straight heading towards his own residence. Tejaswi Yadav can be seen, and this is a kind of show of strength that we were speaking about. Clearly, the leaders also gathering over here, and they are also getting inside of Nitish Kumar's residence. This is the back gate of नई सरकार के बारे में सर जो बन रही है आप लोगों की आरजेडी के साथ सरकार खेला हो गए, मैंने पहले कहा था खोला हो गया, खेला तो हो गया, लेकिन क्या रहेगा सर अरेंजमेंट कैसा रहेगा सर? अरेंजमेंट कैसा रहेगा? सरकार का अरेंजमेंट कैसा रहेगा सर? Nitish Kumar's residence where he headed towards, he walked down from Tejaswi Yadav's residence along with Tejaswi Yadav, Lalan Singh and top ministers of the previous government, and now he has headed inside. These are the live visuals that we are getting to you on Times Now. Show of strength that we were speaking about as you know the government, the Mahagathbandhan government is concerned. सर किस तरीके का अरेंजमेंट रहने वाला है सर सरकार का? अरे जाने दो भी अभी। So there you can see a lot of leaders from just not the JDU but also from the Congress as far as leaders are concerned, which were at the residence of Tejaswi Yadav, have now entered Nitish Kumar's residence. The letter of support has been prepared. सर बस एक सवाल, निश्चित नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अरेंजमेंट क्या रहेगी, कौन डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि कांग्रेस को भी एक डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की मांग करी है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने कांग्रेस का भी एक डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की मांग करी थी, अभी वो तय नहीं हुआ है। अभी मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा सौंपा है राज्यपाल महोदय को। हम लोगों ने अपना पूरा सपोर्ट लेटर ऑफ सपोर्ट जो होता है सरकार में ज्यादा पद आपको मिलेगा, पावर में कौन रहेगा? इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग बात सामने होगा कि कौन कौन मंत्री बनेंगे, किस पार्टी से किसको मंत्री बनाया जाएगा। तो ये तमाम ऐसी देखिए आप विधायकों को किस तरह से अंदर घुसने में कितनी परेशानी यहाँ पर दिख रही है, किस तरह से भीड़ है यहाँ पर, और वहाँ पर एक एक विधायक अंदर घुसने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये तस्वीर मुख्यमंत्री आवास एक अनेमार्ग की तस्वीर है। ये एक अनेमार्ग का पीछे का ये गेट है जहाँ से तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास से निकल के वो पैदल तेजस्वी यादव और दूसरे नेताओं के साथ अपने एक अनेमार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर पहुंचे हैं। और अब यहां पर बैठकों का दौर होगा, आखिर कैसे फार्मूला हो, क्या कैसे बने, ये तमाम चीजें ये सामने होगा और इसे अब दिखाने की कोशिश होगी। जी So there you can see now as Nitish Kumar has entered as his residence, a lot of leaders from RJD
and JDU have also entered. Celebrations are taking place here outside the RJD and Lalu Prasad Yadav in their hands, and they have been clearly very happy of what has unfolded in the state of Bihar as far as political crisis is concerned. RJD सबसे बड़ी पार्टी है इस नई सरकार में, लेकिन तेजस्वी यादव जो तस्वीरें Reactions and visuals from outside the Chief Minister's residence, where Nitish Kumar has reached along with Tejasvi Yadav, and the supporters who have gathered outside the Chief Minister's residence are celebrating because the Mahagathbandhan is back now. Nitish Kumar is going to take oath as the Chief Minister for the 8th time. Massive developments taking place in Bihar. Nitish Kumar has resigned. He met the governor, handed over his resignation. Now the support of letter will be given to Nitish Kumar by RJD and Congress. But the biggest question is, what is going to be the formula? These are exclusive visuals that we're getting for you from outside the Chief Minister's residence in Patna. Let's in fact try and connect with Aishwarya once again. If you can hear me, Aishwarya, talk to more people, get us more reactions. There's a massive deployment of security personnel as well, trying to manage the crowd that has gathered. Most of these, of course, workers of the JDU, the RJD, who have gathered outside the Chief Minister's residence. Of course, Nitish Kumar now has resigned as the Chief Minister, but soon there'll be government formation. The biggest question is, who is going to be at the helm of affairs? Remember, Lalu Prasad Yadav's family has constantly been tweeting, projecting Tejasvi Yadav at the helm of affairs. In fact, one of the daughters of Lalu Prasad Yadav also posted a picture of Lalu Prasad Yadav, and the caption said Kingmaker. So Lalu Prasad Yadav is being projected as the Kingmaker. We have Jay Narayan Pandey and Manisha Priyam on the broadcast. Let's first go across to Jay Narayan Pandey. अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प बदलाव बिहार में देखने को मिल रहे हैं. The political pundits would say for Nitish Kumar it is nothing new because he keeps on changing his allies, switches from one alliance to another. But this is very, very important given the kind of interactions and the face-offs that we witnessed between Nitish and Tejasvi. आज की तारीख में all is well. Yeah, in politics, there are strange bedfellows always. So it's nothing new in nowadays politics. Every party does. Sir, I will come back to you and let you finish your point. We have some breaking inputs coming in. Meanwhile, the Hindustan Awam Party has also exited NDA. And as far as the Hindustan Awam Party, the Hum Party is concerned, they have 4 seats. They managed to win 4 seats during the Bihar Assembly elections. They have also joined the Grand Alliance now, have quit NDA. That's the latest that we are picking up. Yes, Mr. Pandey, please finish your point, sir. Yeah, because I was saying that it's nothing new. When Nitish lost drastically in 2014 election, he went to Lalu Prasad and contested the 2015 election with him and won comfortably. Then he had problem. He had not the problem of zero tolerance, corruption and all. The problem was that there was a tug of war and the arm twisting by, it is said and believed, by Lalu Prasad and his party. So he was pissed off. And then came a news that some of his friends in BJP told him that RJD is willing to join hands with BJP to topple his government. Then he suddenly called a meeting and went to Raj Bhavan and resigned and formed government with BJP. So you may say that it's a matter of survival because many in the JDU believe that BJP will gradually finish them off and its president Lalan Singh categorically said that there was another Chirag model being prepared against us. So we are now alert. So that day itself, he nailed the coffin and everything was obvious that
Nitish will go with Tejasvi again. He will not remain in NDA. What is your assessment of the formula that everybody is talking about, that everybody wants to know who is going to be the the chief minister? Is it going to be Nitish Kumar? Is there going to be some bargaining given who has how many seats? Yeah, I believe that Nitish will remain the CM. Because if he doesn't remain and if he accepts Tejasvi as the CM, then it is widely feared that his party will split, because many in the party are not willing to go with Tejasvi, because they had contested the last election on this platform against Tejasvi and Lalu. So I don't think that Nitish will accept this formula. Okay, so your assessment is Nitish Kumar will not accept that particular formula. He'll continue to be the chief minister. Stay on with us, Mr. Pandey. I want to take some live updates from our reporters as well. Let's go across to Aditya. Aditya, when is the joint march going to take place towards the Raj Bhavan? Well, exactly. As far as the information transpiring from the sources is that the march is likely to start in some time after the sessions of brainstorming and meetings are over in one Marg, where CM Nitish Kumar has actually taken even leader of opposition, former leader of opposition, because now he's part of the cabinet, his party is now supporting it. We are actually joined by several Lalu supporters and RJD supporters outside the residence of Rabri Devi 10 Circular Road. I would request my cameraman to just pan the camera and show you the magnitude of crowd that is actually waiting outside for the political. As we speak, we are getting the inside pictures now of the meeting that took place between Nitish Kumar and Tejasvi Yadav. In the background, you can also see Rabri Yadav seated behind them. In the picture is Nitish Kumar, Tejasvi Yadav and Mr. Lalan Singh along with Rabri Devi. So this is in fact the face of the new government that will take charge in Bihar. Felicitating each other are these individuals who were once part of the government. Then Nitish Kumar broke up, went to the NDA fold. He's quit NDA once again and he's back in the Mahagathbandhan. These are pictures of the inside meeting taking place. First, of course, they met at Rabri Devi's residence, and now Nitish Kumar along with Tejasvi Yadav discussing the future course of action at the Chief Minister's residence, at Nitish Kumar's residence, with massive gathering of supporters outside. These are first visuals of the meeting taking place right now. A crucial meet underway between Nitish Kumar and Tejasvi Yadav. They are back together, but this is very interesting given the kind of dynamics they shared, the Chacha Bhatija duo as they were famously called, when Nitish Kumar quit the Mahagathbandhan and joined the NDA fold, joined ranks with the BJP. Very, very interesting developments taking place. Back together again, Nitish Kumar and Tejasvi Yadav along with Lalan Singh and Rabri Devi in the frame. Now, we're being told that BJP is addressing a press conference. Let's cut live to it. मीडिया के मित्रों, आप सब लोग जानते हैं बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां, उसी परिस्थितियों पर बात करने के लिए हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, भूमि सुधार राजस्व मंत्री रामसूरत राय जी, विधान परिषद में हमारे उपनेता नवल किशोर यादव जी और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी आप सब लोगों के बीच में है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि आप सीधे अपनी बात मीडिया के सामने रखें। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित माननीय तारकिशोर जी, माननीय मंगल पांडे जी, माननीय नितिन नवीन जी, माननीय नवल किशोर यादव जी, माननीय रामसूरत राय जी, यहाँ उपस्थित माननीय प्रेम रंजन पटेल जी और सभी प्रेस के मित्रों, 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत हम सबों ने चुनाव लड़ा था और जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी माननीय
प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। सवाल कल बात करेंगे। यह वह बेहतर जवाब दे जो कुछ भी हुआ है उसका बेहतर जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। यह सरासर बिहार के जनता और मैंडेट के साथ धोखा है और 2017 की जो परिस्थितियां बनी थी वह खुद वो बताएं कि उस भ्रष्टाचार में क्या अंतर आ गया, उस बातों में क्या अंतर आ गया। यह इस बिहार की जनता के साथ मैंडेट के साथ धोखा है और बिहार की जनता निश्चित तौर पर इसके लिए उनको सबक सिखाएगी। नीतीश कुमार से बात करने की पार्टी को तोड़ने, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी को तोड़ने की साजिश चल रही है। 2017 का उनका बयान देखिए, क्या एक शब्द भी उससे अलग है क्या? All right, so the first reaction there, first press conference of the BJP, not taking any questions but calling this a betrayal. BJP says this is a betrayal. Nitish Kumar has betrayed the people of Bihar and BJP. Let's go across to Aishwarya. Very, very important reactions coming in. In fact, BJP also asking Nitish Kumar, in 2017 you quit the Mahagathbandhan due to the corruption charges. So has everything changed now? Well, that's right. On one side, the BJP is calling it as the betrayal, and on the other, Tejasvi Yadav, by meeting Nitish Kumar, stated that let's forget what happened in 2017 and let's start a new beginning as far as the new formation of government of Mahagathbandhan is concerned. Right now, where I am is the residence of Nitish Kumar, where all the leaders of Mahagathbandhan, including Nitish Kumar, Tejasvi Yadav, and Congress's MLAs have gathered over here. All have marched from Tejasvi Yadav's residence, and from there they walked down to Nitish Kumar's residence here, and lot of कार्यकर्ता here who are Nitish Kumar, Tejasvi Yadav and Congress's MLAs have gathered over there. All have marched from Tejasvi Yadav's residence, and from there they walked down to Nitish Kumar's residence here, and lot of कार्यकर्तास here who are eagerly waiting. सर, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चलेगी सरकार अब मजबूती से सरकार चलेगी। किसके पास कंट्रोल रहने वाला है इस सरकार का? आदरणीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे और मजबूती से सरकार चलेगी। तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो उस पर कोई दुख तो कोई दुख नहीं। हम लोग काफी आज खुश हैं। अच्छा, बहुत खुश है। तेजस्वी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूती से सरकार चलेगी और महंगाई के खिलाफ जो हम लोग आक्रोश निकाले थे, यह लड़ाई केंद्र से चलती रहेगी। केंद्र से भी रहने वाली है। देयर आर फ्यू अदर पीपल ज्वाइनिंग विद अस। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस नई सरकार को? चलेगी ये सरकार पूरे अपना कार्यकाल पूरा करेगी? बहुत अच्छे से चलेगी और हर नौजवान को जो वादा किए तेजस्वी जी वो भी पूरा होंगे। तो आरजेडी का कंट्रोल रहने वाला है इस सरकार पर, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है और जेडीयू फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले। हाँ, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी बनेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे।
Certainly, the workers over here believe that the government will work and will complete its tenure, but the bargaining has already been done between Tejasvi Yadav and Nitish Kumar. The terms have been set by RJD. As we show you these live visuals from Nitish Kumar's residence, where currently they are, and what we are getting to understand from our sources is that from some time from now, Nitish Kumar along with Tejasvi Yadav and Congress leaders will walk towards the governor's house, where they will be submitting the letter of support of more than 155 MLAs to be precise, and this will be with the outside support of CPIM and HAM also, who have exited the NDA, will be giving an outside support to the Mahagathbandhan government. So clearly, as Nitish Kumar had asked for one deputy CM to be from the quota of Congress, which was turned down by Tejasvi Yadav. On the other side, the RJD has clearly asked that there should be speaker post as well as the home ministry that should be given to the RJD. Let's speak to some more कार्यकर्ताज over here. सर, किस तरीके से देख रहे हैं सरकार को? चलने वाली है आपके हिसाब से? क्या पूरा कार्यकाल चलेगी? पूरा 3 साल कार्यकाल चलेगी? किसके पास कंट्रोल रहेगा इस सरकार का? इस बार कंट्रोल तेजस्वी जी के पास रहेगा। तेजस्वी जी के पास रहेगा, लेकिन तेजस्वी मुख्यमंत्री तो नहीं बन रहे हैं। तो गृह मंत्रालय उनके पास रहेगा। उससे खुश हैं आप लोग? हम लोग खुश हैं। सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी आपके नेता को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। महागठबंधन के नेता है, महागठबंधन का सरकार बन रही है, और इसके लिए बिहार की जनता को और देश की जनता को सबको बधाई है। और महागठबंधन का सरकार है और महागठबंधन मजबूती से काम करेंगे। तो ही इज द लीडर ऑफ महागठबंधन। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं इस नई सरकार को? क्या चलने वाली है, पूरा कार्यकाल पूरा करेगी? देखिए, पूरी तरह पूरा करेगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति जो सरकार का है, बीजेपी के मानसिक टॉर्चर से माननीय मुख्यमंत्री जी दुखी हो गए थे। जिसके खिलाफ आप लोगों ने चुनाव लड़े थे, उसी के साथ अब आप सरकार बनाने जा रहे, कैसे चलेगी? नहीं, देखिए, मसला है राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। विवाद खटास तो जीवन का दस्तूर है, चलते ही रहता है, लेकिन विवाद सिर्फ ये कि हमारा राष्ट्र बिहार आगे प्रगतिशील करे और युवाओं को रोजगार मिले। वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस इन फैक्ट ऐश्वर्या कमिंग इन। बाहर सब खुश है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। वी आर प्लेइंग आउट पिक्चर्स ऑफ दैट मीटिंग, द फेस ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, बट ऐश्वर्या, व्हाट आर दीज लीडर्स टेलिंग ईच अदर? लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट्स मूव ऑन। बीजेपी कॉल्स इट धोखा। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? Well, BJP is calling it a betrayal as far as the government formation is concerned. There you can see Shiv Gandhi को on poster, very interesting poster. बिहार का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाओ नीतीश जी, हम बिहार की सूरत बदलेंगे. That's what the poster over here. This is dear बिहार, बिहार का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाओ नीतीश जी, हम बिहार की सूरत बदलेंगे. So that's a very interesting poster coming out here outside Nitish Kumar's residence. Clearly, this shows that what sort of perception the workers have when the government is changing. Of course, the workers are only happy because the Mahagathbandhan is back in action. But yes, there's something happening over there. Okay, go ahead, Aishwarya. Calling is at the betrayal of Nitish Kumar exiting the NDA. The RJD on the other side now giving bouquets and flowers. भाई 2 मिनट इधर आ जाइए आप लोग. हाँ. All right, so important reactions coming in from the workers who've gathered outside the
residence of Nitish Kumar. Meanwhile, we're also playing out pictures of the meeting that took place at Rabri Devi's residence. Nitish Kumar, Tejasvi Yadav in one frame. The Mahagathbandhan is back. At this point of time, Nitish Kumar has confirmed that he has resigned, and in fact the Hindustani Awam Morcha has also quit the NDA and joined hands with the Gathbandhan. We're taking a very quick break on this broadcast, but we'll be back with more updates.
Namaskar, good evening. You're watching Breaking Ground and I'm Swati Joshi. Massive developments taking place in Bihar. We'll get you the latest, but first up are the top 50 developments. It's official, Nitish Kumar calls off alliance with BJP. RJD chief meets governor, JDU chief meets governor and submits resignation from the chief minister's post. In a massive political gesture outlining the RJD-JDU alliance, Nitish Kumar arrived at Rabri Devi's residence soon after his resignation. Nitish Kumar's decision came after a meeting of JDU MPs and MLAs at his residence. The political rift intensified after Nitish Kumar skipped a key meeting of the Niti Aayog chaired by Prime Minister Modi. On the other hand, RJD leader Tejasvi Yadav also held a meeting with party leaders on the political crisis, indicating full support to Nitish Kumar in forming new government in Bihar after split with its ally. Nitish Kumar and RJD's Tejasvi met in Patna to discuss the power sharing formula. Tejasvi allegedly demanded for a home department and a speaker's post. Celebrations have begun in the Lalu Parivar. Lalu family credits Kingmaker. Daughter tweets Kingmaker on Lalu's image. Congress agrees to support Nitish Kumar. On the other hand, left parties too have signalled that they will be giving outside support. BJP chaired a meeting at Deputy Chief Minister Tarkishore Prasad's residence. Among the top brass was party state unit president Sanjay Jaiswal. Bihar BJP chief Sanjay Jaiswal accused Nitish Kumar of betraying the people of Bihar. Jaiswal said Nitish broke apart despite being given the CM post. BJP rejected JDU National Chief Rajiv Ranjan Singh's allegation of a plot to weaken JDU in a veiled attack against its major ally. Singh had alleged a conspiracy against his party by BJP. After his party expressing outside support, CPI-ML leader Dipankar Bhattacharya said BJP's dream of turning India into a BJP-ruled country for the next 40 years ran into rough weather. RJD likely to extend support to Nitish Kumar. No differences on allotment of portfolios. According to sources, RJD vows to quell BJP's attempt to destabilize the government. Amid BJP-JDU split, Union Minister Pashupati Paras spoke exclusively to Times Now. RLJP says party will stick with BJP. Chirag Paswan tears into Nitish's. JDU says Nitish is concerned about the PM post and his political aspirations. Congress leader and Rajya Sabha member Jairam Ramesh hit out at BJP. Referring to the Bihar political crisis, Jairam Ramesh said what goes up must come down. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav spoke to Times Now and said Nitish is a senior leader and said that BJP was shown the door in Bihar on the anniversary of Quit India movement. Taking a veiled dig at the BJP, CPIM West Bengal Secretary Mohammad Salim said that the BJP would now use CBI and ED in Patna. Meanwhile, Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde expanded his two-member ministry 41 days after taking oath as the Chief Minister. 18 legislators, including BJP President Chandrakant Patil, were sworn in as cabinet ministers. NCP leader Supriya Sule expressed disappointment over no berths given for women in the Maharashtra cabinet. The opposition party slammed CM Shinde over inclusion of two controversial ministers in the cabinet. Outcry against Sanjay Rathod and Abdul Sattar's inclusion grows. Maharashtra BJP Women's Wing leader Chitra Bagh slammed the inclusion of Sanjay Rathod. Bagh added that her fight against the minister in Pooja Chavan's death case will continue. Maharashtra Minister Abdul Sattar alleges a plot to defame his family and him. He also called out the conspiracy against him just before cabinet formation. Sattar demanded for an inquiry. Noida police arrested Shrikant Tyagi along with 3 others in Uttar Pradesh's Meerut district. Arrest comes a day after bulldozers tore down the illegal construction outside his house. Members of Tyagi community held a panchayat in support of Shrikant Tyagi. The panchayat was organized outside a residential complex in Ghaziabad. After the police denied permission for it, members submitted a memorandum to the district police. TMC MLA Idris Ali's house in West Bengal's Murshidabad district has been vandalized by his party's workers, accused him of taking money for allotting posts in its local organization. Kerala Governor Arif Mohammad Khan has sought report from Kannur University VC over the alleged irregularity in the appointment of Dr. Priya Varghese as Associate Professor in Malayalam Department. Tamil Nadu Chief Minister writes to Kerala Chief Minister and assured that the Mullaperiyar Dam is safe and reiterated that dam management team is very focused on the precautionary measures to be taken on time for ensuring safety.
Ex-LG Anil Baijal says Deputy Chief Minister Manish Sisodia are trying to find alibi for his colleagues' acts of omission and commission. The Aam Aadmi Party has filed an application in the Supreme Court opposing the PIL against political parties promising to distribute freebies during election campaigns. SP Chief Akhilesh Yadav upped the ante against the BJP and alleged that the Saffron Party was supervising illegal work in Ayodhya. Telangana BJP leader Gyanendra Prasad was found dead at his residence. A team was dispatched to the spot as soon as information of the death was received. A case has been registered and a probe is underway. TMC Birbhum District President Anubrata Mondal summoned by CBI again in connection with cattle smuggling case. He had earlier skipped summons due to health issues. Congress star campaigner Mirchi Baba was arrested for rape charges. Joint action of Bhopal Police and Gwalior Crime Branch Police from a hotel in Gwalior. After the arrest, police took Mirchi Baba from Gwalior to Bhopal. An incident of theft was reported at a temple in Madhya Pradesh's Jabalpur. The CCTV footage showed how a thief looted valuables worth 25,000 rupees from the temple. All women troop of ITBP completed a patrol at Uttarakhand borders ahead of the 75th Independence Day. The special patrol was also themed Azadi Ka Amrit Mahotsav and Har Ghar Tiranga campaign. 7 people were injured after a high-tension wire fell on a procession in Vaishali district. According to police reports, the injured people were rushed to Sadar Hospital. IMD has issued a warning of intense to very intense spell of rain with winds at isolated places in Maharashtra's Mumbai, Navi Mumbai, Thane and Palghar. In a swiftly coordinated operation, the Indian Coast Guard ship rescued 2 fishermen from a sinking fishing boat. The owner of the boat approached ICG district headquarters and reported on-board flooding situation. A huge landslide occurred near the waterfall in Kokal Khet of Pithoragarh district. Red alert has also been issued across the district. The country sees a dip in daily COVID cases with more than 12,000 fresh COVID cases and 42 deaths in the last 24 hours. The daily positivity rate now stands at 3.5%. "19-year-old weightlifter Jeremy was accorded a hero's welcome by the Sports Minister of Mizoram. Jeremy won gold for India in the Birmingham Commonwealth Games. Athlete Eldos Paul reckoned that Neeraj Chopra's gold medal winning performance in the Tokyo Olympics last year has changed the mentality of Indian athletes in India. Shifting focus back to the massive political developments taking place in Bihar after Nitish Kumar resigned, handed over his letter to the governor. He went straight to Rabri Devi's residence where a meeting took place between him and Tejasvi Yadav. And those are in fact the pictures that we are playing out for you on the screens from Rabri Devi's residence where the first round of meeting took place and then the action has now shifted to the Chief Minister's residence, to Nitish Kumar's residence actually, where there is a massive gathering of workers outside the residence and the formula with which the government formation will take place is being discussed at this point of time. That crucial meeting is still underway. Meanwhile, the BJP in the first press conference on this entire development has alleged that Nitish Kumar has betrayed people of Bihar, the biggest political quake of the day. Nitish Kumar has dumped BJP and will be forming an alliance with about half a dozen other parties. It is both the RJD and JDU going into a huddle and eventually Nitish Kumar submitting his resignation to the governor in the afternoon. He has also staked claim to forming the new government. From the Raj Bhavan, Nitish went straight to Rabri Devi and Tejasvi Yadav's residence where he received an official letter of support. Let's first listen to the announcement. लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे।
Together of the Mahagathbandhan spread much cheer in the non-BJP camp across the country, with many seeing this as a boost for the non-NDA bloc and a setback to the BJP, which has steadily seen its stock deplete. Remember, in the recent past, most prominent alliance partners like the Akali Dal, Shiv Sena and now JDU have left the BJP. It's not surprising then that non-BJP leaders hailed it as a booster dose for BJP's opponents before 2024 and hailed Nitish Kumar as a possible David to Modi's Kolia. आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में यह कहना ठीक है कि राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से चीजें होती हैं। आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये गठबंधन चुनाव लड़ा था, यानी बीच में नीतीश जी का अलायंस हो गया बीजेपी से, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पुराना गठबंधन जो था जिसके चलते चुनाव जीते हैं, लोगों के बीच में जनता से वोट जो मिला था वो इसी गठबंधन को मिला था, तो इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। ये अच्छी शुरुआत है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं, उनके बारे में क्या कहना, वो बिहार और बिहार के गणित को बेहतर समझते हैं। ये उनके अपने फैसले हैं, गठबंधन में क्या तय होता है, क्योंकि गठबंधन जब बनता है तो बहुत सी चीजों पर मिलजुल करके फैसला लेते हैं। So the alliance with BJP is over and Mahagathbandhan is back. Let's go across to Prithveen to understand who stands where in terms of the seats. Yes, so let me quickly break this down for our viewers. What is it that the Mahagathbandhan numbers are going to look like after the formal announcement comes in? We're already looking at developments take place to give a shape to the Mahagathbandhan. The JDU, as it stands at 45, the RJD at 79. Remember, 80 is the number, but there's one vacant seat as well. So 79 for the RJD. The Congress is at 19. And interestingly, in the latest turn of events, we have HAM also come out with 4 MLAs extending support to the Mahagathbandhan. So 4 MLAs of the HAM will also be a part of the Mahagathbandhan, along with the left parties, the CPI, CPIM and CPM-ML. So 2 plus 2 plus 12, which means a total of 16 of those left parties that will be extending support. Now, they have though made it clear that they will be supporting the Mahagathbandhan from the outside. So though the portfolios will be divided amongst the JDU, the RJD, the Congress, perhaps the HAM as well, we're not quite sure on how it's going to play out for the left parties, but that's the number. 16 of them here who have decided to extend outside support to the Mahagathbandhan. Swati. Right, Prithveen, stay on with us. We have some breaking inputs coming in, and we've been told that the top BJP leaders are now rushing to Patna. Remember, there was a key meeting that took place at Tarkishore Prasad's residence as well. These are images of the BJP leaders who are heading towards Patna now. Mr. Sushil Modi, Ravi Shankar Prasad can be seen in the flight. We have a reaction also coming in from Mangal Pandey. Let's listen in. भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नीतीश कुमार जी को अपने वायदे के अनुरूप उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पे सुशोभित किया। जिस लालू राज के खिलाफ हम सब लोग लड़के आए थे, आज फिर वहीं वापस लौट गए। यह एक बड़ा प्रश्न बिहार की जनता के सामने है। माननीय नीतीश कुमार जी संपूर्ण जीवन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे और आज फिर कांग्रेस के साथ जुड़ गए। यह कतई उचित नहीं है। बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था 2020 में, उस
मैंडेट के साथ धोखा हुआ है। उस मैंडेट को नज़रअंदाज किया गया है। यह एक नैतिक लड़ाई है। इस नैतिक लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता के साथ मिलकर लड़ेगी। क्या लग रहा है जो भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ था 2017 में, वो उस महागठबंधन से राजद से अलग हुए थे, फिर वो मुद्दा हालांकि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन फिर जाकर के वो मैंने कहा ना कि जिस लालू राज के खिलाफ हम सब लोग लड़के लंबे समय तक बिहार की जनता की सेवा करते रहे, बिहार की जनता के आशीर्वाद से बिहार की जनता ने हम सब लोगों को सेवा करने का अवसर दिया था, उसी लालू राज के खिलाफ बिहार की जनता ने 2020 में भी मैंडेट दिया था और फिर उसी के साथ मिलना यह जनता के जनादेश के साथ उचित नहीं है। आगे क्या होगा? भाजपा कहाँ जाएगी? भाजपा को मैंडेट मिला था, सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, आप लोगों ने उस वादा को पूर्ति करते हुए नीतीश कुमार को सीएम बनाया, लेकिन उन्होंने तो वो सारे वादे, सारे रिश्ते सारे खत्म कर दिया। भाजपा क्या करे? नहीं, मैंने कहा जो निर्णय उन्होंने किया है यह जनता के जनादेश के साथ उचित नहीं है। जनता का जनादेश लालू राज के खिलाफ था, एनडीए के लिए था। बिहार की जनता ने जो वोट किया था वह वोट उस लालू राज को सत्ता से बाहर रखने के लिए किया था, लेकिन आज फिर वही लालू राज सत्ता में वापस आया है। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता को इससे कष्ट पहुंचा है, चोट पहुंचा है और यह जो लड़ाई है यह नैतिकता की लड़ाई हम राज्य की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी। Let's go across to Aishwarya now. Aishwarya, we are playing out visuals, of course, both of the meeting that took place at Rabri Devi's residence and a picture coming in now of top BJP leaders rushing to Patna. Now that the alliance is over, now that everything is over in terms of the JDU BJP Gathbandhan, what's next for BJP? BJP is calling this a betrayal, but what are the options available to them? Well, certainly now what BJP was looking till now is the first move which can certainly come out from Nitish Kumar, and when Nitish Kumar has already tendered resignation, BJP certainly had been left aside, and now all the 16 ministers from BJP quota will be handing over resignation to the governor just because now there is no NDA in Bihar. But where I am is the residence of Rabri Devi, where all the action unfolded since morning. The meeting with the Congress and the RJD MLAs and the left party MLAs took place over here, and the letter of support was signed. And these are the ground visuals from the right. This here at in Patna. This is Rabri Devi's residence, and from here as we walk down, Nitish Kumar, soon after tendering his resignation, came here at Rabri Devi's residence, and from there he, along with Tejasvi Yadav and Congress's leaders, left party leaders, walked down to Chief Minister's residence. After we saw those visuals of Nitish Kumar and Tejasvi Yadav handing over bouquets, and as we walk down, just few meters away is the Raj Bhavan as well, where what we are getting to understand now from our sources is that 6 parties, remember, the Congress, the JDU, RJD, CPI-ML, CPI-M, and VIP, that's Mukesh Saini's party. So these all parties have handed over support to Nitish Kumar, which makes the Nitish Kumar government
for more than 160 MLAs, which is much beyond the majority mark, and they are enough confident that this newly formed government will certainly take control and will complete its tenure, and Chacha Bhatija government will work in Bihar. But there were, of course, the terms that were decided between the RJD and JDU just before making it sure that what will be the permutation combinations and how this government will look like, just because when Nitish Kumar had asked that there should be one deputy chief minister from Congress. Stay on with us. Our executive editor Padmaja Joshi spoke to Union Minister and the chief of RLJP, Mr. Pashupati Paras. Let's play out that reaction. Pashupati Paras, Union Minister, somebody who knows the Bihar politics very, very closely, has himself been a part of it. पशुपति पारस जी, आज कहा जा रहा है राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेन धारी। राज तिलक की तैयारी हो गई है बिहार में? हाँ, कुछ हो रहा है। पशुपति पारस जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आपको लगता है कि अब ये सरकार लंबी चलेगी? नीतीश जी कह रहे हैं कि सैद्धांतिक तौर पर बीजेपी को छोड़ दिया, अब चाचा भतीजा की सरकार चलेगी पूरे टर्म तक। आप एक बात जान लीजिए, देश की पुकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, देश की पुकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वमान्य नेता हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और देश और विदेश में आज़ादी के बाद पहला ऐसा व्यक्ति मिला है जो 1 अरब 35 करोड़ आबादी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हो, जिनके कार्यकलाप से पूरा देश खुश है। बिहार एक स्टेट है, केंद्र और बिहार की सरकार जब थी, एक सरकार थी, एक गठबंधन की सरकार थी, तो बिहार में काफ़ी विकास हुआ। देखिए, काफ़ी मेडिकल कॉलेज खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, काफ़ी बड़ा NH का निर्माण हुआ, गंगा नदी पर पुल बना, कोसी नदी पर पुल बना, काफ़ी संख्या में PMCH का निर्माण हुआ। इस ढंग से बिहार का काफ़ी विकास हुआ था, जिसके चलते नीतीश कुमार जी का नाम भी बिहार में हुआ था। लेकिन आज वो सब धरा का धरा रह गया और नीतीश कुमार जी का जो ये डिसीजन है, मेरे हिसाब से ये डिसीजन बिहार के हित के लिए नहीं है। तो अगर इतना विकास हुआ है पशुपति, 1 घंटा 2 घंटा पहले, पशुपति जी, अगर इतना विकास हुआ है, नीतीश जी इतने नाराज क्यों हैं भाजपा से? नीतीश जी इतने नाराज क्यों हैं? हमारी पार्टी के संसदीय दल का फैसला हुआ कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट थे, आज भी हैं और हम भविष्य में नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे। ये हमारी पार्टी का फैसला है और बिहार के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है, बिहार का विकास अब अवरुद्ध हो जाएगा। तो आपको क्यों लगता है नीतीश जी की नाराजगी की वजह क्या है? अब नीतीश जी का अलग होने का क्या वजह है तो नीतीश कुमार बता सकते हैं। मुझको तो वजह नज़र नहीं आ रहा है। मुझको तो लग रहा है कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी थी, 77-78 विधायक रहने के बावजूद भी उन्होंने नीतीश कुमार जी को 43 विधायक पर बिहार का कमान दिया था, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। अब इससे बड़ा सम्मान तो और कुछ नहीं मिल सकता है। लेकिन अब नीतीश जी क्यों इस ढंग से काम किए वो तो वही बताएंगे। क्योंकि आज जब विधायक दल की बैठक हुई जदयू की, ऐसा बताया जा रहा है कि वहां ज्यादातर विधायकों ने कहा कि हमारा इस्तेमाल किया भाजपा ने और फिर सड़क किनारे फेंक दिया, इस्तेमाल करके हमें छोड़ दिया। आप क्या कहेंगे? अरे जब बहाना, इसे तो बहानाबाजी ने बहाना न है। जब हमको अलग होना है, किसी दल से अलग होना है तो खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। वो देहाती कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। तो यही बात है। अब उनको चूँकि भाजपा से अलग होना था इसलिए अलग हो गए।
आज ये भी कहा जो जदयू के नेता हैं कि ना सिर्फ हम अलग हो रहे हैं, जितने भी उनके घटक दल हैं, जितने भी उनके अलायंस पार्टनर हैं, सबको छोड़ देना चाहिए। देखिए एक एक करके सब अलग हो गए, अकाली दल अलग हो गया, शिवसेना अलग हो गई, अब जदयू भी अलग हो गया। वो कह रहे हैं आप जैसी पार्टी हैं, आपको भी छोड़ देना चाहिए, नहीं तो खत्म कर देगी भाजपा आपको। नहीं, हमारी पार्टी और हम एकजुट हैं। हमारी पार्टी देखिए, हमारी पार्टी का नीति और सिद्धांत एक अलग है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में ये सरकार बनी थी और ये पार्टी का निर्माण हुआ था 2000 ईस्वी में, और उन्होंने 2014 में एनडीए गठबंधन का साथ दिया। और उनका ये स्पष्ट था कि जब तक हम पार्टी में हैं, जब तक पार्टी हमारी रहेगी, हम एनडीए गठबंधन और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आस्था व्यक्त करते हैं और हमारी पार्टी रहेगी। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, आज कुशवाहा जी ने भी बोला कि आज बिहार, कल भारत की तैयारी करेंगे नीतीश बाबू, भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं वो। अरे कुशवाहा जी, तो कुशवाहा जी कब क्या बोलते हैं आपको पता नहीं है? 2 वर्ष पहले कुशवाहा जी क्या बोलते थे, आज क्या बोल रहे हैं, और 2 वर्ष बाद क्या बोल रहे हैं। तो कुशवाहा जी क्या बोलते हैं उस पर मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। मैं जो बोल रहा हूँ यही बात आप जानिए कि हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन के हम पार्ट थे और आज भी हैं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आस्था व्यक्त करते हैं। पर जो एनडीए गठबंधन के खिलाफ ताकतें हैं, उनको आज काफी मजबूती मिली है। एक और राज्य में सरकार बन गई उनकी, बड़े राज्य में सरकार बनी है। आवाज़ें नहीं आ रहा था, क्या सुन रहे हैं? एक बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जो विरोधी पार्टियां हैं, उनकी सरकार बन गई। आपको लगता है कि जो गैर एनडीए गठबंधन है, उनको मजबूती मिली है आज की सरकार बनने से? कहाँ? देश में एंटी एनडीए। देखिए कि जो गठबंधन टूटा है, मेरे हिसाब ये जो गठबंधन टूटा है, मेरे हिसाब से बिहार के विकास के लिए बाधक है। जी पशुपति पायलट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। On now, latest updates coming in. We are being told that Nitish Kumar and Tejasvi Yadav have reached Raj Bhavan. Let's go across to Aditya for live updates. Yes, Aditya. How is that? Finally, after tendering his resignation to the governor and then meeting former Chief Minister Rabri Devi and Tejasvi Yadav, and then holding another brainstorming session at 1 March, finally Bihar Chief Minister Nitish Kumar has marched ahead to the governor again, and this time he is accompanied by senior party leaders of all his constituents. I must inform you here that Hum Supremo Jitan Ram Manjhi, JDU Chief Lalan Singh, JDU's senior leader and who actually held a senior portfolio out here, that of education, Vijay Chaudhary, were two seen accompanying him while he was on his way to the Raj Bhavan. And finally now, the final round of meeting has started inside Raj Bhavan. Stay on with us, Aditya. Let's go across to Aishwarya as well. Aishwarya, the letter of support has signatures of leaders of 6 political parties. Is that what we can confirm? Well, that's right. 6 political party signatures have been in that letter of support, which will be handed over by Nitish Kumar to the governor of Bihar. JDU, RJD, Congress, CPI, CPIML, combinedly the left parties, HAM, which is Jitan Ram Manjhi's party, and VIP, which is Mukesh Jain's party. So 6 political parties have offered support to Nitish Kumar, and with more than 155 MLAs precisely, the government will be formed under the leadership of Chief Minister Nitish Kumar. That's what the sources inside Rabri Devi's residence have clearly confirmed us. And now what we are also hearing is that Nitish Kumar and RJD leader Tejasvi Yadav has reached Raj Bhavan
as Aditya was just mentioning, that the senior leaders of Nitish Kumar's earlier cabinet was also there as far as his movement from 1 mark, that is Chief Minister's residence, to Raj Bhavan is concerned. And certainly now the Karyakartas from Rabri Devi's residence is moving to the Chief Minister's house, because it has been very certain now that the new formation of government that will be taking place, and the arrangements that Tejasvi Yadav has sought, the workers over here are delighted, and they are saying that of course the control will be in the hands of Tejasvi Yadav, and whatever Tejasvi Yadav has demanded. Aishwarya, keep tracking those developments. Nitish Kumar and Tejasvi Yadav are at Raj Bhavan for staking claim for government formation. We have Mr. Rajgopalan, senior journalist, and Abdul Basit, political analyst, also on the broadcast. We'll go across to them, but after a short break. The most pressing issues, the most informed minds, free and fair exchange. Converse India with Rahul Shivshankar. 3-4 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು, ನೈತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ, ನೆಹರು ಮಾಡಿದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಜನ ನಮ್ಮ ಋಣ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇವತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ 2 ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. 3-4 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಈ ಕಿಂಚತ್ತು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಳು ಬೀಳುತ್ತೆ. He has openly confessed, he has openly admitted. In fact, taking this cognizance, I think our agencies should book a case, should really book a case against him and also make an enquiry, because he would be knowing who are all the beneficiaries.
It's the biggest political quake of the day. Nitish Kumar has dumped the BJP and will be forming an alliance with about half a dozen other parties. It is both the RJD and the JDU now going into a huddle, and eventually Nitish Kumar submitting his resignation to the governor. We're getting reports now that both Tejaswi Yadav as well as Nitish Kumar are about to meet the Bihar governor. He's quit as chief minister and a new government is likely to be formed soon. Nitish has said that all the allies who are part of the NDA will now have to dump the BJP. Let's listen into what Nitish said just a short while ago. But before that, let's go across to Mr. Rajgopalan, who's joining us on the broadcast for his perspective. Mr. Rajgopalan, how would the BJP be reacting to something like this? Because at the end of the day, it's another ally that has now deserted the party. No, I don't think that BJP has taken it seriously. My understanding of the situation is that Narendra Modi got votes for, Bihar. Narendra Modi's success, because of Narendra Modi, Mr. Nitish Kumar got votes. But what did Mr. Nitish Kumar do? He served in the BJP. He has blackmailed and he is not a trustworthy person. And second thing, with him, if you go to 224 as the prime ministerial candidate, how would the public react to that? Because he changed the turncoats. His shirt, like kurta change kar rahe, he has been changing the party. He is not with 60 MLAs, he has been blackmailing and backstabbing JD, RJD and also George Fernandez, plus whomsoever he has been only backstabbing them. And second thing more important is, there was no resort politics, there was no defection, there was no challenge for the election symbol, this type of thing. But at the same time, where is the ideology? Where is the ideology for Mr. Nitish Kumar? He has been facing immense political crisis, but whenever he says he changes the shirt, like, changing an alliance. My understanding is, BJP groundswell in Bihar had rattled Mr. Nitish Kumar. That is why he timed it after the presidential election. He should have gone before the presidential election. And again, with Tejaswi Yadav coming back to the scene, there is going to be a Gaur Parivar Vaad slogan by Mr. Narendra Modi and BJP in Bihar. Because the family politics, dynasty politics, third important thing is that the ED, PMLA and the National Herald case speed up this. Congress has been reduced to a third or fourth position in Bihar as well as at the national level. Now, if you project Mr. Nitish Kumar as the Prime Minister, what is the role of major political party Congress? Who will be the Congress face? Will they support Nitish Kumar? These are all certain questions which will arise. But my point is, it is a setback to BJP, right. But BJP will turn it very well and it is going to be a groundswell for BJP. And what do you make of the possible durability of this Mahagathbandhan now, which is back in its tracks after having been disbanded in 2017, Mr. Rajgopalan? Because at the end of the day, Nitish has about 45 MLAs with him, but Tejaswi Yadav commands the support of almost 79 MLAs. So the RJD once again proving to be the dominant partner in the alliance. How do you see that dynamic playing out? That dynamic will not play very well because RJD will rule the roost. RJD will do all corruption, all back to the square one. Things of Lalu Yadav will be remade in the new avatar. Mr. Nitish Kumar will be a prisoner under the Lalu's family. That is how I compare the politics of 2022. See Maharashtra, see Tamil Nadu, see Bihar. What is happening? Same thing, like Eknath Shindes are coming. Now in Bihar, Sharad Pawar was in Maharashtra. In Bihar, it is Tejaswi Yadav who is splitting that person. So Indian politics is changing because Narendra Modi's outreach is more, and Narendra Modi in 2024, the uniform civil code, which is they are likely to bring in 2023, that is also falling apart on the minds of the regional parties. Therefore, they are positioning for 2024. That is what I could make it out at the All India level. Right, Mr. Rajgopalan, stay with us because, of course, Nitish Kumar's reaction is also there at the time that he was submitting his resignation to the governor of Bihar. Let's listen to what he said.
लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस यही। क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। So 10 top developments with regards to the latest series of events in Bihar where the NDA government there has collapsed. Nitish Kumar has quit as the chief minister and a new government is likely to be formed soon. Nitish has said that all the existing allies within the NDA fold need to dump the BJP. He said that the decision on the part of his party to leave the NDA was completely unanimous. Jitan Ram Manjhi of the Hindustan Awam Morcha has also decided to back Nitish Kumar. The HAM, the party he heads, has left the NDA. The formula to in fact quit the NDA and of course present a new proposal to the governor to form a new government was finalized at the residence of Rabri Devi in Patna. Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party has also reacted and said that the anti-BJP bloc is now gaining strength ahead of 2024. Tejasvi Yadav of the RJD has also set some terms saying that the Speaker's position as well as the Home Ministry in the newly formed government should belong to the RJD. The Deputy Chief Minister's post is likely to go to the Congress party. However, the RJD has voiced its opposition to this particular proposal. The LJP, now led by Chirag Paswan, had dared Nitish, saying that Nitish should fight the next elections alone without the support of any allies. And finally, the BJP has thrown a jibe at Nitish Kumar, saying that an Uddhav Thackeray-like fate is what awaits him, reminding of the rebellion staged by the Shiv Sena in the state of Maharashtra. So those... And Lalu Prasad Yadav's daughter, Rohini Acharya, has put out a new tweet now reacting to what's been happening in Bihar. She said, भाजपा वाले DP बदलने को कहा था, हम लालूवादी सरकार ही बदल दिए। ई बिहार है बबुआ, उड़ती चिड़िया को haldi lagata hai. Now, Rohini Acharya tweeted some time ago as well, of course, indicating that it's time for the Raj Tilak now for the RJD in the state of Bihar. This is another tweet that she's now put out, indicating the celebratory mood right now in the RJD camp in the state of Bihar, where the formation of a new government is now imminent, with Tejasvi Yadav accompanying Nitish Kumar to the Raj Bhavan there to stake the claim to form a new government in Bihar under the Mahagathbandhan. So the original constituents of the Mahagathbandhan, which fought the elections together in 2015 and won that election, are now back together with the RJD, the JDU, the Congress, the CPI, the CPIM and the CPI-ML all together forming this new government now, which is likely to take shape very soon in the state of Bihar, with Nitish Kumar and Tejasvi Yadav taking with them the letters of support that they've already managed to procure from their allies, and very soon they'll be staking their claim to form a new government in Bihar. The BJP has of course called this a betrayal and reacted very strongly to Nitish's exit and also questioned his credibility. His credibility is something that has also been questioned in the past as well by the likes of Lalu Prasad Yadav himself when Nitish quit the Mahagathbandhan in 2017. Let me go across immediately to Aishwarya, who's been tracking all the developments from the ground in Patna. Aishwarya, when are Nitish Kumar and Tejasvi Yadav likely to meet the governor? Well, Siddharth, Tejasvi Yadav and Nitish Kumar is already at Raj Bhavan, and they are currently meeting the governor of Bihar, and the letter of support which is being signed by 6 political parties, Congress, RJD, JDU, CPI, CPIML combinedly, the left parties,
VIP and the HAM, with the support of 155 plus MLAs, the letter of support is now being handed over to the governor of Bihar to stake a claim for the new Mahagathbandhan government. And this is 1 mark, Chief Minister's residence. Just a short while back from now, Chief Minister designate, I must say, Nitish Kumar just left along with Tejasvi Yadav from the Chief Minister's residence, and just on my left is the Raj Bhavan, where they went inside, and now what we are hearing from the sources is that the letter of support has been handed over to the governor, and any movement from now, Chief Minister along with Tejasvi Yadav and the leaders from the Congress and left can come out from governor's residence and will be straightly heading towards the Chief Minister's residence. Right, we turn our attention now to another very important development, this time in Uttar Pradesh, following the arrest of Shrikant Tyagi from Meerut earlier this morning, and now the Noida police will be holding a press conference, of course, briefing people about the circumstances around his arrest and the action that is now likely to follow against this. आगामी त्योहारों के लिए और नोएडा क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए, जिसमें आप लोगों से तमाम फीडबैक्स मिलते रहे हैं, एक गोष्ठी का यहाँ आयोजन हो रहा था, बृहद गोष्ठी थी। उसी के बीच हमारी जो 24/7 सोशल मीडिया टीम है, वहाँ से एक नोटिफिकेशन आता है एक वीडियो के बारे में जो सेक्टर 93 की सोसाइटी से संबंधित है। उस वीडियो को देखते ही उसका त्वरित स्वतः संज्ञान लिया गया और हमारे विमेन सेफ्टी के लिए जो नोडल ऑफिसर है, एडिशनल डीसीपी अंकिता शर्मा, संबंधित एसएचओ को तत्काल उस मीटिंग से उस वीडियो के डिटेल्स और उस परिवार से संपर्क करते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए और ये लोग उस मीटिंग के बाद से ही एक्शन में आ गए। ये 5 तारीख की घटना थी। पुलिस ने स्वयं रीच आउट करते हुए विक्टिम से संपर्क किया और फिर उनकी जो एक रिटन एप्लीकेशन थी उसके बेसिस पे केस रजिस्टर करके उस वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्ति की तलाश, एक मैन हंट शुरू किया। जैसा आप जानते हैं कि सभी प्रकार के क्राइम या सोशल सिचुएशंस के लिए ये कमिश्नरेट पुलिस बहुत सेंसिटिव रही है और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो जिसकी आर्थिक रीढ़ तोड़ी गई या एक बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रीट क्राइम पुलिसिंग की गई, उस सब को देखते हुए जो मेन एक्यूज्ड है वो अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए भागने लगे। उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले 8 टीम बनाई गई, जिसमें हमारे जिसमें हमारे महिला सुरक्षा की अधिकारी उसकी नोडल ऑफिसर थी और उसके बाद एक मैसिव टीम एफर्ट लॉन्च किया गया
आवश्यकता अनुसार इन टीम्स को बढ़ाकर 12 टीम्स किया गया और लगातार मेन एक्यूज जो अपने आपको पुलिस से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बचाने की कोशिश कर रहा था, उसका लगातार पीछा किया गया। मेन एक्यूज अपने आप को छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी गया, लेकिन हमारी टीम्स लगातार ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, तमाम सीसीटीवी कैमरास, अन्य एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ लगातार बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसका पीछे करते रहे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक हम लोग काफी आगे पीछे उस मेन एक्यूज के रहे। मेन एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया, लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही। उसको भागने में मदद करने वाले, उसको शरण देने वाले, उनको लगातार ट्रैक किया गया और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट था, लेकिन एक बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टीम जो मेरी है, इस टीम ने इन सब चैलेंजेस को देखते हुए, स्वीकार करते हुए मेन एक्यूज तक पहुंचे और उसको अरेस्ट किया। इसकी पूरी घटना की पृष्ठभूमि सोसाइटी के अंदर कॉमन एरिया में कैसे यूज हो और कैसे उसका कौन यूज करे, इससे 3 साल पहले उपजे एक विवाद से शुरू हुआ और उसकी परिणति इस 5 तारीख वाले वीडियो में दिखाई देती है। मैं आपके माध्यम से रीएश्योर करना चाहूंगा कि देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर सेफ्टी ऑफ अवर विमेन एंड चाइल्ड। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले 2.5 वर्षों में लगातार ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, क्राइम अगेंस्ट विमेन पे कार्य किया है, उसी तरह से आगे भी करते रहेंगे। और मैं आप सभी के माध्यम से अपने सिटीजन्स को भी रीएश्योर करता हूं कि ये पुलिस टीम हमेशा आपके मापदंडों पर खरी उतरेगी। सर, ये मेरठ में किस के पास रहा? फोटो करा बुला लीजिए। आपने जैसे बताया यूपी के बाहर भी गया था, ये तो कहाँ गया था, किस से मिला? ये यहां से लगातार भागता रहा। पहले इसने कोशिश की दिल्ली से एयरपोर्ट की तरफ जाने की, लेकिन तब तक वीडियो इतना वायरल हो चुका था कि इसने फिर अपना ट्रैक चेंज किया और उसके बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, थोड़ा इट डिपेंड्स ऑन हिज सेफ्टी प्रोटोकॉल कि वो उसको उतारना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। एक बार one thing at a time, let the photo people visuals be done. Let the visuals be done. Visuals हो जाए एक बार। लगा लो बस।
नहीं वो इनका भी और भी फॉलो अप भी काफी बचा हुआ बाकी हैं, देयर आर मेनी फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट की तरफ जाने हो गया, विजुअल्स हो गया। नाम बता दीजिए इनके बाकी। उसमें प्रेस नोट में सब आ रहे हैं, प्रेस नोट में सारे डिटेल्स हैं। 4 लेट द प्रोसेशन गो। एयरपोर्ट के बाद ये मेरठ पहुंचा और तो रात मेरठ में गुजारे और नेक्स्ट डे फिर वहां से अपने सारे डिवाइसेस चेंज करके सैटरडे को वहां से हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश की तरफ हमारी टीम्स लगातार इनका पीछा कर रहे थे और उसके बाद ये फिर वहां से संडे को वापस यूपी में एंटर किए और संडे इवनिंग के बाद इनके द्वारा फिर अपने सारे डिवाइसेस जो हैं चेंज किए गए और उसके बाद से लगातार मेरठ, मुजफ्फरनगर और उसके इर्द गिर्द के जो एरियाज हैं, कभी बागपत की तरफ इसका मूवमेंट रहा। इस बीच इसके द्वारा न केवल अपने आप को छुपाया गया बल्कि जगह स्थान बार बार बदला, व्हीकल्स जो इसने इस्तेमाल करे थे वो बार बार बदले, जिससे ये लगभग 3.5 पौने 4 दिन तक अपने आप को छुपाए रहा। लेकिन टीम्स हमारी कंटिन्यूसली काम कर रही थी और इसकी हर नई आइडेंटिटी को, हर नई व्हीकल को, हर नए डिवाइसेस को लगातार एक बहुत बड़े ऑपरेशन के तहत हम लोग ट्रैक करते हुए इस तक पहुंचे हैं। किन लोगों ने मदद की थी, वो कौन कौन लोग थे सर? इसमें प्रेस नोट में वो सबके नाम आए हैं, आप एक बार उसको नकुल त्यागी और इसके साथ ही एक संजय हैं और इसका जो पहले जो ड्राइवर साथ गया था राहुल, ये 3 इसमें मेन मददगार थे। सर ये कहा गया है इसमें कि बार बार राजनीतिक संरक्षण इसको मिलता रहा है, कोई ऐसी चर्चाएं आपके साथ आई है या इसमें आपने क्या तफ्तीश किया है? अभी तक की सारी तफ्तीश जो है वो इनको ढूंढने पे थी, ये पुलिस से बच रहे थे और पुलिस इनको खोज रही थी। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस आप लोग मदद ले रहे थे, आपको कैसे पता चला कि मेरठ में है और फिर किस तरीके से वो पूरा ऑपरेशन हुआ इसको पकड़ने को लेकर, और उस दौरान क्या इसका? आपका ये प्रश्न है तो बहुत सरल, लेकिन मेरा और मेरे सहयोगियों का काम आगे बहुत बढ़ा देगा, तो इसके लिए कभी फुर्सत में आइएगा एक कप अलग से कॉफी पे, तब मैं आपको सारे ऑपरेशनल डिटेल्स शेयर कर दूंगा। एक करके बैठिए ना, एक एक करके वो कौन कौन लोग थे, क्या इसके रिश्तेदार थे या दोस्त थे, किन लोगों ने पनाह दी? इसके सहयोगी थे और इसके साथ लगातार वो काफी समय से जुड़े हुए थे, ये अपना उनको दोस्त ही बताता है, बाकी और जो डिटेल्स है वो हम लोग वेरीफाई करेंगे। क्या उससे भी इसके कुछ तार जुड़े हुए क्या हॉस्टल मेरठ? इस तरह की बात अभी तक की विवेचना से नहीं आई है। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, इसके पास जो व्हीकल्स मिले हैं वो सभी में एक स्पेसिफिक नंबर है जो 001 करके है, यूपी 32 लखनऊ की सीरीज है, और प्रत्येक नंबर प्लेट के लिए इसने बिडिंग की
और पूछताछ में ये बताया कि कोई भी नंबर प्लेट इसको 1,10,000 से कम की नहीं मिली है। सर वो व्हीकल्स किसके नाम है? वो दूसरी चीज इसके द्वारा एक व्हीकल पर, जैसा आपने सुबह से देखा भी है, एक विधायक का स्टिकर भी लगाया हुआ है। आ रहे उस पे भी आ रहे हैं। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है, जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। और जी अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं, ये इसके द्वारा बताया गया है। और इसके अतिरिक्त इसके ड्राइवर द्वारा नंबर प्लेट पर यूपी सरकार का जो राज्य चिन्ह है वो भी पेंट कराया गया और उसका दुरुपयोग किया। इस सारी जो इसकी ये व्यवस्था थी वो अपने आप को सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति प्रदर्शित करने की थी, और उसको उस इमेज को यूज करते हुए इसके द्वारा एक भय का वातावरण अपने आसपास उत्पन्न किया गया। और इसके लिए उसमें गैंगस्टर एक्ट में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी तमाम ऐसी जो संपत्तियां हैं जो अनअकाउंटेड हैं और जो इलेजिटिमेट मीन्स से हैं, उसमें भी आगे चल के हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, कितनी गाड़ियां रिकवर हुई है सर इससे? कितनी गाड़ियां? दो सफारी, एक होंडा सिविक, 5 गाड़ियां। अभी तक इससे 5 गाड़ियां बरामद हुई हैं। वो मैंने उसमें प्रेस नोट में भी भेजा है, जिसमें 2 फॉर्च्यूनर, 2 सफारी, और एक होंडा सिविक। किसने कहा? अरे हमने कहीं दिया भाई। Shrikant Tyagi thought his political connections could buy him immunity from the law. आपको बिल्कुल मत लगाना। But when Times Now exposed his high-handedness, his arrogance crumbled. और ये देखिए बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, तो पुलिस बल है वो यहाँ से मौके। Your voice, your resolve, powered a memorable victory. Rousing welcome by the Tyagi is today in custody. His arrest is a tribute to what Times Now and you, that is us, can do together. आपको बिल्कुल मत लगाना। Times Now. Action begins here. On to the top 50 updates we're tracking this evening. It's official. Nitish Kumar calls off alliance with the BJP, meets governor and submits resignation from CM post. In a massive political gesture outlining the RJD-JDU alliance, Nitish Kumar arrived at Rabri Devi's residence soon after submitting his resignation. Nitish Kumar's decision came after a meeting with party MPs and MLAs at his residence. The political rift intensified after Nitish Kumar skipped a key meeting of Niti Aayog chaired by Prime Minister Modi. On the other hand, RJD leader Tejashwi Yadav also held a meeting with party leaders on the ongoing crisis, indicating full support to Nitish Kumar in forming new government in Bihar after split with its ally BJP. Nitish Kumar and RJD's Tejashwi met in Patna to discuss the power sharing formula as well. Tejashwi allegedly demanded for Home Department and Speaker's post. Celebrations have begun in the Lalu Yadav Parivar. Lalu's family credits Kingmaker. Daughter tweets Kingmaker on Lalu's image. Congress agrees to support Nitish Kumar government. On the other hand, left parties too have affirmed support from the outside.
BJP also chaired a meeting at Deputy Chief Minister Tarkishore Prasad's residence. Among the top brass was Party State Unit President Sanjay Jaiswal. Bihar BJP Chief Sanjay Jaiswal accused Nitish Kumar of betraying the people of Bihar, said Nitish broke apart despite being given the CM post. The BJP rejected JDU National Chief Rajiv Ranjan Singh's allegation of a plot to weaken the JDU in a veiled attack against its major ally, said, in fact, alleged a conspiracy against his party by the BJP. After his party expressed outside support, CPIML leader Dipankar Bhattacharya said BJP's dream of turning India into a BJP-ruled country for the next 40 years ran into rough weather. RJD is likely to extend support, has in fact confirmed it's going to extend support to Nitish Kumar, and no difference on allotment of portfolios according to sources. The RJD has vowed to quell BJP's attempt to destabilize the government. Amid BJP JDU split, Union Minister Pashupati Paras exclusively spoke to Times Now and said the party will stick to the BJP. Chirag Paswan tears into Nitish's JDU, said Nitish is concerned about the Prime Minister's post and his political aspirations. Congress leader and Rajya Sabha member Jairam Ramesh hit out at BJP, referring to the Bihar political crisis. He said, "What goes up must come down." Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav also spoke to Times Now and said Nitish is a senior leader and said the BJP was shown the door in Bihar on the anniversary of Quit India movement. Taking a whale dig at the BJP, CPIM West Bengal Secretary Mohammad Salim said the BJP would now use CBI and ED in Patna as well. Meanwhile, Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde expanded his two-member ministry 41 days after taking oath as the Chief Minister. 18 legislators, including BJP President Chandrakant Patil, were sworn in as cabinet ministers at Raj Bhavan. NCP leader Supriya Sule expressed disappointment over no berths given for women in the Maharashtra cabinet. The opposition party slammed Chief Minister Shinde over inclusion of two controversial ministers in the cabinet. A lot of outcry against Sanjay Rathod and Abdul Sattar's inclusion has been growing. And Maharashtra BJP Women's Wing leader Chitra Waq slammed the inclusion of Sanjay Rathod as well, said that her fight against the minister and Pooja Shavan's death case will continue. Maharashtra Minister Abdul Sattar also alleged a plot to defame his family and him. He also called out the conspiracy against him just before cabinet formation, demanded for an inquiry. Noida police arrested Shrikant Tyagi along with 3 others in Uttar Pradesh's Meerut district. The arrest, remember, comes a day after bulldozers tore down the illegal construction outside his house. Members of Tyagi community also held a panchayat in support of Shrikant Tyagi. The panchayat was organized outside a residential complex in Ghaziabad. After the police denied permission for it, members submitted a memorandum to the district police. Meanwhile, TMC MLA Idris Ali's house in West Bengal's Murshidabad district has been vandalized by his party's workers, have accused him of taking money for allotting posts in its local organization. Kerala Governor Arif Mohammad Khan has sought report from Kannur University VC over the alleged irregularity in the appointment of Dr. Priya Varghese as Associate Professor in the Malayalam Department. Tamil Nadu Chief Minister has written to Kerala Chief Minister and assured that the Malaperiyar Dam is safe and reiterated that the dam management team is very focused on the precautionary measures to be taken on time for ensuring the safety. Ex-Lieutenant Governor Anil Bajal says Deputy Chief Minister Manish Sisodia is trying to find alibi for his colleagues' act of omission in commission. The Aam Aadmi Party has filed an application in the Supreme Court opposing the PIL against political parties, promising to deliver and distribute freebies during election campaigns. SP Chief Akhilesh Yadav upped his ante against the BJP and alleged that the Saffron Party was supervising illegal work in Ayodhya. Telangana BJP leader Nanendra Prasad was found dead at his residence. A team was dispatched to the spot as soon as information of the demise arrived and the case has been registered. A probe is currently underway. TMC Birbhum District President Anubrata Mondal summoned by the CBI again in connection with the cattle smuggling case. He had earlier skipped summons due to health issues.
Congress star campaigner Mirchi Baba was arrested for rape. Joint action of Bhopal Police and Gwalior Crime Branch Police from a hotel in Gwalior took place. After the arrest, the police took Mirchi Baba from Gwalior to Bhopal. An incident of theft was reported at a temple in Madhya Pradesh's Jabalpur. The CCTV footage showed how the thief looted valuables worth 25,000 rupees from the temple. All women troop of ITBP completed a patrol at Uttarakhand's borders ahead of the 75th Independence Day. The special patrol was also themed Azadi Ka Amrit Mahotsav and Har Ghar Tiranga campaign. 7 people were injured after high-tension wire fell on a procession in Vaishali district. According to the police reports, the injured people were rushed to Sadar Hospital. IMD has issued a warning of intense to very intense spell of rain with gusty winds at isolated places in Maharashtra's Mumbai, Navi Mumbai, Thane and Palghar. In a swiftly coordinated operation, the Indian Coast Guard ship rescued 2 fishermen from a sinking fishing boat. The owner of the fishing boat approached the ICJ district headquarters and reported on-board flooding situation. A huge landslide occurred near the waterfall in Kokalkhet of Pithoragarh district. Red alert has also been issued across the district. The country sees a dip in daily COVID cases with more than 12,000 fresh COVID cases and 42 deaths in the last 24 hours alone. The daily positivity rate stands at 3.5%. 19-year-old weightlifter Jeremy was accorded a hero's welcome by Mizoram Sports Minister. Jeremy, remember, won gold for India in the Birmingham Commonwealth Games. Athlete Eldhose Paul reckoned the Neeraj Chopra's gold medal winning performance in Tokyo Olympics last year has changed the mentality of Indian athletes among the people. Lakshya threw his racket in the stands and made a wild celebration after hitting the final shot and claiming the gold medal in men's singles badminton event of the Commonwealth 2022. India has won 6 medals, including 4 golds on the final day of the Commonwealth Games in Birmingham and finished 4th in the final standings with a total of 61 medals. Indian tennis star Sania Mirza congratulated the country's contingent for their magnificent performance at the end of the Commonwealth Games in Birmingham. Former US President Donald Trump's residence in Florida was raided by FBI agents. Meanwhile, Trump called this an act of prosecutorial misconduct. Ukrainian President Volodymyr Zelensky called for sanctions on the Russian nuclear industry and nuclear fuel after an atomic power plant in Ukraine was shelled. UN spokesperson said that Ukrainians will continue to need aid. The noon briefing in New York showed an increase in financial requirements of Ukrainians. Taiwan's Foreign Minister Joseph Wu said that China aims to control the East and South China Sea via Taiwan Strait, while describing a greater ambition to upend the Asia-Pacific status quo and prevent nations from aiding the self-governing island. China launched its carrier rocket from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China today. China sent 3 satellites into the planned orbit, and the launch was the 3rd flight mission of the Ceres 1 rocket series. And big news coming in, a massive twist as far as the Shrikant Tyagi arrest goes. The police has exposed yet another link with regards to the stickers that were found on Shrikant Tyagi's vehicles that have been seized by the police. Now remember, Shrikant Tyagi and 3 other accused were brought to the commissioner office, and we just heard the UP police briefing as well there. Now the Noida police is informed that Tyagi got the MLA sticker on his car and it was procured via SP leader Swami Prasad Maurya. Let me go across to Priyank, who's joining us with more details. Among the several sensational details that were put out by the police, Priyank, just minutes ago, this one is big because the police made it amply clear that the MLA sticker that was recovered on his car, that was found on his car, was procured via Swami Prasad Maurya. What more can you tell us?
Yeah, certainly, and that clearly shows that he was getting a political patronage since long. As we know about the past of Shrikant Tyagi, he was arrested when he had a fight with his student, with another student at Amity University, and when he had gone to the jail, he met a few of the local Samajwadi Party leaders who were also in the other inmates, and since then his political association started. He was taking part in all of these rallies, whichever government used to be in power. Shrikant Tyagi used to make himself very prominent for those politicians. But the conduct of Shrikant Tyagi is clearly suggesting that he was behaving like a well-trained criminal. He was using these radio silence and electronic silence to avoid any kind of intercept from the Noida police official. He had changed 15 vehicles, and most of these vehicles has been recovered and seized by the Noida police officials. But what is more important as per this moment is that who were these people who were shielding him? What Noida police is saying that we have identified several individuals who were trying to shield Shrikant Tyagi, and they are also under the radar. Absolutely. Now, all throughout the investigations and before this big arrest took place, multiple questions were being asked by the opposition parties. They were basically pinning the blame on the BJP, saying there's a clear BJP link. But what does this particular evidence speak of, Priyank? What does it highlight? What do we make of, the kind of political patronage that was possibly extended to him? Is there a clear BJP link or a Samajwadi Party link? Because Swami Prasad Maurya was also earlier associated with the BJP. See, Christine, if you look at closely and the registration of all these vehicles, they were VVIP's number, and the sticker of Vidhan Sabha of Uttar Pradesh, Lucknow Vidhan Sabha, was also valid till 2023. So it's not quite possible that only BJP leaders who could have been associated with Shrikant Tyagi. See, we're talking about a henchman, a suspect who was working for various other political parties. His association initially started with Samajwadi Party, but till now we study the evidence clearly shows that the association has not ended, because the stickers will end, the validity of all these stickers will end on 2023. So that clearly shows that he was trying to show himself as a person who was close to the Bharatiya Janata Party by coming to the stage and getting his pictures clicked and using his for own benefit. On the other side, his association and the close tie-up with the previous regime government is also not being denied by the Noida police. They are saying that Swami Prasad Maurya was the one who had given him sticker. But if you look at the present now, 4 luxury cars have been seized. Let me take in a BJP reaction. I'll come back to you, Prank. We have Anila Singh joining us on this broadcast. Ms. Singh, what do you make of this? The police has said it in as many words that the sticker, the MLA sticker that was procured via the SP leader Swami Prasad Maurya has been recovered, has been highlighted. We've been putting out those visuals. Our reporters have been confirming the same to us. But it's going back to Swami Prasad Maurya as per the police. Shrikant Tyagi must have told the police that from where he got the sticker. He must have told them that Swami Prasad Maurya had given the sticker to him. So many more things will be revealed now. But I was very confident that under Yogi Sarkar, no such nuisance will be tolerated, and very soon he will be behind the bars. This is what has happened today. Police has grabbed him, and now he is behind the bar. But well, one can't deny his association with the BJP either, isn't it, Ms. Singh? Because, it's not just about the BJP flags that were seen on his car, but there is a clear BJP link to this man. The Bharatiya Janata Party is the largest party in the world. We have crores of workers in our party. If somebody uses Bharatiya Janata Party's flag, if somebody uses Bharatiya Janata Party's symbol, it doesn't mean that Bharatiya Janata Party gives that person class that you go and do nuisance, whatever you want to do, you go ahead and do it, because we are in power. At least Bharatiya Janata Party doesn't do that. And everybody knows the nature of Yogi Adityanath ji. Everybody knows. I don't have to pronounce this thing in my words, that what type of behavior. All right, I believe we have Swami Prasad Maurya ji joining us on the phone line. Thank you, Ms. Singh, for putting out your point of view. Mr. Maurya, all right, we don't have that line. Let me go back to
the BJP reaction. All right, let me stay on with Priyank. We'll try and pick up more political reactions because this is big news coming in at the moment. वहाँ पर सभी आते थे, तो भाजपा के लोग भी आते थे, तो स्वाभाविक रूप से एक मंत्री और एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि जो भी समस्या लेके आए, अपनी बात कहने आए, उसकी सुनी जाए, उससे मिला जाए। तो मैं तो सबसे मिलता हूँ और यही कारण है कि प्रतिदिन मेरे यहाँ हजारों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन वो घोषित पदाधिकारी किसान मोर्चे का पदाधिकारी रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने पाप की चादर को किसी और पर डालने की नापाक कोशिश कर रही है। क्या माना जाए आपके संबंध से उन्होंने कहा है कि श्रीकांत त्यागी ने आप ही के साथ भाजपा ज्वाइन किया था और आपके जाने के बाद भाजपा से उनका कोई नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी में पहले से भी थे और भारतीय जनता पार्टी सरकार में जब मंत्री तो मेरे दरवाजे सक्रिय खुले थे, वहाँ पर सभी आते थे, तो भाजपा के लोग भी आते थे। तो स्वाभाविक रूप से एक मंत्री और एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि जो भी समस्या लेके आए, अपनी बात कहने आए, उसकी सुनी जाए, उससे मिला जाए। तो मैं तो सबसे मिलता हूँ और यही कारण है कि प्रतिदिन मेरे यहाँ हजारों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन वो घोषित पदाधिकारी किसान वो मेरी परामर्श से किसने कहा? अरे हमने कह दिया भाई। Shrikant Tyagi thought his political connections could buy him immunity from the law. But when Times Now exposed his high-handedness, his arrogance crumbled. और ये देखिए बुलडोजर ने कार्रवाई शुरू कर दी है, तो पुलिस बल है वो यहाँ से मौके पर Your voice, your resolve, powered a memorable victory. Rousing welcome by the Tyagi is today in custody. His arrest is a tribute to what Times Now and you, that is us, can do together. Times Now. Action begins here. On to the big political story of the day. It's the ultimate U-turn by Nitish Kumar, though not unprecedented. This is yet another switch by Nitish Kumar from the NDA fold to the Mahagathbandhan, just like in 2015, except then he led the Mahagathbandhan and won the elections with the RJD and the Congress. Cut to 2022, Nitish Kumar was in withdrawal mode since a while now. It was for everyone to see. He has taken the final call now. He's decided to dump the NDA and join hands with the Mahagathbandhan. Today, all camps called a meeting of their respective legislators, and it's been a dramatic turn of events, one after the other ever since. Whether he remains a part of the BJP-led NDA or returns to the Mahagathbandhan, one thing was clear since the very beginning. Nitish Kumar is going to continue to be the Chief Minister either way. This gives a way to question that come to light. What does he stand from? What does he stand to gain from switching sides? But first, let's listen into what he had to say after submitting his resignation to the governor earlier today. लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की की ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। Moving on to the big explosive this evening, there are several key players involved in the political drama that is unfolding in Bihar. One such player who the JDU believes was responsible for its debacle in 2020 elections is Chirag Paswan. We have him with us on this broadcast, the president of the LJP. Mr. Paswan, now Nitish ji has decided to dump the BJP, but he also said he made a mistake to go with the BJP. What do you make of this statement of his? Well, he realizes his mistake every time. He realizes his mistake, but it's too late by the time he realizes that. Repeatedly, he has made mistakes.
repeatedly he has said something and he has done something. He is the same chief minister who came as an alternative to Jungle Raj, and he said this very proudly कि Jungle Raj को खत्म करना है ये, and eventually he joined hand with राष्ट्रीय जनता दल in 2015, and then he said this कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा. Eventually in 2017 he joined hands with Bharatiya Janata Party. Not only that, he contested Bihar Vidhan Sabha election and the Lok Sabha election with Bharatiya Janata Party. So a chief minister who doesn't even stick to his own words, I mean, you can hardly trust him now. He has lost his credibility absolutely. Well, now he's being projected as the prospective Prime Minister candidate as well by his very own. Tejashwi Yadav also, in fact, said that Bihar's done centers next. Is he the next big hope? What, in your view, is the JDU vision with regards to this? Well, he thinks so. He himself thinks so, and I think except him, nobody else thinks so. Someone who couldn't even deliver as a chief minister. He's aiming for the prime minister post, and it's not today, that he's thinking about that. He's been thinking to be the prime minister of the country for the longest time. And I said this way back, almost 2 years back, immediately after Bihar Vidhan Sabha election results. I said this, that very soon. All right, we'll have to cut it short and quickly cut across to live developments coming in. I believe Nitish Kumar is just about to speak. Let's cut across live. हमारे पार्टी और वही इस्तीफा देने के लिए हम गए या 3.5 हम लोग के पहले कोई आज एक साल इनके पास 5 पार्टियों की मीटिंग एक साथ हम लोग थे और जैसे ही हमने वहाँ त्याग पत्र दिया तो इनके यहाँ गए सब लोगों ने एक साथ और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो 7 पार्टियां एक साथ आप समझ लीजिए कि लोकसभा में 164 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट और हम लोग तो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया. हम लोग एक साथ मिल करके 7 पार्टियों ने जो हम लोगों का महागठबंधन है हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं सब लोग मिल करके और जितने विधायक सारे मतलब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट सभी लोगों का दस्तखत भी दे दिया गया है और बातचीत भी इतने देर से हो रही थी कि अब एक साथ हम लोग हैं तो गवर्नर साहब ने क्या आपने दावा पेश किया तो उन्होंने कब शपथ ग्रहण के लिए क्या तो वो तो वही नहीं करेंगे. हम लोगों ने कहा कि आप जल्दी से जल्दी करिए क्या आप लोग करेंगे. अब आपको ये सब बताया नहीं आपको हमने आपको बेसिक बता दिया उसका सब लोग बताएंगे आपको. एनडीए से बाहर निकलने की क्या वजह थी और महागठबंधन में जाने की क्या वजह? अरे भाई वो तो उसकी वजह थी आप तो खुद एक जगह गए वो का ट्रेनिंग लेने की तो और ना हमको पूरा एक्सपोज कर दिया कि जिस आदमी को कहाँ से कहाँ हम पढ़ाए और उसके बाद जो काम हुआ है आगे जो सब सूचनाएं मिल रही थी पार्टी के सब तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे नहीं कुछ करते और तब जाकर के मीटिंग और सब ये बात हो गई और तभी सब लोगों से बात हो गई और एक साथ अलग हो गए. वो ठीक नहीं हुआ समझ गए ना. आपको अपमानित भी किया गया आपके खिलाफ साजिश रची गई वो क्या अब क्या क्या कौन रहते हो सब छोड़ दीजिए ना हमको कुछ नहीं कहना है लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग अब सोच न लीजिए भाई उधर 3 पार्टी अब 2 पार्टी इधर 1 पार्टी इधर 5 पार्टी और सब मिलकर 7 पार्टी एक साथ हो गए. ये बताया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं.
बिहार का एजेंडा क्या होगा? बिहार का एजेंडा क्या होगा? बिहार का है बिहार की सेवा करना, हम मिल करके काम करना, सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे। और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी शुरू, वो हमको अच्छा नहीं लगता था। आप अच्छी तरह जानते हैं ना, आप तो एक बार 17 में हुए थे, 17 के लस्बा में आए न थे। हमने तो कहा ना कि हम सब कोई चीज जो कहीं कुछ करेगा गड़बड़, जो कुछ होता है विभिन्न धर्म के लोगों का, तो वो सब हम लोग नहीं करते, वो सबका एकता रहनी चाहिए। आप तो जानते हैं जो परिस्थिति बन रही थी उसको लेकर के अच्छा नहीं लगा। और जिस तरह से बात इतना मेहनत कर रहे और कई तरह की बातें की जा रही थी, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। हम तो तैयार कहाँ, जब आपको इतना कम सीट हो गया और हम तो नहीं तैयार थे। हम तैयार उन लोगों के बार बार आग्रह पर हम हो रहे, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का जो अनुभव हो गया, और अपने हम तो चुपचाप थे। अब पार्टी के सब लोग धीरे धीरे कहने लगे और कह दिए, तब सब लोगों से बातचीत हो गई और हो गया कि भाई आपने कहा था कि भ्रष्टाचार से और नेपोटिज्म से समझौता नहीं करेंगे। सवाल ही का सवाल ही नहीं पैदा होता है, शुरू से कभी नहीं होने दिए हम लोग। और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। और किसी तरह के भ्रष्टाचार को हम लोग स्वीकार करते हैं, हर तरह से काम करते हैं। वो सब लोग मिल के अब हम लोग करते ही रहेंगे, कोई चिंता मत करिए। और आगे क्या होगा, अब हम लोग सब एक साथ रहेंगे और दूसरे राज्यों में भी जो कुछ भी करना होगा करते रहेंगे। सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? कोई नहीं। एक मिनट बात सुनिए। अच्छा, काफी देर से मुख्यमंत्री जी अपने बात को रख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पे बताया कि पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा, बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा, एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। लेकिन जो देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो सांप्रदायिकता जिस प्रकार से फल फूल रही है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय पे हमला हो रहा है, उसको देखते हुए, देश के माहौल को, स्थिति को देखते हुए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लीजिए, चीन घुस करके घर बना लिया, गांव बसा रहा है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो पूरी चीजों को देखते हैं। और आज का तो दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और महत्वपूर्ण दिन क्या है कि आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। तो आज बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है, देश को संदेश दिया है, टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है,
वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है और जनता विकल्प चाहती है। आप देख लीजिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काम किया, कई प्लेटफॉर्म पे इन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने पटना यूनिवर्सिटी की मांग की, लेकिन मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी को उसका दर्जा नहीं मिला अब तक। विशेष पैकेज का क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं से हर एक तरीके से बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तौर पे, तो ये बीजेपी जो करता है उसका एजेंडा फिक्स है। और जेपी नड्डा जी ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ आकर के बोलते कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे, विपक्ष को समाप्त करेंगे मतलब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। यानी लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे। ये हमारा दायित्व है सबसे पहले देश के संविधान को बचाना। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आप बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी झारखंड में क्या हो रहा है नहीं पता, महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं पता। तो इसलिए सभी लोगों ने आज हमारे यहाँ 5 दलों की बैठक हुई महागठबंधन की और हमको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। तो हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए। तो इसलिए, और हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? ये हमारे पास रहेगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि बीमार अवस्था में भी जो है, जो उनका भी जो निर्णय है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास जब प्रस्ताव गया तो उनसे जब हम लोगों ने बात की, पार्टी के लोगों ने बात की, क्योंकि हर एक लोग, बिहार की जनता, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक, सब लोग चाहते थे कि जो किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत में ना झुकने को तैयार है ना डरने वाले हैं, जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े। तो इसलिए हम पुनः मुख्यमंत्री जी को अरे भाई हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। अभी समय क्या है, समय क्या था? 2024 के लिए नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार आपको दिख रहे हैं? देखिए मुख्यमंत्री जी ने तो देखिए, जब हम लोगों ने जाति जनगणना के बारे में बात की, थोड़ी सी भी देरी नहीं लगाई और 2 बार जो है उस समय तो भाजपा के लोग ही जो है पूरी तरीके से अध्यक्ष थे उस समय के विधानसभा के चौधरी विजय चौधरी जी, इनके ही अध्यक्षता में 2 बार पारित हुआ। तो उस समय भी आप बीजेपी का रोल देख रहे थे क्या था? यानी जो नेशनल इंटरेस्ट का जो एजेंडा था उसमें भी कितने इनका तो मूड क्लियर था। क्या पीएम मटेरियल आपको दिख रहा है? पीएम के लिए आपके दावेदार मानते हैं? आप एक बात समझ लीजिए, ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है, सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। नरेंद्र लोग तो प्रचार का काम कर। नरेंद्र मोदी को क्या नीतीश जी दे सकता है चुनौती?
बिना इंटरेस्ट के, और ये कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, ये बिहार का इंटरेस्ट है, बिहार के नौजवानों का इंटरेस्ट है। इसलिए 10 लाख जो रोजगार देने की बात किए थे, क्या आपकी सरकार ने हम लोगों की बात चलेगी? अभी तो 10 लाख नौकरी, एक बार तारीख तो तय हो जाने दीजिए, 10 लाख तारीख तय हो जाने दीजिए, जनता के दुख दर्द को दूर किया जाएगा। सर एक बार भिक्की दिखा दीजिए, सर एक बार भिक्की, सर एक बार भिक्की, सर एक बार भिक्की, The Mahagathbandhan is back in Bihar. They've met the governor, given him a letter of signed by 160 MLAs, Swati, and look at the U-turn, not just by Nitish Kumar but also by Tejashwi Yadav. Till about 48 hours ago, Tejashwi Yadav was leading a protest march, Pratirod Yatra, if I'm not wrong, against Nitish. Today he says he is the best we have, the most experienced chief minister. Absolutely, and very importantly, he is also saying that this decision is in fact sending out a message to the entire opposition कि अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपकी जीत भी होगी. Well, let's move on and Pranesh, we have Chirag Paswan. He continues to be with us on the broadcast. Thank you for waiting with us, Chirag Paswan. Now, Nitish Kumar is being projected as a prospective Prime Minister candidate by his very own, by the opposition. Tejaswi Yadav also, and we just heard, has endorsed that. Is that going to happen? Do you think that is possible, that the JDU and Nitish Kumar in fact will be supported by the opposition when it comes to that? Well, he thinks so. He himself thinks so, and I think except him, nobody else thinks so. Someone who couldn't even deliver as a chief minister, he's aiming for the prime minister post, and it's not today, that he's thinking about that. He's been thinking to be the prime minister of the country for the longest time. And I said this way back, almost 2 years back, immediately after Bihar Vidhan Sabha election results. I said this, that very soon Mukhyamantri ji will be leaving this alliance, and he'll go with Mahagathbandhan, because eventually he wants himself to be projected as a prime ministerial candidate from the opposition in 2024 general election, and he knows that there's hardly any vacancy in NDA for 2024 general election prime ministerial candidature. So yes, I mean, he's been aiming for this for the longest time, and today whatever that has happened in Bihar is because of that only, is because of his aims and ambitions. Chirag, allow me to ask you this. Don't you find it strange that the third largest party gets the CM seat again? All in all, it seems a good deal, isn't it, to be the third largest party yet have the CM seat? Interestingly, he has never been elected as chief minister, with JDU being elected the single largest party, yet he has made his way to the CM's chair time and again. Eventually this is what he works towards always, to make sure that he cracks the best deal. And whatever times that he takes to make these announcements is because he's cracking these deals, Whether he's with Mahagathbandhan, he'll be the chief minister. Whether he's with NDA, he'll be the chief minister. Whether he's with Mahagathbandhan back, again he'll be the chief minister. Whether he's the largest party, he'll be the chief minister. Whether he's the number 3rd party, still he'll be the chief minister. So all that he has ever worked towards is to make sure that how can he be the chief minister, and how can he continue to be the chief minister. That is his only priority. That is all he works towards. Right. So if that is his only priority, he was made the chief minister by the BJP. So what really was the problem according to you? Why was Nitish Kumar so angry? Well, I think you should ask him only why is he so angry. Repeatedly he got whatever that he wanted. Still, if he is angry, I mean, no one can satisfy him then. Having said that, as a chief minister, rather than being angry and rather than thinking about himself and his chief ministerial post, I think this was the time when he should have been thinking about Bihar and Biharis. My state is going through drought. I mean, needless to say, berozgari, mehengai is at its peak. So these were the issues that he should have been tackling instead of thinking about his chief ministerial post and getting angry about ye nahi hua and wo nahi hua. But Chirag, I have another question for you. You are the bone of contention too. आपने मोदी का हनुमान बनके उनके लंका में आग लगा दी. It has been an unpleasant exchange ever since. Well, I take
take a pride, when they say this, that because of me, they lost elections. I definitely take that pride. Having said that, with utmost humility, I accept the fact that yes, because of Chirag model, because of Chirag Paswan, Janata Dal United was reduced down to number 3 position. More than half of their candidates, they lost their election. It was because of Chirag Paswan. It was because of Chirag model, and it was because of Chirag model that the Janata rejected Nitish model and he became so weak. Right, Mr. Paswan, now sources are suggesting that Nitish Kumar will continue to be the chief minister for the next couple of months and then he will hand over the reins to Tejasvi. Do you think this is going to work out in terms of stability? Well, not at all, not at all, not at all. Very soon we'll see another fallout, and as I told you, it's always because of Mukhyamantri Nitish Kumar ji's ambitions. His ambitions are so high. Very soon because of that you'll see another fallout, another breakup. Thank you. All right, Chirag Paswan, thank you very much for joining us. He says once again and very soon we'll see another fallout. So he believes this is also not stable. Pranesh. He says this won't last. Let's open this up. Swati Shekhar Iyer, senior journalist, Piyush Tripathi, Chief of Bureau of the Times of India, Mohammad Nematullah, senior leader of the JDU, and Faiz Siddiqui, spokesperson of the HAM party. Mohammad Nematullah, what do you make of what Nitish and Tejasvi have said? सारे पुराने बातें को भूल गए हैं वो? जाहिर सी बात है, कोई गिला शिकवा नहीं है, एक साथ आ गए हैं, चचा भतीजा की बात है, आपस में थोड़ी खटपट होता है, एक घर में होता है, ये तो एक पार्टी है, 2 पार्टी के नेता है, शीर्ष नेता है, और नीतीश कुमार ने का जो नाम है पूरे देश में और जिस तरह से बिहार में एक अपना छवि बनाया है पूरे काम के जरिए, उसमें माइनस नीतीश कुमार कोई यहाँ राजनीति नहीं कर सकता। सही कौन थे? लालू जी कह रहे थे कि ये पलटू राम है, ये सांप है, अभी तेजस्वी कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस सीएम है। देखिए, तेजस्वी से सही कह रहे हैं कि सबसे एक्सपीरियंस, सबसे अनुभवी, सबसे नॉलेजेबल, मेहनत करने वाले, इनका जनता में छवि है, अपने आप में एक अहमियत रखने वाले नेता है, शीर्ष नेता है, ये एक पीएम मटेरियल भी है, लेकिन कभी ख्वाहिश नहीं किया कि हम पीएम के कुर्सी पर जाएं। नहीं, एक बार विपक्ष ने कोशिश की थी उनको प्रोजेक्ट करने की और उसी वक्त वो यू टर्न हुआ था। एंड शेखर अय्यर इज विद अस। शेखर अय्यर आपको बताएंगे कि जब ऑपोजिशन ने प्रोजेक्ट किया था उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, ओपनली नहीं, ऑफिशियली नहीं, शेखर अय्यर, यू नो दैट देयर वर टॉक्स गोइंग ऑन एंड देन देयर वाज अ सडन यू टर्न, बीजेपी फोल्ड में शामिल हो गए, अब वापस आरजेडी के साथ। क्या इतनी रिलायबिलिटी है नीतीश कुमार की पीएम मटेरियल, आपको लगता है? नहीं, पीएम मटेरियल की बात तो सुनकर आपको याद होगा, नालंदा से उनके साथ पटना तक पी चिदम्बरम उनके साथ ट्रैवल किए, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था कि 2014 में आप एक पीएम के कैंडिडेट बन सकते हैं। इसी बात पर तो उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ के आया। और आज बड़ी दिलचस्पी बात है, अगर आप देखेंगे नीतीश जी खुद ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब कुछ तेजस्वी जी बोल रहे हैं। और ये जो बात कि सारे हम सब सामाजिक न्याय वाले हैं, इसीलिए हम सब इकट्ठे आ रहे हैं, हमारे घर में लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये बार बार हम सब सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उसी बात को ज्यादा तेजस्वी बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि नीतीश के पास ऐसा कोई बड़ा कंप्लेंट नहीं है बीजेपी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ बोलने के लिए। उनको यह डर था, देखिए इसका थोड़ा बैकग्राउंड है, उनको लग रहा था कि आने वाले दिनों में बीजेपी कुछ कर सकती है उन पर, क्योंकि बीजेपी ने एक सर्वे किया था, उस सर्वे के अनुसार उनका जो फीडबैक मिल रहा था बिहार में, नीतीश जी का जो पॉपुलैरिटी पहला जैसा नहीं था और उनकी कार्यशैली, उनकी जो पहली जो रिकॉर्ड थी सुशासन बाबू, वो बरकरार नहीं है अभी वो इमेज। इसलिए उनको यह डर था कि बीजेपी खुद पहले कुछ ना करे, उससे पहले हम कुछ कर दे। इसीलिए उन्होंने जिस तरह किया है, अगर आप देखेंगे नीतीश जी खुद कुछ बोलना नहीं चाहते, तो बार बार यही कह रहे हैं कि 7 लोग इकट्ठे आए, बस यही बात छवि बचाने के लिए, और चिराग पासवान कह रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए, हमेशा इसी जुगत में रहते हैं। देखिए, चिराग पासवान ने तो जो करना था कर लिया इलेक्शन में, और ये बीजेपी ने दूसरा चिराग पासवान खड़ा कर रहा था हमारे यहाँ से ले जाके, और उस जिस तरह से साजिश रची जा रही थी हमारे एमएलए को तोड़ने करी, हमारे पार्टी को बर्बाद करने के लिए, और इनके अध्यक्ष आए यहाँ नेशनल एग्जीक्यूटिव के मीटिंग में और कहा जाए क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी, क्षेत्रीय अब सिर्फ इन्हीं की एक पार्टी रह जाएगी, ये डिक्टेटर बन के रहेंगे,
और सारे इस पार्टियां तो ये समाप्त आपको हो जाएगी। कल पता चला नेमतुल्ला जी, नहीं, कल तक पता ये चला आपको ये नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं, चल रही थी एक तरह से। फैज सिद्दीकी जो स्पोक्स पर्सन है हैम पार्टी के, उनसे मैं सवाल लेता हूं। सिद्दीकी साहब ये बताइए कि नीतीश इज फेसिंग क्रेडिबिलिटी इशू। 2022 में अगर क्रेडिबिलिटी पे सवाल है तो 2024 में वो पीएम की दावेदारी कैसे करेंगे, पीएम पद की दावेदारी? नहीं, बात उनके क्रेडिबिलिटी की कहां है? मतलब जो बिहार में अब तक चल रहा था, इट वॉज रियली नेसेसरी फॉर जेडीयू टू टेक दिस डिसीजन. As Mr. Nitish Kumar was suffering every day, he was suffering BJP as all Indians are suffering. उसी तरीके से नीतीश कुमार भी लगातार सफर कर रहे थे बीजेपी को। बीजेपी वेरी फर्स्ट डे से, इनफैक्ट ये डिसीजन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वेरी फर्स्ट डे यही बोल रहे हैं, लेकिन डिसीजन लिया नहीं। यू नो बेस्ट व्हाई द डिसीजन वाज डिलेड. वेल, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम. आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस. अ शॉर्ट ब्रेक, लॉट्स मोर लाइंड अप ऑन द अदर साइड. प्लीज स्टे विद टाइम्स नाउ. Fact of the matter is, whether it is imported inflation, whether it is tinkering of GST for a longer period, the fact is that the burden is on the common man, and the common man frankly doesn't really care about what's happening in the United States or the UK or Russia or Ukraine. They're worried about their day-to-day living and per capita incomes where they are in India. The pressure is as much, magnified on common people in this country than they are abroad. And of course, you have social security systems which exist abroad, which don't exist in India. So I come back to asking you the same question. Is the government really being rather hard-hearted when it looks at these issues? After all, running a country of the kind that India is, with poor middle classes, lower middle classes forming the bulk of the population, do you think the government is doing enough to cushion the impact on these classes of people? So let me say that as a policy maker, one has to make various trade-offs. So first of all, let me be clear that the government is fully cognizant of the spike in inflation. Otherwise, you wouldn't have seen the measures we have taken, including the Reserve Bank tightening monetary policy. So clearly, the tightening of monetary policy is one response to bringing down inflation. But do remember that this is a trade-off, because if you do tighten monetary policy too fast, too quickly, yes, it will bring down inflation, but then it will slow down growth, it will slow down incomes and so on and so forth. So there is a balancing act that has to be done. Ultimately, what do we want to do? We want to increase as far as possible the trajectory of welfare and real incomes. And in that context, we have to trade off between growth and inflation. So the trade-off that we are making right now is, rather than tighten so harsh that growth slows down, we are tightening somewhat, but not so much that growth slows down too much. So keeping GDP growth going, create jobs, which is an important question, which I hope we will come to later on. These are issues that are also foremost in our mind. So given this balance we have done, I think the Reserve Bank's response is the correct one for this point in time. Well, Sanjeev Sanyal, governments are not necessarily only policy makers. They are also political entities, and you understand politics as much as anybody else. I want to ask you a simple, straightforward question that is... I am a policy... Wait, no. I cannot answer any questions of... Escape the long hands of law, and Shrikant Tyagi's arrest proves that. After abusing and assaulting a woman, Tyagi tried to escape. He thought his VVIP status would shield him. He thought he was above the law and escaped to Meerut, where he ran out of luck. All of the VVIP arrogance crumbled, and VVIP arrogance is now under arrest. But Swati, there's a political twist to the story, and the twist was confirmed by Noida top cop when he said that the sticker, the Vidhayak MLA sticker that you see on Tyagi's car, that Times Now exposed, that stickers were procured through SP Neta Swami Prasad Maurya.
व्हीकल्स जो इसने इस्तेमाल करे थे वो बार बार बदले। इसके द्वारा एक व्हीकल पर, जैसा आपने सुबह से देखा भी है, एक विधायक का स्टिकर भी लगाया हुआ है। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है, जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। But when Swami Maurya Swati was confronted with this direct question, he rubbished all the allegations. बहुत से बड़े माफिया 420 धोखाबाज उत्तर प्रदेश में अभी भी सुरक्षित हैं, सकुशल हैं, सम्मान के साथ रह रहे हैं। वहाँ तक कोई काश्मीर तक नहीं पहुँचा और राजनीतिक बदले की भावना से ये अगर विरोधी पार्टी का है तो उसका घर भी बुलडोजर से गिराया जाता है, फर्जी मुकदमे लगा के उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। जो सही वांछित अपराधी है उस पर सरकार की मेहरबानी रहती है। यही कारण है कि 4-4, 5-5 दिन से मीडिया की सुर्खियों में रहने वाला व्यक्ति अभी भी कानून को धत्ता बता करके बच रहा है। इसका मतलब भाजपा मेहरबान है। Tyagi has been nabbed, but now the SP link has come under the scanner. We'll keep on tracking the story and all the reactions. For now, a quick break.
You're watching The Nation Wants to Know with me, Padmaja Joshi. This is the top 50 at 7. It's official. Nitish Kumar calls off his alliance with the BJP, meets governor, submits resignation from CM post, says the decision was unanimous. In a massive political gesture outlining the RJD-JDU alliance, Nitish Kumar went to Rabri Devi's residence soon after resigning. Decision comes after a meeting with party MPs and MLAs at his residence. The political rift intensified after Nitish skipped a key meeting of Niti Aayog. RJD leader Tejasvi Yadav held a meeting with party leaders on Bihar political crisis, says we will not be scared by the BJP. Nitish Kumar Tejasvi met in Patna to discuss power sharing formula. Sources suggest that it will be Nitish who will be chief minister, Tejasvi to be deputy CM, Congress also to be a part of the alliance along with 3 other parties. Celebrations begin in Lalu Parivar. A family credits Kingmaker. Daughter tweets Kingmaker on Lalu's image. Other parties also agree to support the Nitish Kumar government. Congress, CPI, CPI-ML and the Hindustani Awam Morcha. BJP chairs meeting at Deputy Chief Minister Tarkishore Prasad's residence. Senior leaders from Delhi also rush to Patna. Sanjay Jaiswal, Bihar BJP chief, says Nitish Kumar has betrayed the people's mandate. He was made CM despite having lesser seats than the BJP. BJP rejects JDU National Chief Rajiv Ranjan Singh's allegation of a plot to weaken the JDU in a veiled attack against its major ally. Singh said that there was an effort by the BJP to weaken his party. After giving outside support, CPI-ML leader Dipankar Bhattacharya says BJP's dream of turning India into a BJP-ruled country for the next 40 years has run into rough weather. RJD likely to extend support to Nitish Kumar. No differences on allotment of portfolios. Union Minister Pashupati Paras speaks to Times Now, says party will be staying in the NDA. Chirag Paswan tears into JDU, says Nitish is concerned only about the PM's post. He will lead to the ruin of JDU. Congress leader Rajya Sabha member Jairam Ramesh hits out at BJP, says the Bihar political crisis is symptomatic of what goes up will come down. Akhilesh Yadav speaks to Times Now, says Nitish is a senior leader and that on the day of Angrezo Bharat Chodo, on the day that slogan was given, BJP Bahar Niklo slogan has come from Bihar. Taking a veiled dig at the BJP, CPIM West Bengal Secretary Mohammad Salim says BJP will now try and use the CBI and ED in Patna. Meanwhile, Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde expands his 2-member ministry. 41 days after taking oath as CM, 18 legislators, including BJP President Chandrakant Patil, were sworn in as cabinet ministers. Supriya Sule expresses disappointment over no berths given to women in the Council of Ministers so far. Shinde slammed over inclusion of 2 controversial ministers in the cabinet, outcry against Sanjay Rathore and Abdul Sattar. Maharashtra BJP Women's Wing leader Chitra Wagh slams inclusion of Sanjay Rathore. Wagh said that her fight against Minister in Pooja Chauhan's death case will continue. Maha Minister Abdul Sattar alleges a plot to defame his family and him. He called out the conspiracy against him just before cabinet formation, says I'm ready for an inquiry. Noida police finally arrested Shrikant Tyagi, the man who was seen on camera abusing and pushing a woman. He was caught from Meerut. Shrikant Tyagi revealed about the VVIP MLA sticker on his vehicles. According to Tyagi's statement to police, the sticker was given by Swami Prasad Maurya, who has now left the BJP. PMC MLA Idris Ali's house in West Bengal's Murshidabad district vandalized by his own party's workers who accused him of taking money to allot posts in the organisation. Kerala Governor Arif Muhammad Khan has sought a report from Kannur University Vice Chancellor over alleged irregularity in appointment of Dr. Priya Varghese, Associate Professor in Malayalam Department. CM writes to Kerala Chief Minister and assured that the Mullai Periyar Dam, in fact MK Stalin writes to the Kerala Chief Minister, assured him that the Mullai Periyar Dam is safe and reiterated that dam management team is focused on precautionary measures. Former Lieutenant Governor Anil Baijal says Deputy Chief Minister Manish Sisodia trying to file an alibi for his old colleagues' acts of commission and omission. Aam Aadmi Party has filed an application in the Supreme Court opposing the PIL against political parties promising to distribute freebies during election campaign. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav upped ante against the BJP, alleged the Saffron Party had supervised illegal sale of land in Ayodhya and that 3 of the BJP leaders were also involved. Telangana BJP leader Yanendra Prasad was found dead at his residence. A team was dispatched to the spot as soon as information of the death was received.
TMC Birbhum District President Anubrata Mandal has been summoned by CBI again in connection with illegal cattle smuggling case. Congress star campaigner Mirchi Baba was arrested for rape. Joint action of Bhopal Police and Gwalior Crime Branch Police from a hotel in Gwalior, after which he was taken to Bhopal. An incident of theft was reported from a temple in Madhya Pradesh, Jabalpur, where bizarrely the man first bowed before the deity before stealing valuables worth 25,000. An all-woman troop of ITBP completed a patrol at Uttarakhand borders ahead of the 75th Independence Day. The special patrol was called Azadi Ka Amrit Mahotsav. 7 people were injured after a high-tension wire fell on a procession in Vaishali district. According to the police, all injured have been taken to Sadar Hospital. Met Department has issued a warning of intense to very intense spell of rain with gusty winds in Maharashtra's Mumbai, Navi Mumbai, Thane and Palghar. In a swiftly coordinated operation, the Indian Coast Guard ship rescued 2 fishermen from a sinking fishing boat. The owner of the fishing boat approached the Coast Guard district headquarters. A huge landslide occurred near the waterfall at Kokal Khet of Pithoragarh district. The country has seen a dip in daily COVID cases with more than 12,000 fresh COVID cases and 42 deaths in last 24 hours. Positivity rate stands at 3.5%. 19-year-old weightlifter Jeremy Laranunga was accorded a hero's welcome by Mizoram Sports Minister. He won a gold for India in Birmingham Commonwealth Games. Athlete Eldos Paul reckoned that Neeraj Chopra's gold medal winning performance in Tokyo Olympics last year has changed the mentality of Indian athletes among people. Laksha's celebration grabbed attention of people after his return back to India. India has won 6 medals, including 4 golds on the final day of Commonwealth Games this year, and has finished 4th in the medal standing. Indian tennis star Sania Mirza congratulated the country's contingent for their magnificent performance at Commonwealth Games. Former US President Donald Trump's residence in Florida was raided by the FBI. Meanwhile, Trump said this was prosecutorial misconduct. Ukrainian President Volodymyr Zelensky called for sanctions on Russian nuclear industry and nuclear fuel. A UN spokesperson has said that Ukrainians will continue to need aid. The noon briefing in New York showed an increase in financial requirement of Ukrainians. Taiwan's foreign minister has said that China aims to control the East and South China Seas in the Taiwan Strait. And China has launched its carrier rocket in northwest China, sent 3 satellites into planned orbit. In yet another stunning switch, Nitish Kumar is back with the Mahagathbandhan. He decided to leave the side of the BJP and called it a big mistake. He submitted his resignation to Governor Phagu Chauhan and also staked claim to form the government. Sources are telling Times Now that the swearing in could happen as early as tomorrow itself, which means that this is the second time in 8 years that he has dumped an alliance partner and switched back to someone else. In fact, he said that in a meeting, more than 25 JDU MLAs asked Nitish Kumar to part ways with the BJP, saying that the Saffron Party had used the JDU for the 2019 Lok Sabha elections. लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। Now, while the BJP has called it a betrayal, the decision has brought much cheer in the opposition camp. From TMC to Samajwadi Party, political leaders welcomed this as a big slap in the face for the BJP, who thought that they would have an opposition Mukt Bharat before 2024. आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं।
अब उस व्यक्ति के बारे में यह कहना ठीक है कि राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से चीजें होती हैं। आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। नहीं, मैं मानता हूं कि वो काबिल आदमी है, तो यदि सारे अपोजिशन के सहमति से वो बनते हैं तो सबसे काबिल आदमी है वो। तो लोग मांग कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। ये अच्छी शुरुआत है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं, उनके बारे में क्या कहना, वो बिहार और बिहार के गणित को बेहतर समझते हैं। ये उनके अपने फैसले हैं। गठबंधन में क्या तय होता है, क्योंकि गठबंधन जब बनता है तो बहुत सी चीजों पर मिलजुल करके फैसला लेते हैं। So it's almost like a booster dose has been received before 2024, but the BJP, which was now the second largest party among all who were in the Bihar Legislative Assembly, had an emergency meeting. Its top leaders flew down from Delhi as well. You can see, in fact, Union Minister Giriraj Singh, Nityanand Rai, Ravi Shankar Prasad, all of them flew down in the evening, and they held a meeting with the state BJP legislature party. They say that not only has Nitish betrayed the mandate given, but he's also betrayed the people of Bihar. 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत हम सबों ने चुनाव लड़ा था, और जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया, और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है, और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। को जस्टिफाई करेंगे ये हमारे समझ में नहीं आती है बात। ये ऐसे पार्टी के साथ जाना जिसको कि इन्होंने कई बार कहा कि भ्रष्टाचार का पर्याय है, ये जिसको कई बार इन्होंने कहा कि ये साहब बिहार को डुबा दिया, ये इस पार्टी ने पुनः पहले उस पार्टी में गए, उसको छोड़ करके आए, हम लोग फिर जा रहे हैं वापस। माननीय नीतीश कुमार जी संपूर्ण जीवन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे और आज फिर कांग्रेस के साथ जुड़ गए। यह कतई उचित नहीं है। बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था 2020 में, उस मैंडेट के साथ धोखा हुआ है। यह एक नैतिक लड़ाई है। इस नैतिक लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता के साथ मिलकर लड़ेगी। So is this a boost or a betrayal? Let me take that across to the panel. Joining us now, Rameshwar Chaurasia, spokesperson of the BJP, Sanjay Saraf, national spokesperson of the RLJP, Intikhab Alam, member of the AICC. But my first question is to Subodh Kumar, leader of the JDU. Mandate था नीतीश जी और मोदी जी का साथ में, तेजस्वी जी के साथ सरकार कैसे बना ली? सुबोध जी। इसके लिए तो बीजेपी वालों को सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से उन्होंने विट्रे किया नीतीश कुमार जी को। अगर आप देखें, पहले दिन ही जब चुनाव हुआ था तो चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान जी को यूज किया गया और चिराग पासवान जी ने जिस तरीके से स्ट्रैटेजिकली कैंडिडेट्स को फिल किया और सबने अल्टीमेटली जेडीयू का वोट, जितने भी उनके कैंडिडेट्स थे, बीजेपी के वोट्स को उनके रैंक एंड फाइल में मैसेज पर्कोलेट किया कि ये बीजेपी का कैंडिडेट है ये चिराग पासवान जी का। और अल्टीमेटली बीजेपी वालों का नंबर बढ़ा, चूंकि हमने पूरी मदद किया उनको। और हमारे ये जो बिट्रेयल बीजेपी ने आपके साथ किया चिराग पासवान के द्वारा, वो तो 2 साल पहले हुआ ना, तो आपने सरकार क्यों बनाई? जिसने आपको धोखा दिया चिराग पासवान का इस्तेमाल करके 2 साल उनके साथ क्यों रहे? दिस वाज द आयरनी ऑफ दिस अलायंस, बिकॉज सिंस द बिगिनिंग दे वर बिट्रेइंग अस एंड वी वर फीलिंग द बर्न
And if you remember, तो आप एक बिट्रेयल और बर्न वाले अलायंस में 2 साल कैसे रह लिए? नहीं, हमने चाहा, we tried our best, level best to come in. We requested the central leadership of BJP to take care of their leaders in Bihar, but they never. नहीं, पर आप कह रहे हैं कि लीडरशिप तो बिहार में बीजेपी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो आपके साथ कैबिनेट में बैठते थे। प्रॉब्लम आपको चिराग से थी। चिराग की सच्चाई तो आप चुनाव नतीजे आते आते जान चुके थे, तो फिर सरकार क्यों बनाई? नहीं, मैंने पहले बताया आपको कि ये इलेक्शंस में ही बहुत ही हमारे साथ बिट्रेइंग हुआ था, हमारी बैकस्टैबिंग हुई थी। और उसके बाद जब हमारी सरकार बनी, किसने बिट्रेल किया? We had not the number. Our leader just asked BJP leadership to decide to fill their own leadership for the post of central chief minister. I'm not confused. Who betrayed you? नहीं, हमने कभी नहीं किया, बीजेपी वालों ने हमें बिट्रे किया। बीजेपी ने आपको बिट्रे किया कब? हाँ, पहले से ही, पहले दिन से ही, जब से इलेक्शंस में अलायंस हुआ, हमारे अलायंस हुआ, और जिस तरीके से चिराग पासवान को इन्होंने प्रॉपिंग किया, जिस तरीके से चिराग पासवान के लिए इन्होंने फेवर किया, और रैंक एंड फाइल में बीजेपी वालों ने इलेक्शंस में जिस तरीके से काम किया, इट वाज क्लियर मैनिफेस्टेशन दैट इट वाज द अंडर द इंस्टिगेशन ऑफ द। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। सेंट्रल लीडरशिप आपके पास तो ना नंबर थे, आप नंबर 3 की पार्टी थी, ऊपर से बीजेपी ने धोखा भी दिया, तो फिर आपने सरकार क्यों बना ली? नहीं, आपको तो ऑपोजिशन में बैठना चाहिए था। एक धोखेबाज के साथ सरकार में बैठना कैसे गवारा हुआ 2 साल? नहीं, हम नंबर 3 क्यों हुए? क्योंकि हमने तो, हमारे वोट्स तो ट्रांसफर हुए, लेकिन बीजेपी के रैंक एंड फाइल ने हमारा खिलाफत किया, और उनके वोट जो थे चिराग पासवान जी को मिल गया। तो रामेश्वर चौरसिया जी, देखिए, आप पर नीतीश जी और जेडीयू ने गूगली कर दी। 2 साल आपके साथ भी रहे और अब धोखे का बदला भी ले लिया। रामेश्वर चौरसिया जी, देखिए, शायद इनको जानकारी नहीं है ये, और बोलने को इनके पास कुछ नहीं है, और बोल रहे बीजेपी ने बिट्रे किया, चिराग का नाम ले रहे हैं। चिराग की पार्टी को तो आपने तोड़ ही दिया। मैं एक इनसे पूछ रहा हूँ, आज कह रहे हैं कि 43 पर बनाया, ये भूल गए कि जब 2000 में सरकार बनी थी तो बीजेपी के पास 67 सीट थी और उनके पास मात्र 33 था। उसके बाद भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया था बीजेपी ने। उस समय भूल गए कि इतने कम पर भी हमने सीएम बनाया था। अभी किन कारणों से ये कम आए, तो अपनी कमजोरी की तरफ देखने की जरूरत इनको है, तो दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। चिराग का मामला तो कब इन्होंने उठाया, कब वो मामला, वो इशू समाप्त हो गया। आज की परिस्थिति में सही सरकार चल रही थी, तो क्या जरूरत थी? हमने तो वापस नहीं लिया, बीजेपी ने तो वापस नहीं लिया। अभी हमारे नड्डा जी वहां गए थे, उन्होंने बोला साफ साफ, हमारे गृह मंत्री जी जब पटना में थे, साफ साफ मंच से बोला कि 2025 तक नीतीश कुमार जी सीएम बने रहेंगे। हमारे तो किसी ने नहीं बोला है, इनके लोग बयानबाजी करते थे। सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग है, आपके पास आ जाएगी सब सूचनाएं। अच्छा, सारी सूचनाएं आपके पास आ जाएंगी, किस तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड हुआ। अगर आपके ही लोग, अगर आइए देखिए, हवा में बात मत कीजिए। आपका आदमी आपको फोन कर रहा है, जो आपको जानता है, आपका अध्यक्ष रहा है, तो इसका ब्लेम आप बीजेपी पर क्यों दे रहे हैं? अभी तो कोई सामने आया नहीं है, हवा में बोलने के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं। ये गठबंधन तोड़ने का तो मामला नहीं था। देखिए, एक बात आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को जब सहूलियत होती है वो पाला बदलते हैं। अभी तो पाला बदलने का समय ही नहीं था। हमारे पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया था कि 25 तक रहेंगे। अब बिहार की जनता कैसे नीतीश कुमार जी पर भरोसा करेगी कि जो आदमी कहता है? आप बताइए, जिस जंगल राज के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चला था 2000 में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यात्राएं निकाल थी, सारा प्रबंधन बीजेपी का था, उसी के जंगल राज के खिलाफ नीतीश जी बोलते नहीं थकते थे। और अभी देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ 17 में भी अलग हुए थे, तो क्या आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचारी पार्टी है राजद, इसीलिए मैं अलग हो रहा हूं। उस समय भी आपको याद नहीं आया। आज तो ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं थी। एक सप्ताह पहले हमारे होम मिनिस्टर साहब और अध्यक्ष जी ने जाके डिक्लेयर किया था कि आप 25 तक सीएम बने रहेंगे, तो फिर तो ऐसी कोई मजबूरी थी नहीं। बताइए, आपकी कोई दलील बिहार की जनता कैसे सुन लेगी? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ऐसी थी। और आपके प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि नीतीश जी समाजवादी की वो ईमानदारी की पराकाष्ठा है, और उनके कितनी ही योजना जो उन्होंने बिहार में लागू किया, वो कालांतर में केंद्र सरकार ने भी अप्रिशिएट किया और आपने भी शुरुआत किया।
इसका मतलब है हमारी कुछ बुनियादी समस्याएं ये है कि आपने जिस तरीके से चुनाव, आप रामेश्वर चौरसिया जी भी चुनाव लड़े थे, उस चुनाव में इन्होंने भी बहुत सारे वोट और हम हार गए थे। रामेश्वर चौरसिया जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता जब हमारे खिलाफ लड़ रहे हो और पूरी पार्टी हमारे खिलाफ उनके जहां जेडीयू के वहां पे लोजपा से ये लड़ रहे हो और लोजपा के कैंडिडेट्स ने हमारे वोट शेयर को पहले दिन ही आपने बुनियाद को ही आपने कमजोर करने का काम किया। और इसके बाद अभी जो साक्षात देख रहा है कि जिस तरीके से रामेश्वर जी आपका जवाब देंगे। आप बात को रिपीट कर रहे हैं, मैं 1 मिनट रुकिए ना। नहीं, मैंने कहा जिस तरह से आपने ऑफ लेट आरसीपी जी को यहाँ पे बैठा दिया, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। आरसीपी जी तोड़-फोड़ करना शुरू कर दिए। अगर हमारी सुबोध जी अच्छा चुनाव की बात कर लेते हैं। सुबोध जी सुन लीजिए ना, सुबोध जी 1 मिनट सुन लीजिए। चुनाव की बात कर रहा हूँ, आपने बोला मैं भी चुनाव लड़ा था। सुनिए, इसके बाद आपके यहाँ से कितने कैंडिडेट भाजपा के खिलाफ लड़े थे? आपको मालूम है गोपालगंज जिले से आते हैं आपके, जिनको आपने अभी उपाध्यक्ष बनाया, हमारे उपाध्यक्ष को उन्होंने चुनाव हराया, उसके बाद तुरंत आपने उनको पार्टी में ले लिया। हमारे लोगों तो 1 साल 1.5 साल वेट किए पार्टी में किसी को लेने के लिए, मना कर दिया गया था। लेकिन नीतीश जी ने जो कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ आप खड़ा किए थे जदयू हराने के लिए, और चिराग पासवान जी को आप दोष दे रहे हैं, तो चिराग पासवान जी ने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि गठबंधन नहीं होगा तो हम नीतीश जी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो ये राजनीति तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, ये तो ओपन डिक्लेयर किया था। इसमें क्या है? आप कह रहे हैं कि हम चिराग पार्टी से लड़ करके हराए, आप तो बीजेपी के खिलाफ लड़ करके बीजेपी को। सबसे अमेजिंग इसमें बात यह है कि बाकी और कोई लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है, सबसे खुश कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। क्यों इंतखाब जी सबसे खुश दिखाई दे रही है? देखिए, आज वाकई कांग्रेस पार्टी को या पूरे बिहार को या कहें कि देश को एक नई दिशा देने के लिए हम नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज का दिन, आज 10 मुहर्रम है और ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन उर्बानी और हमारे अजीज ने इनको सैन साहब को कत्ल किया था, और नीतीश कुमार का आज का फैसला हम समझते हैं कि जो भविष्य की राजनीति होती है उस दिशा में एक पहल है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महंगाई और बेरोजगारी से भागती रही और देश के अंदर अनर्गल बयान देके लोगों के मन को ठेस पहुंचा के एक दूसरे को बांट के राजनीति कर रही है, वहां कहीं ना कहीं नीतीश जी एक अवतार के शक्ल में आके हमको लगता है कि एक बड़ा योगदान दिया है भारत को। और उसमें बिहार जो है भारतीय जनता पार्टी के खात्मा की शुरुआत हो गई है। कमाल ही हो गया इंतखाब जी, आपने तो एकदम उनको अवतार ही बता दिया। वैसे जो ये अवतार हैं, उन्होंने 2017 3 जुलाई 2017 को अवतरित होकर आपके बारे में ये बोला था, कांग्रेस पार्टी देश के मुद्दों से बिल्कुल अलग है, वो विपक्ष की सबसे कमजोर कड़ी है, बड़े मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी की कोई भी सक्रिय भूमिका दिखाई नहीं देती है। ये कहा था उन्होंने जुलाई में अवतरित होकर के 2017 में। आज के तारीख में देश के अंदर सबसे मजबूत विपक्ष बनकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को छेड़ने का काम किया है, और नरेंद्र मोदी जी को डायरेक्ट 1 to 1 अपनी बात कहने के लिए बाध्य होते हैं। आज सरकारी एजेंसी जिस तरह से तंग करने की काम कर रही है विपक्षी पार्टी के लोगों को, उसको ध्यान में रखते हुए आज मौका है और समय की पुकार है, देश को बचाने की लड़ाई है, और इस देश को बचाने की लड़ाई में संपूर्ण विपक्ष को एक तरफ आना होगा। हम कहना चाहते हैं, रविशंकर प्रसाद जी अभी पटना पहुंचे हैं, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं संजय जायसवाल जी के साथ, जल्दी से सुन लेते हैं। आज की प्रेस वार्ता को भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पटना साहिब के सांसद आदरणीय बड़े भाई रविशंकर प्रसाद जी संबोधित करेंगे। उनके ठीक बगल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, बड़ी बहन राबड़ी देवी जी, जनक राम जी, माननीय बड़े भाई सम्राट चौधरी जी, प्रदेश प्रवक्ता संतोष पाठक जी, और मीडिया प्रभारी
अशोक भट्ट जी, लालू जी और माननीय बड़े भाई रविशंकर प्रसाद जी से आग्रह करेंगे कि आप मीडिया को संबोधित करें। ये चलता है थोड़ा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, हमारी पूर्व उप मुख्यमंत्री, इनको हम लोग प्रेम से दीदिया कहते हैं और आज भी मैं इनको दीदिया ही कहूँगा, वरिष्ठ नेता सम्राट जी, हमारे जनक सिंह जी, जनक राम जी, हमारे मीडिया के बाकी प्रभारी, रेणु दीदी को हमने इसलिए दीदिया कहा कि हम लोग उनको आरंभ से ही दीदिया कहते हैं। नीतीश कुमार जी हमें छोड़कर चले गए और कहा कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही थी। तो नीतीश जी, आज मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। पहला सवाल, आप हमारे साथ कैसे और क्यों आए थे? आपको याद है? आपने लालू जी को छोड़ा था जब हम लोग चारा घोटाले की लड़ाई लड़ रहे थे, याद है ना? आपने समता पार्टी बनाई थी, तो भाजपा के साथ आने की आपकी वो पहली यात्रा थी। और आज जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, तो आपको मैं विनम्रता से बताऊं, उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन अपने पीक पर था। उसके बाद आप भाजपा के साथ रहे क्योंकि जंगल राज, लूट, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ आपने अपनी आवाज भाजपा के साथ लगाई। हम लोग चारा घोटाले में लड़ रहे थे, मैं वकील था, सुशील मोदी पिटिशनर थे, बाद में ललन सिंह भी आए थे। ये आपके हमारे साथ आने की शुरुआत है। आप 96 में साथ थे, 98 में साथ थे, रेल मंत्री बने, 2000 में आपको भाजपा ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, जबकि बहुमत नहीं निकल सका, आपको भाजपा ने दोबारा केंद्र में फिर मंत्री बनाया, कृषि मंत्री। उसके बाद आज नीतीश कुमार जी, आपको यह स्मरण देना जरूरी है कि आपकी पार्टी में आपको बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने पर परेशानी थी। और 2005 के चुनाव में स्वर्गीय अरुण जेटली, स्वर्गीय प्रमोद महाजन, स्वर्गीय सुषमा स्वराज यहां सभी उपस्थित थे और हम लोगों ने निर्णय किया कि बूटा सिंह ने जो डिसमिस किया था और जो पहला चुनाव हुआ था उसको जीतना है तो बिहार में नेता चाहिए। और हम लोगों ने आपके लिए बहुत आग्रह किया, दबाव दिया। और आज नीतीश जी, मुझे आपको याद कराना पड़ेगा कि जॉर्ज फर्नांडिस सरीखे नेता भी हम लोग के इस दबाव से बहुत सहज नहीं थे। आज आपको याद दिलाना जरूरी है क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाजपा ने आपकी पार्टी को तोड़ने का कारण किया। आप हमारे साथ थे, भाजपा जदयू की सरकार ने अच्छा काम किया। आप 13 में सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरोध के कारण चले गए, 14 में आप बुरी तरह से हार गए, फिर आप लालू जी के साथ चले गए 15 में और आप फिर मुख्यमंत्री बने। आपसे नीतीश कुमार जी, आज भाजपा एक दूसरा सवाल पूछ रही है। आपने 15 में लालू जी के साथ जाने के फैसले को पुनर्विचार क्यों किया? 17 में आपने क्यों कहा 2 साल बाद कि मैं बहुत असहज हूं क्योंकि श्रीमान तेजस्वी जी अपने ऊपर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे। ये आपने खुलकर कहा कि इतने गंभीर आरोप लगे, यहां सुशील मोदी ने लगाए थे, चर्चा में आए थे, तो आपने कहा उसका जवाब नहीं आ रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, उन्होंने भी बहुत सवाल पूछा था। रेलवे मंत्री रहते एक होटल ट्रांसफर हुआ था रांची में रेलवे का, और पटना में कुछ मॉल बनने की बात थी।
उसको लेकर काफी सवाल उठे थे, रेलवे में भर्ती को लेकर सवाल उठे थे, नौकरी के बदले जमीन को लेकर सवाल उठे थे। और नीतीश जी, आप कृपया करके अपने पुराने टीवी के कमेंट को याद करिए। आपने कहा था इतने गंभीर आरोप लगे हैं, इसका जवाब तो मिलना चाहिए। और तेजस्वी जी ने बार बार कहा यह जवाब मैं अपने वकील से पूछ के दूंगा। उसके बाद फिर आप हमारे साथ आए। हमने कहा अच्छी बात है, हमारे पुराने साथी हैं आप आ गए। फिर आपने 19 का लोकसभा चुनाव हमारे साथ लड़ा। बीजेपी ने जो 14 में बिहार में निर्णायक जीत प्राप्त की थी, उसने अपने बहुत से सिटिंग एमपीज का टिकट काटा ताकि आपको एनडीए में और टिकट मिल सके। और आज के दिन मैं अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने उन अपने सारे सांसदों का अभिनंदन करूंगा जो 14 में सिटिंग एमपी थे, जिनका 19 में टिकट हमने काटा ताकि अधिक लोगों को जदयू के टिकट मिल सके। जनक जी भी बैठे हैं यहां पर, ठीक ही कहा आपने। गोपालगंज से सांसद हो, बताइए। तो उस समय ठीक थी भाजपा, नरेंद्र मोदी तो उस समय प्रधानमंत्री थे ना। तो नीतीश कुमार जी, आपसे मेरा तीसरा सवाल यह है कि 19 में आप जीते नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में लोकसभा चुनाव में। आज आपकी भी संख्या 14 हो गई है, 16। 14 में संख्या भी कितनी थी? 2। तो आप 2 से 16 हो गए। अकेले गए तो आप 2 पर थे, फिर लोकसभा में 16 आ गए। किसके नाम पर जीते? नरेंद्र मोदी के नाम पर। अब जरा उसके आगे चलते हैं। 20 की विधानसभा का चुनाव था। नीतीश जी, क्या सच्चाई नहीं है कि उस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में जितना सघन प्रचार किया, उसके कारण एनडीए की साख बन पाई? आज आपको मैं विनम्रता से स्मरण देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि फर्स्ट फेज का चुनाव फुलवारी से लेकर यूपी के बॉर्डर तक हुआ था। एनडीए को कितनी सीट मिली थी याद करिए। पटना शहर के सारे विधानसभा हम लोग जीत पाए, बाकी फुलवारी दानापुर सब हारते गए। मुझ में आरा और उनका हमारे 1-2 सीट और मिली हम लोग, बड़ा। उसके बाद मोदी जी ने दूसरे फेज में, तीसरे फेज में, चौथे फेज में, 5वें फेज में सघन प्रचार किया। जंगल राज के 2 युवराज याद है ना आपको नीतीश जी, कि भूल गए आप? और जब प्रधानमंत्री जी ने सघन प्रचार करना शुरू किया तो बिहार की हवा बदलती रही। दूसरे फेज में एनडीए को अधिक सीटें मिली, तीसरे में और अधिक मिली, और चौथे 5वें में हम स्वीप कर गए। अब आपको 43 आया तो आप खाली दूसरे पर ब्लेम करते हैं। कभी अपने अंदर भी तो देखना चाहिए कि 43 क्यों आ गए आप? जदयू, कहीं बिहार के जनता कुछ असहज तो नहीं हो रही थी? हमारा स्पष्ट मानना है कि वो जीत नरेंद्र मोदी के प्रयास और उनके व्यक्तित्व के कारण जनता ने विश्वास किया कि डबल इंजन की सरकार चलानी है बिहार के विकास के लिए। और चौथी बात माननीय नीतीश कुमार जी आपसे हमें कहनी है, आज आपने बहुत हम पर आरोप लगाया है, तो आज हम तो आरोप नहीं लगाएंगे, हम सवाल पूछेंगे आपसे। आज आपको 43 सीट मिली, भाजपा की सीट आपके दुगने के बराबर थी, फिर भी इसके बदले कोई चर्चा नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के भाजपा कार्यालय में इस जीत के विजय उल्लास के कार्यक्रम में घोषणा कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। और बड़ी पार्टी भाजपा के एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक ने इसको बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लिया। यह सच्चाई है कि नहीं नीतीश कुमार जी, बताइए तो आप मुझे। तो आप कैसे कहते हैं कि भाजपा ने आपको कमजोर करने की कोशिश की? आपको कमजोर तो प्रदेश की जनता ने किया था, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। फिर
अब आज आप कह रहे हैं कि भाजपा अटल जी और आडवाणी जी वाली भाजपा नहीं है, तो 20 में जीत के आप साथ क्यों थे? आप उसी वक्त कहते कि हमको इस बीजेपी से नहीं पटेगी। तो ये तो कमाल की बात है। 17 में आप दोबारा साथ आ गए, आराम से साथ रहे, 19 का लोकसभा का चुनाव जीता, 20 का विधानसभा का चुनाव जीता, और आज जब 22 का अगस्त चल रहा है तो आप कह रहे हैं भाजपा हमको तोड़ने की कोशिश करती है। ये क्या मतलब है इसका? हमारा स्पष्ट कहना है नीतीश जी, आप बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आपको 17 में लगा था कि बिहार की जनता हमसे असहज है क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के साथ मैंने रिश्ता बनाया जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आपकी अंतरात्मा जागी, आप फिर हमारे साथ चले आए, हमने आपका स्वागत किया। आज आप बिहार को उसी अंधकार में, उसी भ्रष्टाचार में, उसी बदहाली में और उसी अपराध के बढ़ते हुए खौफ में क्यों ढकेल रहे हैं? नीतीश जी, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, आज आप तीसरी बार अपनी अगुवाई में बिहार की जनता को पुनः क्यों खौफ, अनिश्चितता, बदहाली, भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल रहे हैं? क्या कारण है इसका? यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि भाजपा ने तोड़ने की कोशिश की जदयू को, और अगर यही बात थी तो पहले आप कर देते। हम तो किसी का नाम नहीं लेते और आज भी नहीं लेंगे, लेकिन क्या आपकी पार्टी के अंदर घात प्रतिघात नहीं चलता है क्या? तो आपके अंदर की बात है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आज नैतिकता का क्या तकाजा है नीतीश कुमार जी, ये आपसे हम सवाल जरूर जानना चाहेंगे। इसलिए आज बहुत भारी हृदय से मुझे पूरे 94-95 के पूरे इतिहास को बताना पड़ा कि किस तरह वो हमारे साथ आए, कैसे रहे, और भाजपा ने उनको आगे बढ़ाने में क्या अटल बिहारी वाजपेयी, क्या लाल कृष्ण आडवाणी और क्या नरेंद्र मोदी, इन सबों ने और पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आपको हाथों हाथ उठाया। और आज आप क्या कह रहे हैं? ये बहुत पीड़ादायक है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोकसभा जीतेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर विधानसभा जीतेंगे, और बाद में फिर जनादेश का अपमान करेंगे, तो बिहार की जनता जवाब देगी। मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। अब मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, कुछ आपको ऐड करना हो तो अध्यक्ष जी। कोई नहीं। नीतीश कुमार जी आदतन धोखेबाज है, और इस बार बिहार की जनता निश्चित तौर पर सबक सिखाएगी। हम लोग संघर्ष करेंगे और 2024 में 35 सीट से ऊपर तो भाजपा जीतेगी। 2025 में भी हम 2/3 से ज़्यादा बहुमत के साथ आएंगे। धोखा देने की जो नीतीश जी की फितरत है, वह इसके साथ ही उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। चलिए, BJP there not only reminding its erstwhile ally, the JDU, and its leader Nitish Kumar, how they would have ridden to power just on Modi wave. Now they are also asserting that not only in 2024 but also in 2025 they will manage to get 2/3 majority on their own. In great details, Ravi Shankar Prasad there putting out data to show how BJP's numbers were much more, their strike rate was much better, how on several occasions Nitish Kumar had come out and sought votes in the name of Narendra Modi, and yet today he has betrayed the same party and the same leader. Now moving on to another story that made headlines today. One cannot escape the long hands of the law, and Shrikant Tyagi's arrest today proved just that. After abusing and assaulting a woman, Tyagi tried to escape from the law. He thought his entitlement would shield him.
He thought he was above the law and escaped to Meerut, but eventually ran out of luck. Neither the bulldozer nor the police spared him. While he was arrested and shamed before the media today, Tyagi's illegal encroachments and his arrogance faced the wrath of bulldozers on Monday. The police today detailed how they had trailed Tyagi's every movement before nabbing him. First, he tried to leave Delhi via an airport, but after his video went viral, he was on the move in Uttar Pradesh. He went to Meerut, Muzaffarnagar, Haridwar, also to Rishikesh in Uttarakhand. According to the cops, he was back in UP on Sunday, changed cars and again went to Meerut, where he was finally arrested. The probe has also revealed that Tyagi was being helped by his accomplice Sanjay and his driver Rahul. According to the residents, Tyagi created an atmosphere of fear in the society because of the alleged political connections he had. A huge embarrassment followed for the Samajwadi Party as the police said that the sticker that he was using on his car to flaunt his political might was procured via SP Maurya, who recently joined Akhilesh's outfit. व्हीकल्स जो इसने इस्तेमाल करे थे वो बार बार बदले। इसके द्वारा एक व्हीकल पर, जैसा आपने सुबह से देखा भी है, एक विधायक का स्टिकर भी लगाया हुआ है। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है, जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। बहुत से बड़े माफिया 420 धोखाबाज उत्तर प्रदेश में अभी भी सुरक्षित हैं, सकुशल हैं, सम्मान के साथ रह रहे हैं। वहाँ तक कोई काश्मीर तक नहीं पहुँचा और राजनीतिक बदले की भावना से ये अगर विरोधी पार्टी का है तो उसका घर भी बुलडोजर से गिराया जाता है, फर्जी मुकदमे लगा के उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। जो सही वांछित अपराधी है उस पर सरकार की मेहरबानी रहती है। यही कारण है कि 4-4, 5-5 दिन से मीडिया की सुर्खियों में रहने वाला व्यक्ति अभी भी कानून को धता बता करके बच रहा है। इसका मतलब भाजपा मेहरबान है। प्राथमिक जांच से ही ये बात निकल करके सामने आने लगी कि श्रीकांत त्यागी का संबंध समाजवादी पार्टी के एमएलसी से है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाकायदा उसको विधायक का पास जारी करवा करके दिया था। समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फोटो के आधार पर हमला बोलने का प्रयास कर रही थी, अब उसको जवाब देना चाहिए कि उनकी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के विधायक की गाड़ी का पास श्रीकांत त्यागी की गाड़ी पर कैसे आया। Yesterday, you saw the residents of the Granomax Society in Noida cheering when the bulldozers were rolled out, demolishing illegal constructions that belonged to Tyagi. Yesterday, they were afraid that while this action is taking place, they will still live in fear till the man is arrested. Today, as he was nabbed, they cheered the government. हम थैंक्स बोलना चाहेंगे बीजेपी गवर्नमेंट को, टाइम्स नाउ को भी, सभी मीडिया वालों को स्पेशल थैंक्स। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी कवरेज में और ये दिखाने में, मतलब जनता तक आवाज़ पहुंचाने में सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और हम यहाँ नोएडा पुलिस को भी थैंक्स कहना चाहेंगे। ऑब्वियसली जो उन्होंने गलत किया था उसके लिए अरेस्ट हो गए, दैट इज फाइन, दैट इज फेयर इनफ। गलत किया था। There is some law, some legal action should be there. They are the right person to judge whatever is right, what is wrong. महिलाओं के साथ जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें महिलाओं के साथ ही अभद्र बर्ताव, वो तो कहीं से कहीं तक सही था ही नहीं, बहुत गलत था। एंड उसकी उन्हें सजा मिल रही है, अरेस्ट हो गए हैं, दैट इज टू गुड। ओके, बहुत अच्छा हुआ भाई, उन्होंने गलत किया था, है ना। किसी लेडी के साथ इतनी बदतमीजी करनी कहीं से कहीं तक कोई सही कह ही नहीं सकता है ना। डेफिनेटली वी आर विद द वुमेन, है ना, आई एम आल्सो अ वुमन। आज गिरफ्तार हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे अभी जैसे मैंने कहा, इसके पीछे राज क्या है वो खुलना बहुत जरूरी है कि क्यों ये सारा कुछ रचा गया है, क्या रचा गया है, ये खुलना बहुत जरूरी है ताकि रेसिडेंट को पता चले असलियत क्या है इसके पीछे। ये बहुत जरूरी है हमारे। And today, this man was presented in front of the media as well as taken to the court. And Times Now tried to ask him how does he feel about his behavior. Here is what he had to say. स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपकी मदद की थी। श्रीकांत कुछ कहना है? श्रीकांत, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपकी मदद की थी।
श्रीकांत कुछ कह रहे हैं? जी बताइए जी भाषा का इस्तेमाल Neelashish, while he does say in the passing afsos hai, his body language doesn't really look like of somebody who is contrite. Well, of course, I did try to ask him when he was produced here in court at the Surajpur court here, when he was produced, what he wanted to say, whether he has any regrets, what the entire situation has made him think. But yes, he did on the face of it say afsos hai, but clearly you can see arrogance dripping from him even while he was brought here. We asked him whether Swami Prasad Maurya had helped him out or anything of that sort. He denied that while walking around. He seemed very, his body language was fairly unabashed and brazen, to be honest, as we saw him being taken to court. Of course, at this point, he is at Surajpur court where we are at. After his medical was done, after the police had nabbed him from Meerut, has brought him here to Noida where the court is. His medical was done and then he was brought to court. The police, in fact, has not sought any custody of their own. They have asked for him to be sent to judicial custody, which means he would go to jail. So if the hearing as we speak is on at this point, the police, of course, are briefing the court, informing the court as to what exactly their case is. Let's not forget an FIR was registered against him for pushing and assaulting the woman at Omax, of course, and certain sections were added to it thereafter. So yes, Shrikant Tyagi is here in court at this point. In all likelihood, he will be sent to 14 days judicial custody, as we have been informed by the police here. But they did not seek any sort of remand for themselves. At this point, the court is being informed of the charges and how exactly he was trying to evade the law since Friday, but eventually his luck ran out. Maybe eventually he will answer what exactly is he apologetic for. Thank you, Neelashish, for joining us with those updates. Shrikant Tyagi thought his political connections could buy him immunity from the law. But when Times Now exposed his high-handedness, his arrogance crumbled. Your voice, your resolve powered a memorable victory. Rousing welcome by the resident. Tyagi is today in custody. His arrest is a tribute to what Times Now and you, that is us, can do together. Times Now. Action begins here. The most pressing issues, the most informed minds, free and fair exchange. Converse India with Rahul Shivchankar. 3-4 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು, ನೈತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ,
ನನ್ನ ಮಗನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ, ನೆಹರು ಮಾಡಿದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಜನ ನಮ್ಮ ಋಣ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇವತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ 2 ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. 3-4 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಂಚತ್ತು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಳು ಬೀಳುತ್ತೆ. He has openly confessed, he has openly admitted. In fact, taking this cognizance, I think our agencies should book a case, should really book a case against him and also make an enquiry, because he would be knowing who are all the beneficiaries.